बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ का ज़बरदस्त मौसम, जहां पर क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 2022 के 5वें मरहले का मैच जारी है। डे 3 बलोचिस्तान वर्सेस सिंध। इंटरेस्टिंग मरहल से गुजरता हुआ ये मैच आज तीसरे दिन में आ चुका है और सिंध की बैटिंग जो है उसमें भी इंटरेस्टिंग लम्हात देखने को मिले, कभी अप एंड डाउन। आगाज बेहतर था, 81 रन सऊद शकील के हैं जो कि अभी भी नॉट आउट हैं। 51 रन की इनिंग खेली फवाद आलम ने, साथ दे रहे हैं मोहम्मद उमर, 28 बॉलें खेलकर क्रीज पर मौजूद हैं। कुल मजमुआ 215 पे 7। और बलोचिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त रही, उनकी तरफ से भी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली हमें। पेसर्स स्पिनर्स ने अपना काम अंजाम दिया, 2-2 विकेट शेयर किए खुरम शहजाद और असद शफीक, और उसके साथ एक विकेट शेयर किया नजीब और आकिफ जावेद ने। और 2 दिन के बाद जो मैच की सूरत हाल है, इंटरेस्टिंग लम्हा जैसे हम आपको बता चुके, उसका खुलासा आपको दिखाते चले। 269 रन बलोचिस्तान ने जोड़े, 67 और 60 बेल तरतीब हसीब और इमरान की तरफ से आए। सिंध ने रिप्लाई किया 215 पे 7 आउट है। सऊद शकील चट्टान की मानद खड़े हैं, का कैप्टन इनिंग कहनी चाहिए। 54 रन अभी भी सिंध की टीम पीछे है कुल मजमुए से। सिंध की टीम ने जब पहली इनिंग में गुलाम मुदस्सिर ने 5 विकेट हासिल किए, अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, अर्ली यूज ऑफ बॉल, जो इस्तेमाल था बॉल का सुबह के सेशन में जब बॉल उनके हाथ से मूव हो रहा था, एज निकले। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अर्लियर ऑन बॉल को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वो दिखाया यहाँ पर गुलाम मुदस्सिर ने। बॉल को आगे पिच किया और पूरा यूटिलाइज किया, फायदा इस सरफेस का, इस क्लाइमेट का, जिसकी वजह से उन्हें 5 विकेट मिले। बहुत स्पॉट ऑन रहे, उनकी बॉलिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। गुलाम मुदस्सिर से बात की अली यूसुफ ने, आइए आपको दिखाते हैं। ऑल द वे फ्रॉम लियारी, गुलाम मुदस्सिर, फैंटास्टिक स्पेल। कितने खुश हैं आप इस स्पेल से? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जी। काफ़ी टाइम से इस स्पेल का वेट कर रहा था और बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। बहुत खुशी होती है जब ऐसे स्पेल होते हैं आपके, और ये होगा कि मैं अगर दूसरे इनिंग में भी ऐसे स्पेल डाल सकूं और अपनी टीम को जितवा सकूं तो फिर ये बंदा खुशी डबल हो जाएगी। बहुत जल्दी आपने रियलाइज़ कर लिया था कि इस पिच के ऊपर कौन सी लेंथ डालनी है। दूसरा मैच आप यहाँ खेल रहे थे तो आसानी हो गई थी आपको कंडीशंस को एसेस करने में? हाँ जी, मेरा वैसे बेसिकली में कमबैक काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद हुआ है, तो इसलिए थोड़ा मैं जो पहला मैच खेल रहा था मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही थी कि बॉल किधर करना है, लेकिन अभी दूसरे मैच खेला हूँ तो कॉन्फिडेंस आया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ पे इस पिच के ऊपर हमने देखा कि नए बॉल से काफ़ी मूवमेंट मिल रही है, लेकिन पुराने बॉल से उस तरीके से हमें मदद देखने को मिली नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो नए बॉल की तरफ ही है। ये तो आप कह सकते हैं, नया बॉल तो हर विकेट पे भी थोड़ा बहुत चलता है, बॉल अच्छा स्विंग होता है, लेकिन इस विकेट पे ये है कि ज़्यादा हेल्प मिल रही है नए बॉल से। सेमी न्यू से और पुराने से इतना वैसा रिवर्स नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। अब आई थिंक कि विकेट थोड़ा ग्रीन है, इस वजह से रिवर्स नहीं हो रहा, लेकिन नए बॉल से अच्छा हो रहा है बॉल। बीइंग अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आप जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके किसको आप देख के आपने क्रिकेट शुरू की थी? बेसिकली तो वसीम भाई एंड दूसरा मोहम्मद आमिर, ये दोनों वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स हैं और मैं इनको देख के क्रिकेट स्टार्ट की। चलिए आज के मैच की बात करते हैं। कहाँ देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ मैच को देख रहे हैं? अभी भी विकेट्स हाथ में 3, कितना स्कोर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे आप? मेरे ख्याल से अगर जैसे सऊद खेल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा खेल रहा है, और वो उसके साथ अगर हम लोग ज़्यादातर लीड के उनके टारगेट के करीब जाएं और हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम बन जाए, तो नेवर नो। हमारा लास्ट मैच भी ऐसे ही हुआ, हमने बहुत अच्छा कमबैक किया बॉलिंग में, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इस मैच में भी अच्छा कमबैक करेंगे इंशाल्लाह। सेकेंड इनिंग में आपने बॉलिंग करनी है, सेम बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, क्या प्लान होगा? यही है, सेम। जितना आप क्रिकेट को बेसिक्स पे रखते हैं उतना अच्छा होता है, जितना आप बेसिक्स पे रखेंगे उतना अच्छा क्रिकेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक्सीलेंट। और सबसे अच्छी चीज़ जो गुलाम मुदस्सिर की बॉलिंग में थी वो उनकी पेस और स्विंग थी। और पिच जो है वो आज कैसा खेलेगा इस मौसम में, आइए आपको दिखाते हैं। Twelve wickets fell in yesterday's play. The wickets seemed pretty nice for batting, but then what happened? It's just a little bit drier than the other surfaces, and the game moved on very quickly. If we have a close look here, there's some dry patches here. These are bowlers' foot marks, some bare patches on the stumps line as well. But if you go further down, we can see some more bare patches and dry patches right here.
I need a ball. Thank you. If you look at this closely, if the seam of the ball hits those dry patches like that, it's going to react differently. But then if the belly of the ball hits the pitch, it's going to react differently. These are called the natural variations. And on day 3, we can expect that. Scoreboard pressure may also come into play because third innings is always a pressure innings. Another exciting day in store. वेल मौसम बेहतरीन, प्लेजेंट मॉर्निंग और आइडियल कंडीशन है क्रिकेट खेलने के लिए। यकीनी तौर पर प्लेयर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे और अगर आप भी पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हैं तो आप भी अपने स्टार्स को देख सकते हैं यहाँ पर आकर परफॉर्म करते हुए। और अब तक ये मैच, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अप्स एंड डाउन से होते हुए, इंटरेस्टिंग मरहल से गुजरते हुए, इंटरेस्टिंग लम्हात में इनफैक्ट दाखिल हो चुका है। और उसके साथ साथ जो अभी जैसे फैसल बात कर रहे थे कि जो सरफेस है वो बहुत आसान हो चुका, तो कहीं ना कहीं जो बैटर्स हैं वो भी इंजॉय करेंगे। अजीम गुमन गो के इतना डिस्प्ले नहीं कर सके अपनी स्किल्स का, लेकिन इन दोनों के पास वक्त है, मौका है कि जो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, कंटिन्यूटी 215 पे 7। और सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त बारी की, बैटिंग अच्छी थी उनकी और पूरा वक्त लिया उन्होंने। किसी तरह से कोई भी हमने उनको रैश स्ट्रोक खेलते हुए नहीं देखा। इक्का दुक्का जैसे उनका एक हैबिट है हवा में खेलने की, ऑफ साइड के पीछे वहाँ पर कुछ शॉट निकले ज़रूर, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे। और मोहम्मद उमर ने अच्छा साथ दिया सऊद शकील का। 28 बॉलिंग खेल चुके हैं, गो के 1 रन बना। यहाँ पर इस वक्त रन से ज़्यादा उनकी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़रूरी है सऊद शकील के साथ, क्योंकि एक एंड उन्होंने संभालना है ताकि वहाँ से विकेट ना गिरे। और दूसरी तरफ कप्तान अपनी अच्छी बारी करते हुए सऊद शकील अपने बेहतरीन 81 रन पे ऑलरेडी वो सेंचुरीज बना चुके इस सीज़न में, कन्वर्ट किया इनफैक्ट उन्होंने अपनी दोनों 50 को 2 सेंचुरीज में। तो इस वक्त भी उनका जो कन्वर्जन रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता से नज़र आ रहा है कि हम देखेंगे कि इसको 100 की तरफ बढ़ेगा। खुरम शहजाद, इनसे भी तवक्कुआत वाबस्ता है। 15 ओवर में अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। और अर्लियर ऑन जैसे मौसम थोड़ा सा कूल है, थोड़ी सी स्टिफनेस ज़रूर होगी, लेकिन अब देखना ही है कि किस तरीके से वो यूटिलाइज करेंगे। एक स्लिप है, गली है। और आज के दिन का अहवाल, मैच शुरू होने को है। लेट्स सी किस तरीके से करते हैं आगाज़। इमरान जावेद इस वक्त तैयार हैं, प्ले की कॉल है और खुरम के पास है बॉल। देखते हैं कि आगाज़ कैसा करते हैं, यूटिलाइज कैसे करेंगे इस कंडीशन को। अच्छा बॉल। और मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एजाज। बहुत अच्छा कमबैक बलूचिस्तान की टीम का, और खुरम ने कल अच्छी बॉलिंग की। कुछ बैड लक ली फवाद आलम, मैं समझता हूँ कि वो जिस बॉल पे आउट हुए, लेकिन सऊद शकील इस वक्त अच्छा स्टडी खेल रहे हैं। नो बॉल। अच्छा शॉट, नो बॉल। थोड़ा सा ओवर स्टेप कर गए, सुबह का टाइम है। बॉल जो है वो 66वें ओवर में है, थोड़ा पुराना है। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। थोड़ा सा बॉल को पीछे रख रहे हैं। और अर्लियर ऑन यासिर, कल भी हमने देखा, इवन 2 दिन का खेल जो अब तक हुआ, मौसम की तब्दीली के साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉल है अर्लियर ऑन, वो बैकअप लाइन की बजाय अगर थोड़ा सा आगे रखें तो मे बी टेस्ट हो सकता है थोड़ा बहुत बेटर। जी हाँ बिल्कुल, और लाइन और लेंथ अपनी प्रिसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छा एक मौका है इस वक्त बलूचिस्तान के पास के सऊद शकील की विकेट लेके वो चीज़ों को रैप अप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रन इस बार सऊद का। यासिर, अर्लियर ऑन कल भी हमने देखा कि सऊद ज़्यादा देर तक क्रीज पर रहे, वो ज़्यादा जो बॉल थे उनको फेस कर रहे थे, लेकिन अर्लियर ऑन सेशन में आप उमर को स्ट्राइक करना है
तो किस अंदाज से देखते हैं कि बेहतर है कि ऑफ स्टंप के बाहर के जो बॉल हैं छोड़े जाए? जी उमर जो है वो उन्होंने लास्ट मैच में नहीं, उससे पहले वाला जो मैच था उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 60 रन किए थे। इनकी जो अपनी गेम है, जो नेचुरल गेम है, वो ये स्ट्रोक्स खेलते हैं, बड़ी शॉट्स खेलते हैं। जो T20 की जो शॉट्स हैं वो बड़ी अच्छी खेलते हैं ये, लेकिन जहाँ पे इनको बारी लेनी होती है वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन शॉट्स हैं इनके पास और ये एक अच्छा साथ दे सकते हैं सऊद शकील का, क्योंकि सिंध की टीम ये 52 रन्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं लेने। सऊद शकील बड़ी फाइटिंग इनिंग्स खेली उन्होंने। थोड़ा सा फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, हैमस्ट्रिंग हुई थी कल, ग्राउंड से बाहर भी गए थे। वेल मौसम यहाँ पर बेहतर है और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है प्लेयर गर्मी के मौसम में, तो वो ज़्यादातर क्रैम्प्स या फिर जैसे आपने बात की फिटनेस के मसाइल नमूदार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पेसर के लिए कह सकते हैं किसी हद तक कि उसके लिए माइट बी अर्लियर ऑन थोड़ा सा स्टिफनेस हो। एज हुआ और गैप में से बॉल निकल गया। 4 रन्स, यस इट इज। वेल यासिर, थोड़ा सा किस्मत भी या लक भी यहां पर चाहिए होगी। जी आउटसाइड एज हुआ और बॉल कैरी नहीं हुआ, लेकिन लकी रहे। अच्छी चीज़, बॉल को पुश नहीं किया लेकिन बॉल कैरी कर गया था थोड़ा सा दूर फील्डर से लेफ्ट साइड पे। लकी स्केप मोहम्मद उमर के लिए। 221 पे 7। इस वक्त बाकी मैचेस सेंट्रल पंजाब एट फैसलाबाद, जो कि सेंट्रल पंजाब ने पहली इनिंग में बनाए 302 रन, जवाब में 200 और इस वक्त 106 रन की सेंट्रल पंजाब की लीड है। एबटाबाद में केपी और नॉर्दर्न की टीमें मध्य मुकाबले 175 के जवाब में 249 और इस वक्त 18 पे 1 है केपी। 56 रन से केपी इस वक्त ट्रेल कर रही है। लेकिन यहाँ पर आकिफ जावेद की स्किल्स का टेस्ट है, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अर्लियर ऑन के जो खेल का सेशन है वो क्या तीसरा दिन है, तो ये पहला 1 घंटा 30-40 मिनट जो है वो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि बॉलर्स का एक दौर दौरा होता है। जी एक डीप पॉइंट का फील्डर प्लेस है। कल भी हमने देखा नया बॉल था, परसों तो पहला दिन था, नया बॉल था। और पुराने बॉल और नए बॉल में भी डिफरेंस होता है अर्ली ऑन, लेकिन फिर भी मूवमेंट मिलती है। और इस बॉल पर फिर थाई पे लगा सऊद को। बल यासिर, कल भी इनको ये जो बॉल है क्रिकेट ये यहीं पे लगा था और काफ़ी पेनफुल था। जो देखिए लगते साथ ये बॉल, उनका जो चेहरा या जो जेस्चर्स है वो नमूदार हुए दर्द। इसका मतलब है कि बाउंस अच्छा है। यॉर्कर, अच्छा बल्ला लाया सामने इन बॉल। सबसे बढ़कर कि कनेक्शन बेहतर था, एक ही रन यहाँ पर। और अब इस वक्त आकिफ के पास ये मौका है कि मोहम्मद उमर पे अटैक करें। कैचर्स, करीबी फील्डर्स। जी आकिफ की जो लाइन लेंथ है वो बेहतर है। अगर इनकी बॉलिंग में देखा जाए तो आकिफ ने इनको कल ब्रेक थ्रू भी दिया था और इनकी जो बॉलिंग है वो टिपिकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाली। आगे 2 स्लिप्स, एक गली के साथ बॉल कर रहे हैं उमर को।
अच्छा सिंगल। स्ट्राइक रोटेट की उमर ने, और ये थोड़ा सा ये चीज़ बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। अगर ये सिंगल्स होते हैं तो उस तरफ चले जाएंगे। एग्जैक्टली पॉइंट का जो फील्डर है उसको चलकर जल्दी ऊपर आना चाहिए था, थोड़े लेट रहे जिसकी वजह से वक्त मिला। और ये देखिए वो अपनी क्रीज में काफ़ी देर खड़े भी रहे 3-4 सेकंड के बाद। उसके बाद सऊद ने उन्हें बावर करवाया कि आप ऑफ स्ट्राइक हो जाएं, और अभी सिंगल के लिए जा सकते हैं बआसानी, क्योंकि सऊद के लिए कंडीशंस यहाँ बेहतर, और अब सेंसिबली अपनी क्रीज पर खड़े रहे। वेल ये लम्हात यकीनी तौर पर बॉलिंग कैप्टन के लिए बेहतर हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा इस चीज़ का, असद शफीक को, कि अर्लियर ऑन जो बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, उनके लिए सेशंस बेहतर रहते हैं। अच्छे टिप्स, अच्छी कोचिंग, अच्छी एडवाइसेस के साथ वो अर्लियर ऑन ब्रेक थ्रू हासिल करके चीज़ों को रैप अप कर सकते हैं। वेल इस वक्त तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आकिफ। जो अच्छा बॉल यॉर्कर, लेकिन अच्छा खेले सऊद, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया। जी हाँ, मिक्स करेंगे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान को एक विकेट जो है वो मैच में बड़ी अच्छी पोजीशन में लेके आ सकती है। हवा में खेले ऊंचा, लेकिन कोई खतरा यहाँ पर नहीं है सऊद शकील के लिए। स्ट्राइक को रिटर्न करेंगे। कंफर्टेबल नहीं थे यासिर यहाँ पर खेलते हुए सऊद। जी हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ के नीचे खेले, हवा में था लेकिन पूरी तरह उसको शॉट में इतनी पावर नहीं थी, फोर्स नहीं थी कि वो हाथ में जाए। हल्का सा उसे प्लेस कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्लेस किया उसे फाइन लेग की तरफ। दो 224 पे 7। ओ इनसाइड इनसाइड। वेल इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बॉलर्स चूँकि अप्लाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन किस्मत कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके तक ये इस वक्त उनके साथ है। वेल सऊद ने जिस तरीके से यासिर आगाज़ किया, आपने देखा कि अर्लियर ऑन उन्होंने उमर को चांस दे दिया कि आप आइए पेसर के अगेंस्ट, और कभी वो रुके भी। देखिए उन्हें उमर पे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उमर एक अच्छी इनिंग खेल चुके हैं। हाँ, अगर ये 8 आउट होते तो फिर हम समझ आती, लेकिन अभी ये अपने सिंगल ज़रूर लें, क्योंकि उमर में एबिलिटी है कि वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। उन्होंने प्रूव किया है, और ऐसे मौके पे प्रूव किया है जब उनकी टीम को शिद्दत से एक अशद ज़रूरत थी, और उन्होंने वहाँ पे बड़ी क्लीन हिटिंग की थी। तो वो चीज़ें माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए, स्पेशली एज ए कैप्टन। तो और भी कॉन्फिडेंस जो है वो उमर अगर यहाँ पे उनको सिंगल्स देते हो, यहाँ पे एक अच्छी इनिंग खेल जाते, तो इनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा एज ए बैट्समैन। जी हाँ, आपका मतलब है कि इस तरह से उमर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उनका कप्तान उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है इस सरफेस को देखते हुए। अच्छा खेला। इससे पहले वो ये शॉट हवा में खेल चुके थे ऑन साइड पे, लेकिन इस दफ़ा दोबारा उन्होंने सिंगल को डिनाई किया। 4 बॉलें, 3 बॉलें इनफैक्ट अभी इस ओवर की बाकी हैं, तो कुछ मिला जुला रुझान है उनके। माइंड रीडिंग जो है, नजीब ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लंबे कद के मालिक, और देखना यह है कि आज इनका दिन कैसा रहेगा। कितनी जल्दी तब्दीली होगी बॉलिंग में ये वक्त बताएगा। असद शफीक को जल्द अज जल्द अपने फैसले करने होंगे। आपेश, लेकिन फील्डर अभी भी दूर है। हमने देखा इससे पहले भी असद शफीक ने जो अपने फील्डर्स हैं, इवन जब सिंगल लिया उमर ने, उस वक्त भी पॉइंट का फील्डर थोड़ा सा पीछे था। नॉर्मली दायरा है नहीं, लेकिन दायरे के करीब करीब। तो जिस वक्त उमर हो, मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा फील्डर्स को 3-4 कदम नॉर्मल दायरे से अंदर रहना चाहिए, ताकि वो सिंगल को प्रोटेक्ट कर सके।
जी हाँ बिल्कुल, जब उमर स्ट्राइक पे आए तो ये सोचा जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल सऊद शकील ने स्ट्राइक संभाली हुई है, सिंगल्स जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं। और जैसे ही उमर स्ट्राइक पे आए, हम बात कर रहे थे उनकी कि जो सिंगल है वो रुकने चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने का मौका मिले। जी हाँ, अब लास्ट बॉल है, ज़रूर इस पे सिंगल लेने जाएंगे। इस बॉल पे भी इन्होंने ट्राई की थी और अभी तक फील्डर जो है अपनी जगह पे मौजूद हैं। सिंगल, अगर वो, जाहिर बात है वो सिंगल लेंगे, लास्ट बॉल है। डीप पॉइंट को भी ऊपर लेके आना चाहिए, बहुत बड़ा गैप है उनके लिए, बहुत आसान है यहाँ पे सिंगल लेना। जी मेरे ख्याल से बाउंसर ट्राई करना चाहिए, बाउंसर ट्राई करेंगे। जो फील्ड प्लेसमेंट है इस वक्त, जी हाँ बाउंसर किया था लेकिन बहुत आराम से उन्होंने सिंगल ले लिया और फील्डर भी थोड़ा पीछे था, सिंगल पे था नहीं। 225 पे 7। मोहम्मद उमर 6 रन पे है और इस वक्त इनकी इंपॉर्टेंस है, अगर इस पूरे कार्ड पे देखें जहां सऊद शकील मौजूद है 85 पे, अपने 3 फिगर्स के करीब 15 रन की दूरी पे। तीसरी सेंचुरी होगी अगर सऊद शकील इस सीजन में ये कारनामा अंजाम दे पाए, और उनके साथ मोहम्मद उमर जिन पे वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट शो कर रहे हैं इस वक्त। और बेहतर है कि आप अर्लियर ऑन का जो सेशन है मॉर्निंग का वो इसी तरीके से खेलें जिस तरीके से साउथ खेल रहे हैं, कि आसानी के साथ आप साजिद अफरीदी डेंजर एरिया को बड़े करीब से देखते हुए और पाँव की मदद से कहीं ना कहीं जो लूज डस्ट है या मट्टी है। जी हाँ, ये रफ एरिया है और हमें पता है कि इसके बाद जो बॉलिंग आनी है वो इब्रार की है, और इब्रार के लिए ये इस तरह के जो स्पॉट्स हैं ये बड़े हेल्पफुल होंगे। पिच भी ड्राई हो रही है, अच्छा खेले सीधे बल्ले से। यासिर शाह फैसल भी सुबह पिच के बारे में कह रहे थे कि हल्के फुल्के क्रैक्स उन्हें नजर आए, कि माइट भी ये घास कुछ क्रैक्स क्रिएट करवाए। जी हाँ बिल्कुल, देखें पिच का कलर चेंज है थोड़ा सा, और भी जो है वो ड्राई लग रही है पिच, और जूं खेल आगे जाएगा, जिस तरह हमें पता है इस पिच के बारे में कि ये तीसरे और चौथे दिन आफ्टर लंच जो है, थर्ड डे आफ्टर लंच, आज लंच के बाद फुल ड्राई हो जाएगी। खूबसूरत शॉट ऑफ द टोज, 4 रन्स मिलेंगे सऊद शकील को। बहुत ही अच्छा शॉट, इन कंट्रोल। जी अच्छी बात, हेड पोजीशन बिल्कुल सीधी और बल्ले को एंगल किया। मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं था, शॉर्ट मिड विकेट। खूबसूरत टाइमिंग सऊद शकील की, 4 रन्स। सऊद शकील कॉन्फिडेंस दिखाते हुए इस दफ़ा उन्होंने सिंगल लिया, और कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब उमर आए तो फील्डर्स को नियर बाय होना चाहिए। असद शफीक एंड कंपनी किस अंदाज से इस वक्त अपनी स्ट्रैटजीज़ को अपनाएंगे, और बाहर भी बैठ के स्ट्रैटजीज़ बन रही हैं इस वक्त कि नेक्स्ट इनिंग में क्या यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। आया आप खेल रहे हो ना खेल रहे हो, आप टीम मेट हैं, अच्छी एडवाइजेज एनी टाइम वेलकम। 32 बॉल हैं, अच्छा टाइम स्पेंड किया उमर ने। लेग स्लिप है, लेकिन कितना बॉल उठ सकता है इस
सरफेस पे। जब पीछे किया था लेकिन बॉल में जान नहीं थी, उन्होंने पूरी अपनी बॉडी बैक फोर्स नहीं थी, पीछे उन्होंने किया तो, लेकिन इसी वजह से बॉल भी काफ़ी पुराना हो गया। 69th ओवर है। स्पिनर्स एक अच्छा आइडिया रहेगा इस टाइम, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और कल असद ने भी अच्छी बॉलिंग की तो अच्छी बैटिंग बड़े ही एतमाद से और पूरी तरह 230 पे 7। वेल असद शफीक अभी भी स्टिक कर रहे हैं अपने पेसर्स के साथ, और पेसर जब भी ऑपरेट कर रहे हो तो नॉर्मली यासिर जो वक्त है वो इतना तेज़ी से नहीं गुजरता, तो बेहतर है बजाय पेसर्स के आप इस पुराना बॉल जो है स्पिनर से ऑपरेट करें दोनों एंड से। या देखिए, जब इनिंग स्टार्ट हुई आज की तो 65 ओवर हुए थे, 15 ओवर्स थे, और इनके माइंड में डेफिनेटली ये था कि हम इन 15 ओवर्स में आउट कर देंगे, तो वो एक चांस है जो फास्ट बॉलर से उन्होंने लिया। लेकिन 3-4 ओवर्स के बाद अगर उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि पिच में इतना पुराना बॉल नहीं कर रहा, तो फ़ौरन अपने स्पिनर्स को ले आएँ, फास्ट बॉलर को रेस्ट दें, और जब नया बॉल आए तो फास्ट बॉलर से करवाएं। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, स्पिनर्स को लेके आएँ, अब इन फास्ट बॉलर को रेस्ट दें, और आगे 10 ओवर्स के बाद फिर नया बॉल होगा। वेल इस वक्त काशिफ भट्टी ऑप्शन है, असद शफीक ने खुद भी बॉलिंग करवाई, गो के काशिफ भट्टी ने 11 ओवर किए, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन अच्छा बेहतर ऑप्शन। और यासिर असद खुद भी विकेट ले चुके हैं, तो क्यों ना अपनी लक भी ट्राई करें। जी बिल्कुल, इस वक्त तो फास्ट बॉलर्स को देख के ये नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, ना पिच से कुछ हो रहा है, ना बॉल इतना रिवर्स स्विंग हो रहा है, पेस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है काशिफ भट्टी, 450 विकेटें उनकी, वो इस वक्त प्रेशर डाल सकते हैं। बस सिंध के लिए इस स्टेज पे इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा वो नज़र नहीं आ रहा, वो फैक्टर। सऊद शकील भी सेट खड़े हैं, नो डाउट 90 पे खेल रहे हैं, लेकिन दूसरा एंड फ्री है। वेल काशिफ इस वक्त डीप में है, इन्हें वार्म अप करना चाहिए, मेरे ख्याल से कैप्टन मैसेज मिलना चाहिए इन्हें। कि आप रेडी रहिए, क्योंकि जिस तरीके से यासिर अभी आप बात कर रहे थे कि पेसर्स जब प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज ना कर रहे हों, यूटिलाइजेशन ना हो रही हो पिच की इस बॉल के साथ, तो मेरे ख्याल से खुद से भी जैसे हम बात कर रहे थे असद को कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ औक़ात लक इतनी मेहरबान होती है कि जिस तरीके से ऑलरेडी वो 2 विकेट हासिल कर चुके हैं और खुश हैं अपनी इस एफर्ट से फ़िलहाल, क्योंकि अभी भी 39 रन की दूरी पे है सिंध की टीम उस पेट्रोल क्रॉस करने से, इनफैक्ट जो कि बलूचिस्तान का टोटल रन है। जी हाँ, अजीम गुम्मन एक और टेस्ट इनका आज, और आज इनको रन करने चाहिए, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट। इस वक्त यूटिलाइजेशन है फील्डर्स की भी। एक्सीलेंट एफर्ट इमरान भट्ट, शॉर्ट कवर पे फुल स्ट्रेच डाइव, और बहुत फुर्ती है इनमें। अगर आप देखें तो कितना जल्दी उन्होंने ग्राउंड कवर करके, और एक्सीलेंट, यहाँ से रन लेने का सोचना भी नहीं। एग्जैक्टली शार्प, और इवन दो के पीछे फील्डर मौजूद था, फिर भी उन्होंने अपने स्किल्स को मनवाना चाहा यहाँ पर। नाइन्टीज में पहुंच चुके हैं सऊद शकील, और इस दफा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में
वाइड ऑफ द थर्ड मैन, 4 रन्स के लिए खेल दिया। एक्सीलेंट, सुपर बैटिंग। जी बहुत ही अच्छा शॉट, अगले कदम पे कट किया, कोई मसला ही नहीं। फ्रंट फुट कट, खूबसूरत शॉट सऊद शकील का। एक्सीलेंट बैटिंग, सीजन भी बेहतर है उनके लिए, बीइंग अ कैप्टन, उसके साथ साथ बीइंग एन ओपनर। लेकिन बॉलर्स के लिए यहाँ पर टफ टाइम है। ऑप्शंस काशिफ भट्टी, असद शफीक, और अब तक सिर्फ उन्होंने 11 ओवर करवाए हैं, विकेट नहीं मिला। कंटेन ज़रूर किया, लेकिन जो उनकी एबिलिटी है, जैसे यासिर बात कर रहे थे, 400 से ज़ायद विकेट्स की। जी हाँ, काशिफ भट्टी के ओवर्स देख के बड़ा एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइक बॉलर हैं। किसी भी टीम में हो तो वो ये एक एंड संभाल के रखते हैं, और इस मैच में कोई इतने ज़्यादा ओवर्स नहीं किए। हालांकि इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, 11 ओवर में 20 रन दिए सिर्फ, बट मे बी अभी वो उस तरह की फॉर्म में शायद ना लगते हों अपने कैप्टन को, लेकिन जब बॉलिंग करेंगे तो फॉर्म में आएंगे। वेल, थर्ड मैन को ऊपर लिया गली की पोजीशन में, टेस्ट किया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा टारगेट जो है वो हाई रहा। अच्छा बाउंसर था, और यही एडवाइस शायद साउथ की तरफ से भी मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने थम्स अप किया कि बिल्कुल इसी तरीके से बॉल को छोड़ना है, बल्ले को नहीं कनेक्ट करना इतने ऊंचे बॉल पे। ये अच्छी बॉलिंग आकिफ की, और जो फील्ड प्लेसमेंट है वो भी अच्छी है, बिल्कुल स्पॉट ऑन थे। अगर यहाँ पे बल्ला लग जाता तो कुछ ना कुछ चांस क्रिएट हो सकता था। और ये बेहतर हिकमत अमली है कि जब आप अपने फील्डर्स को इस तर्ज के बैटर के करीब रखें। एक बार फिर बहुत करीब था कि यहाँ पर हाथ या ग्लव होता। अच्छी अब स्ट्रेटजी है इस वक्त आकिफ की। जी अच्छा टाइम है, इधर फंसा सकते हैं मोहम्मद उमर को। 2 बॉलें ऐसी खेली उन्होंने कि बिल्कुल उनके पास क्लू नहीं था, और ये एक अच्छा टाइम होता है बॉलर के लिए कि वो बैट्समैन को फंसाए। डीप थर्ड मैन, लेग गली, शॉट फाइन जिसे कहते हैं, कैचिंग शॉट स्क्वायर लेग, और इस बार सिंगल लेने में कामयाब हुए मोहम्मद उमर। इनकी बैटिंग को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने जिस तरह बैटिंग की, 60 रन्स किए थे और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, और अपनी टीम को इस बुरहान से निकाला था। जी इसमें कोई शक नहीं, सऊद शकील अपना ये 5वां मैच खेल रहे हैं इस सीज़न का ट्रॉफी के। अब तक इस मैच से पहले 380 रन, 158 इनका बेस्ट है इस सीज़न का। ऑफ स्टंप पे खड़े खड़े इस बॉल को खेला, और दूसरे के लिए पलटेंगे अजीम घुम्मन। डीप पॉइंट से डीप कवर के एरिया में आए और बहुत तेज़ी से ग्राउंड कवर किया। बड़े अच्छे फील्डर हैं, फोकस लग रहे हैं आज। सो शकील 95 पे पहुंच चुके हैं, सेंचुरी के करीब। ये देखें, गुड पिक, व्हाट अ रिटर्न। थोड़ा सरप्राइज हुए इस बॉल पे, और इस तरह के सरप्राइज पैकेजेस का सामना करना पड़ेगा। और आकिफ की बॉलिंग में भी जान आई कि हम देख रहे हैं कि लेग साइड पे जो कैचर्स हैं, और इस दफ़ा ऑफ साइड पे भी उन्होंने बॉल को उछाला, सरप्राइज किया उमर को।
लेकिन फिलहाल वो जैसे यासिर ने बात की अच्छा साथ दे रहे हैं, राइट ऑफ नहीं कर सकते आप इनकी बैटिंग को इन लम्हात में, जो इवन कल का दिन था काफ़ी हिस्सा शाम का उन्होंने गुजारा कैप्टन के साथ। फिर अपिश वेल इस डॉट बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 71 ओवर्स 236 पे 7 से। बॉलिंग परफॉर्मेंसेस इन पहले 100 ओवर्स और बलूचिस्तान इस वक्त बिल्कुल बॉटम पे प्रिवेल कर रही है। 35 विकेट उन्होंने लिए हैं, 47 उनका एवरेज है, इकॉनमी 3.69। पहले इस वक्त चेंज ऑफ पेस, वेल बेहतर ऑप्शन है इस वक्त असद शफीक, और यकीनी तौर पर दूसरे एंड से भी कुछ ना कुछ तब्दीली होनी चाहिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त असद शफीक अपनी लक को टेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी 2 विकेट हासिल कर चुके, कंटेन भी किया उन्होंने। या सऊद ने सिंगल लिया, अच्छा आइडिया है, क्योंकि उमर को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्पिनर्स पे, स्पेशली ऑफ स्पिनर जो कि बॉल अंदर आएगा उन्हें। एज हुआ, आउटसाइड एज, और एक ही रन लेंगे। वेल जैसा कुमार ने ड्राइव किया, बॉल एज, देखिए अब रीप्ले, थोड़ा सा दूर खेले, स्लिप तैयार ज़रूर है लेकिन उनसे दूर गया बॉल। आसानी, सऊद इस वक्त 90s में है और ये तीसरा मौका आगा इस ट्रॉफी में जब वो अपने 50 को 100 में इनफैक्ट कन्वर्ट करेंगे। या सिर्फ एक स्ट्रोक अवे है सऊद 97 पे। मोहम्मद उमर अच्छा साथ दे रहे हैं उनका। इसी तरह बॉल वो माइट भी थोड़ा सा पीछे हटे थे कि बॉल अंदर को आएगा, शायद अब गली का फील्डर ले ले। दूसरा मौका है कि यहीं से बॉल जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गली का फील्डर ले लिया है असद ने। जी, और जो इससे पहले भी हमने बात की कि जहाँ जहाँ बॉल जा रहा है वहाँ अपने फील्डर जो है वो स्पॉट ऑन करते जा रहे हैं। वजह इसके मेरे ख्याल से कि ऑलरेडी जो कंसिस्टेंसी है वो रहनी चाहिए कि आप अपनी जो कप्तानी के टैक्टिक्स हैं, प्लान हैं, उनके मुताबिक फील्ड प्लान्स करने चाहिए। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 72 ओवर गए, 239 पे 7 सेन। Kashif Bhatti for the first time this morning. Saud Shakil just one stroke away from a fantastic 100.
He's been there since yesterday. He's not 100% fit, but he's been there. He's stood tall, played for the team. A true captain's inning. Good morning to Shah Faisal alongside me. Good morning, Ali. Good morning, all. Superb inning. An inning full of purpose. It has been. It looks like he's had a change of game plan since the last game, where he took his time. Normally he's very fluent and scores quite quickly, but he's come to adapt a method on this pitch where he realizes he needs to take time and dig deep for his team on the verge of back-to-back hundreds. Even in the last game, remember, he took his time after that blazing 100 from Khurram Manzoor. It was Saud Shakil and Umar bin Yusuf who took a lot of time to get to their hundreds. Saud has followed suit. And he's in no hurry. He's taking his time. That is the beauty of this inning. Mohammad Umar has stood with him for his 43 deliveries. It's the deliveries that matters. How long he stays with Saud Shakil. We're into the 73rd over of this inning. 7 overs away from the new ball. That will be another challenge. Good work, Kashif Bhatti. There is a suggestion that they could have brought their spinners on early just to get to that new ball soon enough. Talking to Khurram Shahzad as we watch another firm drive, nicely fielded by Bhatti. Khurram Shahzad, he was expecting some reverse because they thought they got the ball to reverse last evening. But it didn't work out the way they planned out, and eventually they have to rely on the spinners to get them through to that new ball, which will be the key phase. 239 for 7. Yeah, bowling performance, if you talk about the first 100 overs, they're right at the bottom. Balochistan, they've struggled with the bowling. Just 35 wickets, average 47, economy also on a higher side. They bowled lots of overs too. And high average also. And runs given, 1649 runs. That's a lot of runs. We're just into the 5th game of this Quaid-e-Azam trophy. So they have struggled. They have not been consistent with those 11s also. They've changed their bowling lineups. Ahmad Bhatt also not included. Yasir Shah not there. Taj Wali not playing. So they've been making lots of changes. Khurram Shahzad will continue bowling. As we were talking about the reverse swing, yes, he said that there was a hint of reverse swing, and probably that is the reason they've tried this first spell this morning. If there is any moisture, just to get use of that. And then this reverse swing a little. Yeah, but also disappointing from Balochistan against Umar. Even now you see there is one slip. To begin with, there were only 2 slips, and that edge flew through the 3rd slip area. If you're looking to get the side bowled out, you were ahead at the start of the game. You were leading. Tail ender that was being protected. You needed to go all out to get him out. Mr. Trick there. Asad Shafiq has been brilliant otherwise. Sharp bouncer. He's bowled with some venom this morning, Khurram. He's got an edge a couple of times. Went through the slips. Now they're trying the short pitch stuff against Umar. He's been in for a while now, so he's seeing them a bit better. Another one. The field is set for such bowling. There's slightly close, short leg. There's mid wicket in place. Just hit him on his bowling arm, that finger. It's not an easy job being a tail ender who has to stay there, and somebody who likes to go big against this hostile bowling from Balochistan. Ooh, that must have hurt. He was looking to remove that bottom hand.
jam. It's looks like it's all right. The bottom hand gloves for the 2 fingers are normally pretty good. That they're meant to protect those fingers. Just a little break in play. It's been such a quiet morning. Not a lot of action. There's plenty of action remaining in today. The big game. The mother of all games, they call it. Pakistan versus India. And where? At the MCG. Probably 90,000 people will be watching. Doesn't get any bigger than that, Ali. Oh yes, goosebump stuff. Pakistan taking on India. Always an exciting game. What about this dressing room? Quaid-e-Azam, disappointed with the shot he played. You were commentating then, right? When he played that shot. What was the reaction? What was your reaction? My reaction was same as Asad Shafiq. I could not believe it. Yeah, we're talking about that big game. I know everybody will be tuned in and we'll be watching it as well. We've got a makeshift arrangement here in the comm box. Just an extra screen added by the production team. Appreciate that because I really want to follow that game as it happens. And like Ali said, it's goosebump stuff. Games of cricket doesn't get any bigger than that. Yeah, Ireland has given the target of 129 at the moment. The game going on between Sri Lanka and Ireland at the moment. It's going to be a good chase by Sri Lanka. 129 against Ireland. Well, he's been a part of these epic battles in the past. The man on your screen, Asad Shafiq, played in that iconic semi-final. Oh, this almost went over the top of the middle stump. Asad Shafiq played in that 2011 World Cup semi-final at Mohali. Where were you, Ali? Right in the stadium. I was there watching that game. It was a fantastic game until the last 10 overs for us. Of course, we were winning all throughout the game until that last 10 overs game. Especially that thing happened when Umar Akmal lost his wicket. I think that was the moment when we knew that it's done. Umar Akmal and Razak. That funny old leg cutter from Munaf Patel, cannot even forget it till the day. No ball. Also can't forget that little shot that the professor played on that day. He was playing so beautifully. And then came out that ramp from way outside the off stump. Oh, memories. Some painful memories. But recent memories have been pretty good. 152 for no wicket. The Babar-Azam era. The Babar, definitely. Sarfraz Ahmed, well, he was the captain when Pakistan beat India in the final of Champions Trophy 2017. Sarfraz Ahmed was the iconic captain there. Fantastic man. Fantastic team man. Yeah, another of those battles you can never forget. The high time of his career, the peak of his powers. Took the last catch, the winning moment that will live long in the history of Pakistan cricket folklore. Well, it will live forever. And Sarfraz will also live forever. That day was also a memorable day. Beautiful sunny day at the Oval. Just about perfect from start to finish. Won the toss that at Fakhr Zaman dismissal of a no ball. And Pakistan never looked after that. What was your moment of that match? To me, it was that LBW review taken by Shadab of Yuvraj. When they were confused that did it hit the bat and the pad together. I think that was the moment that really Pakistan won the game. It was my favorite moment of the game. Well, my moment was Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Great line from also from a great broadcaster, great cricketer, Nasir Hussain.
Such comments, such lines also live in the memory forever. Wow. Definitely, that was a fantastic game. Still can remember every ball. In fact, that whole tournament for Pakistan was amazing. The way Pakistan played that tournament, the form of Hassan Ali, I think that was commendable. He was just brilliant in that tournament. Mohammad Amir also. Azhar Ali also scoring runs in ODIs. Quaid-e-Azam, everyone contributing. Yeah, that's what I said from start to finish, because Quaid-e-Azam, he went on the attack. The way he took on Ashwin, the key bowler, and then the finishing touches by the professor. Great 50 that was, because the last 10 overs, Indians didn't know what hit them. Nice. Then that spell by Amir. That in-swing against Rohit. And then the rest was history. Defense is the role for Umar. It's 241 for 7. Sohail की भी है कोई इंडिया की मेमोरी, इसको भी दिखा दें. .269 plays 241. Balochistan still leading by 29 runs. The immediate moment of interest in this game is Saud Shakil's 100. Just 2 runs away, and he's on strike. To Asad Shafiq. He's taken 2 wickets. But all eyes are on Saud Shakil at the moment, who is on 98 rather, just 2 runs away. And is facing Asad Shafiq, who's taken 2 wickets already, 2 big wickets. 2 left-handers for Wad and Saad. The second one was more of a classical off-spinner against a left-hander, just ball running on with the seam and trapping the batter in front. That is what he will be aiming for against Saud. Still no run. Still on 98. He's in no hurry. He's such a character who looks very cool, very calm, expressionless, always in control. Yeah, that's that natural variation that we were talking in the morning. That ball turned a little bit. The ball that happened to Saad from a similar length, it just ran in with the arm. So it's not a regular spinner. So yeah, those variations, Saud will have to be very careful with that. That's a good run. The moment he hit it, he knew that there is one available. Although he's not 100% fit, he's got that hamstring problem since yesterday. But he has done really well. Do you see his face? He's not showing any expressions at all. There you go, soft hands. The mid-off was on his heels. Asad was disappointed with his fielder. He wanted Saud on strike. Well, he'll have 2 chances to go at Umar. That silly mid-off is a good position, I tell you. What do you think? For how long Umar will hang in there? Just maybe he's waiting for Saud to get to his 100 and then maybe come to his own zone, his own capabilities. We saw what he's capable of. Scored that destructive 50 in the last game. Can hit big sixes also. Is an aggressor by nature. But this inning has been unlike his. Well, he wants to call him on an all-rounder. He told me that he can defend. Today he's showing it. 76 gone, 242 for 7. Yeah, talking about the capabilities of Umar as an all-round cricketer. I think there's a little competition going on between him and Asif Mahmood for that all-round position in the team.
Because if Mir Hamza comes out and the way Ghulam Mudassir has bowled, I think he's certain to have his position in the next game. So it's either going to be him or Asif Mahmood making way for Mir Hamza. That's it. Back-to-back superb hundreds from South Shakil. Third of the season. The most passionate one, the most composed one. He's done an excellent job for his team. Stood tall and he has completed a fantastic 100. The wickets fell around him, but he stood firm and he played an out of character innings, you'd have to say, but he dig in deep and was really prepared to take his time, put a few shots in the locker, just grind it out. A tough 100, a fighting 100. Well played, South Shakil. Superb 100. Does the role change for Umar Shah Faisal, or he still hangs in there blocking? To be honest with you, I just didn't understand really Sindh's approach. He's taking time out of the game without much progress in terms of the runs. So yeah, I would have hoped that Saud would be more proactive, have more confidence in Umar, because he's batting at number 9. His approach could have been ideal if it was number 10 or 11. He refused quite a few singles, so the game hasn't moved along as it should have, because Sindh has a realistic chance of winning this game. Well, both the teams have. Somebody need to take the initiative. Oh, nice. We must not be saying that early. Remember, the last game, we both were of this option that KP can't lose it, but they did. So, in this game, I think all 3 results are possible at the moment. If both the teams have a very good chance of winning this game. That's why I was surprised when Balochistan didn't attack earlier on against Umar. So both the teams are sitting back, waiting for the other team to make a mistake rather than forcing the issue. 243 for 7. South Shakil has been magnificent. A proper 4-day 100, and that was the moment. Getting his second consecutive 100, third of the season. It's been a wonderful season for him. He's been around for Pakistan national side, and these 300s of this season will definitely make his case for the selection against England. Definitely, he's knocking at that door. He's been doing it consistently. He's made it to the squad, and now he's knocking the door to get into that playing 11 and get the coveted test cap. 300s, no 50s, so he's converting all of them. That's another very, very good thing about this little left-hander. He'll just ease it for one. He's in no hurry. He's got plenty of time left. Yeah, the hunger and desire to score more and more runs. And once you got 100, you don't want to give it away. Especially when the field is set, the opposition is not looking to get you out. Grind a few more. Yeah, interesting word, the hunger. That's what I asked Khurram Manzoor the last time he was here. He's not included in this game though. I just loved his answer, that it never stops. The cricket ends when the hunger ends. That sort of players these Sindh batters are, always looking for runs. Yeah, the man's fielding at first slip. He needs to show more of that too. Don't get bored. Don't give it away. Absolutely. Yeah, he was looking so good for his 50 runs until he got bored and just start hitting airy-wairy shots. To his credit, he admitted that. He said, I can't allow the spinner to bowl on a green pitch to me on day 1, especially when the fast bowlers are not giving you anything. But he was dealing with that, with a mystery spinner, not a regular spinner.
spinner that has something about him, the X factor. So maybe that was not a good idea to dominate him. You got to pay respect, even if you're Haris Sohail. Whilst we're at it, he's a very underrated bowler as well. He could easily have been thrown the ball for a few overs. He's known to be a partnership breaker, especially when we're waiting for the arrival of the new ball. Spin from both hands. Haris, with his experience, not a bad option. 246 for 7. Yeah, it's been dominated by the captain himself, Saud Shakil, still there on 102. 51 scored by Fawad Alam. 30 for Saim Ayub. Oh, nice, Kashif bhai. I think everyone is waiting for the new ball now. That is what we have seen. Captains, the bowlers, they're happy bowling with the new ball, because it's been only the new balls that have done something for the bowlers. As I was having a word with Ghulam Mudassir, he said it hardly is reverse swinging because of the green conditions. The ground is very, very green, so it takes a lot of effort to get that reverse swing going. You can see the condition of the ball also. Plenty of effort, you're right. This square is also pretty green. Umar is resolute in defense. If there's a point that I wanted to make, is that everyone knows that the new ball is about to come, and anything can happen on that new ball. Few chances are worth taking with this old ball to just get some quick runs before that new ball comes. I don't know. I'll ask you. It's not happening, I'm telling you. Because we know Saud. He likes it safe. That's a full toss. Played it towards onside. One-handed shot. Should go all the way. It does. It was just a rank full toss. He could have hit it anywhere. Nowhere near to the middle of the bat, but still gets a boundary. Breaks the shackles a little bit. Not full-blooded stroke. The intention was just half-hearted, but the result is good. He has it in him. Umar, he just needs that permission, that nod from Saud. Down the leg. 251 for 7. I was just talking about this approach from Saud and Umar, especially Saud being the set batter. If you think back to the past, someone like Yunus Khan or Misbah ul Haq, they were just great at reading the situation of the game. I remember so many test matches where after 70 overs, when the spinners would come, they would really dominate them, knowing that the new ball is coming and anything can happen on a new ball. So that last 10 overs before that arrival of the new ball, they almost every time used to capitalize big on those last 10 overs. In the gap. 2 is the call. They're not getting it, because it's a fantastic job done by the captain himself. Not the captain. It's Guman. Yasir Hamid will be so proud of this effort. Well, he'll be the man in action pretty soon, one hopes. The openers. This is just about the time when the openers start to think about their innings. Come on, Umar. You're better than this.
We'll see when Umar faces the new ball. But in a way, yes, he's not scoring big runs, but he's showing that he's got this skill also in him, that he can block also. What was expected of Asif Mahmood, I think he was disappointing. And here's an opportunity to Umar. He's doing what Asif Mahmood should have done, because we all have been talking about his all-round capabilities. He disappointed us, but he's not. That's through the covers. That is a wonderful shot. He's coming into his old self again, Umar. Another full toss. The bowler's patience finally gave up. They just want to buy Umar's wicket. Loopy full toss outside the off stump. Still, Umar hit it through the gap. He had to do that. He's done it quite well. Handy runs for Sindh. Getting closer to that target of Sindh as well. 256 for 7. The trail by 13 now. New ball is now available. Whether they take it or not, that's another question. It seems like there will be change of ends for Khurram. And I believe they will be taking it. Yes, umpire Afridi is signaling it. That new red cherry in his hands. That's where the energy comes to the fast bowlers, doesn't it, in this ground? It does. New ball is the key. Still early morning into the first hour. Slightly cooler, which allows the ball to swing more. He bowled a spell early on also, so he'll be relatively warmed up. There's a couple of slips, one gully. This is when the match begins now. Straight away. Some movement. That is what you want to see. A competition. Wonderful. Good angle there. Kept going away from South. He's playing well within himself. But he did feel for it. Yeah, in the end he tried as if he was playing well inside the line, but he did push at it. Good start from Khurram. Acknowledged by Saud also. Swung in. It's not taking it single. It's not trusting Umar even after 70 deliveries. The new ball maybe. He doesn't want him to face. What do you make of this tactics from Saud? How about giving him the license? Just, you got the new ball, it will travel also. Just go out, enjoy. I mean, I understand it a bit better now with the new ball, trying to shield Umar. But earlier on, with such an easy pace bowling. Fighting outside the off stump. It's happening. Something is happening at least since morning. There you go. Once again, the way going delivery, tempting South. He's prepared to go for it. Like Ali said, the new ball will travel. We might see some exciting cricket. Tickled. That will run away for 4. Is it off the pad? Is it off the pad? No, it's off the pad. Leg by is signalled by Afridi. Khurram got greedy. He's angling the ball away nicely. Twice he's tried that in-swinger. Not sticking to one plan for long enough. So this is well set. You got to cook a plan first before you can go for that magic delivery. Guilty of being inconsistent. Paying the price. We've been saying that forever now. Consistency is the key at this level.
Good delivery. Yeah, if this is where you want to set him up, you want to drag his right foot outside the line of that off stump by bowling that angle and then bring one in. Just persist with it for a while and then bowl the change-up delivery. One in swinger, one out swinger. Seldom works at this level. That's the man in the middle, Asif Mahmood. He'll be wondering what he did when he sees Umar playing the way he has. 17 not out of quite a few deliveries. I won't be surprised that he's demoted in the next inning. And Umar is promoted because of this effort from Umar. It's a good effort delivery, wide called. He's not happy. Yeah, he still is not happy. I understand he wants to keep Saud on strike, but anything that he's bowled angling away from him, Saud hasn't been able to put bat on ball. Tempt him, because Saud will go for the last ball, and that will create an opportunity to get him out as well. That's too defensive from Khurram Shahzad. Way too over his head also. Good way to end the over. It's time for drinks. तो यहाँ पर दाद देनी होगी सऊद शकील की इस इनिंग की। ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की और टीम जब मुश्किल में थी तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई। ये देखिए ज़बरदस्त बैटिंग यासिर, क्या कमाल की ड्राइव्स खेले। जी हाँ, खूबसूरत बैटिंग और ड्राइव्स बहुत अच्छी खेली, ऑन द अप बहुत अच्छा खेले। और ये देखें एक और ड्राइव,
कट शॉट खेली, बॉडी के थोड़ा करीब था लेकिन इन कंट्रोल था। 50 नहीं 100 रन इन्होंने मुकम्मल किया और बड़ी ही अथॉरिटी के साथ ये इनिंग्स खेली। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की एज ए कैप्टन। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सिंध की टीम के लिए। और बॉलिंग की बात की जाए तो खुर्रम शहजाद और असद शफीक ने 2-2 विकेट्स हासिल की और बहुत अच्छी गेंद के साथ आगाज़ किया है आकिफ ने। और सऊद शकील की बैटिंग की बात की जाए, जिस तरह से सेंचुरी स्कोर की, हमने देखा कि अब तक 3 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं सीज़न में, बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, मुश्किल वक्त में अच्छी बैटिंग की। ये बहुत अच्छी गेंद आकिफ की। जी हाँ, बहुत अच्छी बॉल, बाहर निकला, पढ़ के बाहर निकला और बड़ी अच्छी जगह से। यहाँ से इनको ये अंदर लाने की कोशिश करेंगे। अच्छे डिफेंसिव तरीके से इस गेंद को रोका। और बात की जाए, सिर्फ 8 रन की दूरी पर है अब सिंध की टीम और उमर ने बहुत अच्छा साथ दिया। 72 गेंदें खेल चुके हैं अब तक, 17 रन बनाए हैं और इस मुश्किल वक्त में जब सिंध स्ट्रगल कर रही थी, अपने कैप्टन को स्किपर का साथ दिया। जी हाँ, बिल्कुल। शुरू में हम देख रहे थे सिंगल्स भी डिनाई किए सऊद शकील ने, लेकिन जो मैसेज उमर ने अपनी बैटिंग से दिया है वो यही है कि वो उस विकेट पे स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नया बॉल है और उसको भी बेहतर खेल रहे हैं, बॉल की लाइन में आके खेल रहे हैं। अच्छे हैंडी क्रिकेटर हैं उमर, बॉलिंग में बड़े ही प्रिसाइज हैं अपनी लाइन लेंथ के साथ। इकॉनमी बहुत अच्छी होती है इनकी और बैटिंग में भी बड़े हेल्पफुल हैं और इस तरह की चीज़ जो है वो टीम को बड़ा अपलिफ्ट करती है। कल चाय के वक्फे के बाद ऐसा लग रहा था कि सिंध की टीम जो है वो ये रन्स पूरे न कर पाए, लेकिन सऊद शकील ने ज़बरदस्त बैटिंग की। और राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया आकिफ ने। उमर बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आकिफ जो है वो एंगल से बॉल को अंदर लाना चाह रहे हैं, हालांकि इनका ये नेचुरल स्विंग होता है और मेरे ख्याल से रिस्ट इनकी जो है वो लग नहीं रही, इन स्विंग पे ज़ोर लगा रहे हैं इसलिए बॉल बाहर निकल रहा है। अब इन्होंने राउंड द स्टंप आने का फैसला किया ताकि बॉल अंदर आए एंगल के साथ, क्योंकि अंदर वाला बॉल जो है वो उमर को डिस्टर्ब कर सकता है। बाहर वाले बॉल पे वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है उन्हें। 2 स्लिप से 1 गली। अच्छा लेफ्ट किया उमर ने और इमरान जावेद अंपायर बहुत ही अच्छे अंपायर हैं और इनके जो फैसले हैं बड़े ज़बरदस्त, बड़े वाइजली। वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर। और एक और अच्छा डिफेंस उमर का, पूरे एतमाद तरीके से इसको रोका। आकिफ का ये मेडन ओवर। 82 ओवर्स के अख्ताम पर सिंध 261 पर 7। और ये सिंध का डग आउट था। नेल जॉनसन और उनके जितना भी स्टाफ है, प्लेयर्स हैं, अब मुतमईन हैं सऊद शकील के ज़बरदस्त सेंचुरी के बाद। पुरएतमाद इनिंग्स, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और एक कायद का रोल अदा किया सऊद ने। जी अच्छा बॉल और छोड़ा बहुत अच्छा इन्होंने, बिल्कुल इनको पता है इनकी ऑफ स्टंप किधर है। और यहाँ पे आइडिया ये होना चाहिए कि इनकी जो पैट शॉट है, ड्राइव शॉट, उसको थोड़ा सा खींच के
उसी को प्रिसाइजली उस एरिया को हिट करें। 100 कर चुके हैं सऊद शकील, डेफिनेटली अपनी शॉट्स पे तो जाएंगे ये। और आखिरी लम्हे सऊद शकील ने अपना फैसला तब्दील किया और खुरम भी चिट चैट करते हुए नजर आए सऊद से कि आप इसको ड्राइव करने जाएं। बहुत अच्छी गेंद इस दफ़ा खुरम की। जहाँ बाहर निकला बॉल, अच्छा बॉल पढ़ के बाहर निकला लेफ्ट हैंडर को, बीट हुए। 2 स्लिप्स प्लेस की हैं सऊद शकील के लिए। एक गली, कवर्स, मिड ऑफ, एक और बहुत ही अच्छी गेंद। ये वो लाइन और लेंथ है जहां से बैटर्स और ख़ास तौर पर सऊद शकील जो मुकम्मल तौर पर पूरे एतमाद हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये अच्छी बॉलिंग, टेस्टिंग लाइन पे बॉल कर रहे हैं खुरम शहजाद। लेकिन कप्तान इस वक्त चाहेंगे कि इनको थोड़ा सा और थोड़ा आगे किया जाए, इनको बल्ले में बॉल लगे, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और सऊद शकील अच्छा छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सऊद शकील डिस्टर्ब हुए हैं। खुरम जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है और साइड स्क्रीन पर यहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन सऊद शकील डिस्टर्ब हुए और उसको यासिर जब फास्ट बॉलर इस तरह रन अप लेकर आए और बैटर जो हैं वो हट जाएं तो मायूसी होती है और फास्ट बॉलर इसको माइंड भी करते हैं। और इस दफ़ा इसको फाइन लेग पर खेल दिया सऊद शकील ने। यह यूजुअल रिप्लाई जो फास्ट बॉलर्स को होता है, इस तरह अगर उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो नेचुरली उनका बॉल पीछे गिरता है। इस बार बाउंसर किया और 1 रन हासिल किया। सऊद शकील कोई चीज़ बता रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए बैट्समैन जो है बताता है। यहाँ एक चिट चैट हुई है अंपायर और सऊद शकील के दरमियान और सऊद शकील अभी तक बता रहे थे कि मैं किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ था। अब देखना होगा कि उमर जो अब तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, आप देख सकते हैं कि 3 स्लिप्स और 2 गली के साथ अटैक करने का फैसला किया है, लेकिन बहुत ही पूरे एतमाद लग रहे हैं उमर। जैसे जब आपकी टेल खेल रही हो और इस तरह बैटिंग हो रही हो तो फील्डिंग साइड थोड़ा सा डिमोरलाइज हो सकती है, लेकिन उनको प्रसिस्टेंटली आगे बॉल करना चाहिए। और ये अच्छा बॉल था, लेकिन बहुत अच्छा खेले उमर, बिल्कुल बॉडी को पीछे लेके आए कवर की लाइन। और ये देखें, एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग उमर, स्टाइलिश लग रहे थे और बहुत अच्छा। एक दफ़ा गेंद अच्छी थी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेंद को अपने पास आने दिया उमर ने, पूरे एतमाद तरीके से इसको खेला। 1 रन बना इस ओवर में। 83 ओवर्स के अख्ताम पर सिंध 262 पर 7। बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं उमर इस वक्त अपने कप्तान का, उनको वो यकीन दिला रहे हैं कि आप मेरी फ़िक्र नहीं करें। जिस तरह शुरू में सिंगल्स मिस किए, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरत सेटिंग्स। और ये सरफराज अहमद, साइम अयूब, साइम अयूब का जो रन आउट था वो बहुत ही, आपको फील्डर को तो मार्क्स देने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वेल जज किया अंपायर ने, उनकी भी दाद बनती है, तारीफ बनती है। सरफराज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए थे। सऊद शकील
आकिफ का सामना करेंगे। अब तक 16 ओवर्स किए हैं आकिफ ने, 61 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की। यासो शकील में ये अहलियत है कि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। अभी 100 करके दोबारा उन्होंने गार्ड लिया और फोकस लग रहे हैं कि अगर इनको दूसरे एंड से मदद मिलती रहे तो ये 150 की तरफ जा सकते हैं, जो कि सिंध के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। कोई भी 50 रन के करीब लीड जो है वो सिंध को इस मैच में बड़ी अच्छी पोजीशन में लेके आ सकती है, और ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है, लेकिन हाइट ने जो है वो हाइट की वजह से बच गए सऊद शकील। बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर आई और सऊद शकील बिल्कुल क्लूलेस थे, इसको लेफ्ट करना चाह रहे थे, लकी रहे सऊद शकील। बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर इमरान जावेद की जानिब से। इस दफ़ा पूरे एतमाद और अच्छा डिफेंस। जहाँ ये बॉल छोड़ा और मेरे ख्याल से रिसीव हो गए थे, और हाइट पे वो उनकी वो ये समझे शायद कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनकी बॉल अंदर आया, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हाइट की वजह से ऊपर से निकल जाए स्टम्प्स के। लकी रहे सऊद शकील। बहुत अच्छा आगाज़ किया इस ओवर का। अब तक तीनों गेंदें बड़ी अच्छी की, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। और देखना ये कि अब सिंध का प्लान क्या होता है कि सिंध 70-80 रन्स बनाकर लीड करके जाती है, या अब जिस तरह से पिछले मैच में हमने देखा था अगेंस्ट केपी, लीड ली और फिर सिंध की टीम को जो है वो आउट किया, केपी की टीम को, और ये मैच जीता। देखिए अगर कंपैरिजन करें पिछले मैच में तो केपी की टीम ने भी और तेजी के साथ रन लिया, एक दफा फिर डायरेक्ट हिट, लेकिन ऐसा लगता है कि बैटर जो है वो कंफर्टेबली उमर रीच कर गए क्रीज में, और सऊद शकील खुश नहीं है क्योंकि तेजी के साथ एक रन लेना चाहते थे, खेलते ही कॉल की थी सऊद शकील ने। जी अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, लेकिन उमर जो है वो पहुंच चुके थे। हुसैन तलत थे फील्डर, बहुत अंदर थे, पहुंच चुके थे मोहम्मद उमर। यासिर एक अच्छी चीज़ बलूचिस्तान की टीम की कि फील्डिंग में बहुत एक्टिव नज़र आए, और ख़ास तौर पर डायरेक्ट हिट्स बहुत अच्छी थी। इस दफ़ा ऑकवर्ड तरीके से खेले उमर, पहले ही पीछे हटकर जगह बनाना चाह रहे थे। जी हाँ, लकी रहे कि बॉल जो है वो बल्ले के करीब से होके गई, लेकिन एज नहीं हुआ मोहम्मद उमर। बिल्कुल स्लिप प्रैक्टिस वाली इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन लकी रहे। 263 for 7। खुरम शहजाद, आई बेग यू पार्डन, अब तक 21 ओवर्स किए हैं, 77 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए हैं। खुरम मंजूर ने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, इस मैच में नहीं है। जी हाँ, और पिछले मैच में जो खुरम ने
सेंचुरी की थी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और सिंध उसकी वजह से मैच जीते थे और वो मैच ज़्यादा लग रहा था ड्रॉ की तरफ जा रहा है और इसमें थोड़े से रिजल्ट्स के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि इनके पास जो अब्रार का फैक्टर है वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई भी लीड, थोड़ी सी लीड जो है इनको मैच विनिंग सिचुएशन में उस सूरत में ला सकती है कि अब्रार एक एंड से आउट करें और एक बहुत बड़ा इनको एडवांटेज है इसका। और इस वक्त पैट करके भी बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। नजीबुल्लाह स्ट्रेच कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब असद शफीक दूसरे एंड से नजीबुल्लाह को आजमाएंगे। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद इस दफ़ा विकेट कीपर ने जहां से इसको हसीबुल्लाह ने कलेक्ट किया, गेंद पड़ने के बाद अंदर आई थी और बहुत अच्छा लेफ्ट किया सऊद शकील ने। काफ़ी अच्छा बॉल और बहुत ही अच्छा छोड़ा सऊद शकील ने। उनको पता है उनकी ऑफ स्टंप किधर है और ये जब फुल कंट्रोल में होता है बैट्समैन तब इस तरह की लेफ्ट करता है। खुरम शहजाद बहुत ही आला स्पेल कर रहे हैं, अनलकी कि कोई विकेट नहीं हासिल करें लेकिन जगह पे बॉल कर रहे हैं, स्पॉट ऑन है। इस दफ़ा इसको स्क्वायर लेग की जानिब खेले और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जो पिछला मैच था उसकी कंडीशंस में ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ की तरफ जाएगा, बट ये आज तीसरा दिन है, पहला सेशन है और ये हमने देखा है कि खुरम और सऊद में काफ़ी वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। खुरम एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। सो यासिर, यहाँ पे देखना है कि असद शफीक उमर के अगेंस्ट अटैकिंग फील्डिंग लेकर आए हैं। वही 3 स्लिप्स, 2 गली, शॉर्ट कवर और अगर यहाँ पर शॉर्ट लेग लिया जाए, शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर ज़रूर है। अच्छा, बिल्कुल अभी तक हमने देखा नहीं है कि उमर ने कोई बॉल लेफ्ट किए हों। वो विकेट के जो बॉल है उसके लिए वेट कर रहे हैं, बल्ला अपने पास रखते हैं। इनको थोड़ा सा अगर आगे ड्राइव खिलाई जाए, इनवाइट किया जाए शॉट खेलने के लिए, तो एक अच्छा आइडिया होगा बॉलर का। उमर काफ़ी सेट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर वो कुछ बाउंड्रीज लेने के लिए जाएं और थोड़ी लीड की तरफ अगर जाएं अटैकिंग अप्रोच के साथ, इस दफ़ा दूर से खेला उमर ने और कोई एतमाद नहीं था और एक रन यहाँ पर आसानी से हासिल किया। जी, आखिरी बॉल पे सिंगल लिया इस दफ़ा और हालांकि रन नहीं था। सऊद शकील 2 का सोच रहे थे और फिर आखिर में रियलाइज़ किया तो ये तो लास्ट बॉल था। अभी एक अच्छा मौका है आकिफ के पास, पूरा ओवर करना है। 265 पे 7। और एक दफ़ा फिर उमर स्ट्राइक पर हैं। आकिफ के पिछले ओवर में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तेजी के साथ एक रन लेना चाहते हैं और पहली ही गेंद पर सिंगल ले लिया। सो जो प्लान था कप्तान असद शफीक का, ऐसा लगता है कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और अबरार की आप बात कर रहे थे, अबरार एक ऐसा एक्स फैक्टर हैं सिंध के लिए कि जो अब मैच की पोजीशन किसी भी वक्त तब्दील कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से ये रन लिया क्योंकि पहले से बड़ी अच्छी एंटिसिपेशन दोनों की, और इस चीज़ को मेरे ख्याल से रोकना चाहिए था। यहाँ पे इब्रार की आप बात कर रहे हैं तो इब्रार डेफिनेटली एक एक्स फैक्टर हैं
इस टीम में। अब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है पिच। जब काशिफ भट्टी आए तो उस वक्त बिल्कुल नए बॉल से कुछ देर पहले उनको लाया गया। आई गेस थोड़े से और ओवर्स करवाने चाहिए थे उनसे। थोड़ा फ़ौरन ही 80 ओवर हुए और इन्होंने नया बॉल ले लिया और रिजल्ट्स आपके सामने। कुछ स्पिनर्स को मौका नहीं मिला बॉल करने का, और नया बॉल भी अच्छा नेगोशिएट कर रहे हैं। शायद अब थोड़ा असद सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, विकेट मिले, एक अच्छा चांस जो है वो पूरा ओवर खिलाना एक उमर को, वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। प्लान करके उसको आउट कर सकते हैं। अभी 3 बॉलें हैं, एक आध बाउंसर ट्राई करें, कुछ चेंज करें ताकि उनकी कंफ्यूजन क्रिएट हो उनके माइंड में। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी रही सिंध के बैटर्स की। साइम अयूब भी बड़ी अच्छी रनिंग कर रहे थे, 2 के रन आउट हो गए, बट सारे ही बैटर्स ने, फवाद आलम ने भी बहुत अच्छी रनिंग की, क्विक सिंगल्स लिए, और अब सिर्फ 2 रन्स की दूरी पर है सिंध की टीम। उमर की इंटेंशंस अगेंस्ट आकिफ, क्योंकि आकिफ ने अब राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया है 3 स्लिप्स के साथ। अच्छा, कोई यॉर्कर हमने नहीं देखा इन्होंने ट्राई किया हो। दोनों को एक ही तरीके की बॉलिंग हो रही है। थोड़ा सा आपको टैक्टिकली एनिमेटेड होना पड़ता है जब, और विकेट कीपर भी बहुत ही क्वाइट हैं। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, उठाकर खेल दिया। प्रॉपरली टाइम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ये बाउंड्री हासिल की, और यही इंटेंशंस थी उमर की। जी हाँ, इस तरह की शॉट्स के लिए जाने जाते हैं उमर। बहुत सब्र हो गया, आगे का बॉल था और उठा के खेला, और अच्छा शॉट, गुड इंटेंट। इनके ये वाले रन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनकी टीम के लिए। कि 50 से 60 रन की लीड बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है जब इब्रार जल्दी आएंगे बॉलिंग के लिए। 4 रन्स। और इस दफा हटकर, पीछे हटकर इसको खेलना चाहते थे, और अब 2 रन्स की लीड हो चुकी है सिंध की, और 271 पर 7। Not much impact with the new ball as well. Not much impact with the new ball as well. Still looking for that first breakthrough this morning, the Balochistan side. Saud is resolute. He's in no hurry. Umar, in his own peculiar way, has survived 85 deliveries. And now Sindh are leading by 2 runs. Man of the moment in the commentary box is Ali Yunus. Welcome along, Ali. Thank you very much. Nothing much has changed since we last commentated. Just lead by 2 runs. It's been that sort of a morning for Sindh. They're happy dealing in singles. That seems to be the plan for Sindh and South Shakil. Lately he's been showing more confidence in Umar's ability. Took a single on the second delivery of the over. That's more like it.
allow the game to flow now that once your team is in the lead. Time is of utmost importance. Getting 10 wickets is a problem on this wicket. You want to allow your bowlers maximum time. You can do that by scoring quickly, which Sindh hasn't done. Yeah, but the victory in the last game must have given them that confidence that they can bowl opponent out in one session. Opponents like KP. I think that's what they're persistent with, that they want to have that lead of 100, 150 if they can get to that. Then look to put pressure on the batting side, because by now this is their 4th game here. So now they know which lengths to bowl. Especially Ghulam Mudassir with that new ball. Umar has been fantastic himself as a bowler. And I have a feeling that it's going to be Asif Mahmood who struggled in this game. He has to make a comeback. Long ball for Khurram Shehzad. He's feeling the pinch as well. Yes, Sindh is in a better position in terms of their combinations. They've been able to rotate their seamers. Mir Hamza got a much deserved rest, so he'll be fresh in the next game. But looking ahead to today and tomorrow, that should be their paramount interest or focus right now, to get a result from this game. 2 results, 2 wins could really see them at the top of the table. Yeah, alongside Northern, already have 2 victories. It's going to be a good contest the last half, the last 5 games. KP were pretty confident that they're going to make a comeback after losing 2 games out of the first 5. It's not a happy place to be. The defending champions right at the bottom. Sindh at number 2. Wanted to play it late. Lucky that he didn't drag it to the stumps. You've seen that happen to batters. But what an inning. What a patient inning. 245 deliveries. Quaid-e-Azam, he'll be disappointed the way he got out. Things would have been different if he was there. That's a good bumper. That was on a very, very good line. Khurram Shehzad is now actually heading off the field. Probably a quick break, but that was a good one to finish off the over. 273 for 7. South Shakil has dominated this chart. 109 not out of 246 deliveries. 50 by Quaid-e-Azam. And a good partnership with Umar, who's on 24 at the moment. Good innings by him. It's 273 for 7. It's another hold up in play. That is the exact reason when we finish the day at 5 o'clock, we're always short on overs. This is a nice day. It's not hot at all. All these breaks, they do hurt the over rate at the end of the day. Everybody, apart from me, seems to be okay with it. Something wrong with me, Ali, or what? Everything. You're just an impatient person. Just things to move quickly. They take time in Pakistan. Get used to it. Quickly or according to schedule? Quickly. Well, 90 over schedule for the day till 5 o'clock. See, these breaks are important.
South Shakil is not 100% fit. He's struggling. He needs water. He needs to be hydrated. Well, yeah, you make a good point. Umar decided to give the charge, clear that front leg, and will just trickle away. Yeah, that's more like it. I like this approach now from Umar. He can do it. He has the potential to go big, to hit long sixes. This is one example. Just went back deep, cleared his left leg. It was in his zone. The area he chose, and that flick right in the end. More of a helicopter, reminds me of MS Dhoni. Every time we talk to him, he tells me how seriously he takes his batting. And also he tells me that he plays a lot of tennis ball cricket. So he's a big hitter. Time to unleash. I don't want to be speaking too soon, but he has those capabilities of being a good all-round cricketer. He can hit big. He has that technique to go big, the right technique that is needed to go big. He likes that cow corner. He can play over extra cover also. So he's got that range with him, Umar. But same is what we talked about Asim Mahmood when we saw him in National T20. I don't want to be early because he's disappointed us. If you look around the world cricket, Ali, pace bowling all-rounders, well, I wouldn't call him an all-rounder on this defense though. This is right out of the Courtney Walsh manual of coaching. Whatever works. He just has to stay there. That is the funniest defense or the dot ball that I've ever seen in my life. Well done, Umar. You're making us enjoy. You're entertaining us even with your dots. And he knows how to leave. Yeah, I was talking about the best all-rounders, this pace bowling all-rounders, especially in the white ball format. Who comes to mind? Who do you think is the best in business? Well, the best has to be Ben Stokes, no doubt about that. Hardik Pandya also. I think it's the type of player Umar is. I think he's more, we can relate him to Hardik Pandya. The way he bowls, especially with the new ball also, bowls those effort deliveries and then can come lay down the order, hit big sixes. The Ben Stokes is another level. Edged and away from that second slip. They've been very reluctant to put a third slip in all morning. This is the second one that's gone through in that area in the air. Pay the price for being ultra defensive against a tail-ender. Yeah, it's working for him. Third slip would have gone straight to him. But they've not put the third slip in since morning. This is not the first time that the ball has gone through that area. That is not good captaincy. You got to be having those men around to take the wicket, especially to Umar. Chasing the ball a little bit now. One ball too late, Asad Shafiq. Now got three slips. I just hope for his sake that that ball goes into that third slip. Like I said, one ball too late. Always. It's 281 for 7. Najibullah been given the ball. We did see he was bowling a bit better to the left-handers because of his action.
1 for 45 his figures. Remember, he got the 5-fer in the previous game. In the air, but through the gap. Played it away. South Shakil making good use of the width. Now all hands. Once again by South Shakil. He's been brilliant in that area. Even they've got 2 fielders placed there. Have a look at that. Just a little footwork and all hands. Beautiful. No one could stop it. There's a fielder at deep point, but he had no chance whatsoever. Wonderful follow through also. Superb cricket. You see, just threw the hands at it. He wasn't looking to keep the ball down. See the angle that Najib creates. As easy single being taken south, so whatever point I was making is irrelevant now. Have 2 fielders on the onside, on the boundary, bowling outside that off stump. Yeah, those 2 fielders are there just to put that doubt in South Shakil's mind that anytime you can have that delivery, just to have that doubt in his head all the time. The reason I'm saying, because at this stage, we've seen South this morning, he's going after the bowling if it's outside the off stump. And the angle that Najib creates, the natural angle, you can tempt him in playing in that direction and probably have 7-2 field. Lead is of 17 runs now. Now Saud will come back on strike, and it's exactly what I wanted to make the point, that allow him to go through that offside and just trust your bowler. Give him the field where you want him to bowl. You needed somebody like Taj Wali, I'm telling you. I just love his passion for the game, Taj Wali. He's somebody who can bowl all day long with the same pace, same energy. Just a wonderful character. Unlucky that he missed out on this game. That's the natural angle from Najib. See, there's the 2 fielders I was talking about. Even that mid-on is way back. So Saud at the moment has been given the impression by the Balochistan bowlers that we're not there to get you out. If you get out by yourself, that's fine, we'll take it. But we're not looking to get you out. Beautiful delivery. Beautiful bowling by Najibullah. More evidence that why one of those deep fielders is just surplus to requirement. You could have it in that direction. That's an absolute peach of a delivery. That angle, the movement and the bounce. To do that to a batter who's batting on 114, superb. Yeah, just 9th over for this new ball. It will do a bit. This is what they were hoping for, but they haven't gotten wicket with this new ball. They would be disappointed. The lead is now 18 runs. South Shakil is looking so comfortable at the moment. Now the fielder at long on is brought up to the mid-on position. And the fielder at deep square leg is brought into square leg, normal square leg position. Chance. Good call from South Shakil. Nice and early. 287 for 7.
2 wickets each for Khurram Shahzad and Asad Shafiq. 1 for Najibullah, 1 for Rakif Javed. 287 for 7. Khurram Shahzad, I think. In the distance, it's Hussain Talat. Beg your pardon. The all-rounder, the partnership breaker. His skipper really needs him to break the partnership. A gentle outswinger. Still, I don't like those 2 slips because Umar will go for that fuller delivery if he's offered the opportunity. The lengthy balls. I think he can be deceptive. Probably has the chance of breaking this partnership. Hussain Talat, he's got that habit of bowling that hard length at times. He just doesn't trust enough himself. Yeah, that's much better now. Bringing that fielder over. It's just a change of personnel, is it? No. Short cover catching. Two slips in a gully and a short cover. At that length, I tell you, Hussain Talat, he'll keep on bowling on those lengths. But what do you think, Shah Faisal? Is hanging around an option for Umar or to somebody like Hussain Talat with gentle medium pace? Or he can just attack a little bit, just go after him, make him change that length, use your feet. Just depending what Sindh wants to achieve from those last 10 minutes before lunch. Nicely played. Probably the best stroke of his innings. Any top order batter would have been proud of that little push through the offside. I don't agree. The best shot was that dot delivery that he faced, that defensive shot. If you can have a look at it again, that unusual stop that he did, that defensive shot. I'm going to request the director to show us one more time before lunch. He's looked committed. He's been in there with a purpose. Yeah, that's what we were talking about. Beautiful. Makes me laugh every time. There's not just amazing. The commitment level. 10 on 10. 96 deliveries, he stayed there. Oh, that's lots of oohs and ahs at the moment. Hussain Talat thought it just got the best of South Shakil. But he looks comfortable. Look at that. Inside edge. Going towards fine leg Taj Wali. 96 deliveries for 34. Wonderful inning. I know all eyes. Oh, it's a familiar face. His name is Kunnumal. You must all remember that. It's not K. It's Kunnumal Asif. Excellent man. Keeping a close eye on the game.
It's a big one, a flick shot. Has it gone enough? Not quite getting the elevation, but that's a good effort. At least he's trying something different. He's showing that he can hit it. A bit of Pandya in him, definitely. I've seen Hardik Pandya play these shots. Definitely, look at that. That flick right there. Nicely done. This boy is the talent. Well, he's showing us what he's made of. His defense is not orthodox, but we know he can strike them big. 291 for 7. Found the good angle there, Najib. Onside field, deep fine leg, deep square leg, long on. And the bowler is bowling a perfect line, the 4th off stump line with a bit of movement and bounce. How would you make sense of that onside field, Ali, when Najib is bowling so beautifully? Yeah, as I said earlier, it's just to create that doubt that you can expect that any time to happen. He's persistent outside the off stump. This is the plan A. The plan B is those short deliveries, those bounces, maybe the 2 fielders are placed for that. See, his body falls away, and that's the natural angle that he creates. And Saud has been very uncomfortable. This is Najib's 2nd over of the spell, and not a single ball has gone on the onside. Wasted fielders on that side of the ground, in my opinion. Another good one. There was a very interesting incident happened right between these deliveries. When Umar struck that helicopter shot, Empire Afridi was of this opinion, what this bat is made of. He's been a good cricketer himself. He was inspired, he was impressed from that helicopter shot that Umar attempted. He's a good man, Empire Afridi. Cricketer himself, he will understand. It's very important for umpires that they have played cricket, because they'll understand. No ball. Najib has overstepped quite frequently, but I'm impressed with his spell. He's really bowled well to Saud in this spell. Just overstretching a little bit. Overstretching? Little bit, you said? The overstretching. Oh, but okay. this overstepping Overstepping. was quite big. I get the difference, my bad. So that the director said overstretching or overstepping. That's a good leave in the end. But Ali, did you notice that? Najib's run up, as he approached the wicket, he just slowed down just to correct his steps because he'd missed his run up. You won't advise this to any youngster. Have a look. Starts off quite nicely, but then keep watching, because there you go. That is what you don't want to teach youngsters. And that was another no ball, I think. Umpire Afridi missed out there.
We noticed a similar problem with Najibullah last year as well with his run-up. And like I said before the start of the game, that I was very interested to see that what kind of development he went through for the whole year. It's kind of disappointing to see that he's still making the same mistakes that he did last year. To 92 for 7, Sindh. Should be the last over before lunch. Sindh would be very happy. They've not lost a wicket this whole session, although not many runs scored though. The defensive approach of Saud and Umar continues. The lead by 23 runs. Yeah, and over in Australia at the Belrive Oval, Sri Lanka has swept aside Ireland by 9 wickets. Half century for Kushal Mendes. Dhananjaya once again amongst the runs. Quaid-e-Azam, 31 of 22. Sri Lanka, they lose the first game. An upset loss, both in Asia Cup and here as well in the qualifiers. Getting into their groove. They're a very good side, a very young, energetic side, Sri Lanka. And the way they play cricket, I mean, it's just amazing. From Asia Cup, losing the first game, they were nearly out of the tournament and made a comeback, won the tournament. Just amazing, these young boys coming in together, playing like brothers. This is what he said in an interview. Just amazing to see. What do you think? These conditions, Sri Lanka starting off like they did in Asia Cup. What would you rate? They've got some quality teams in their group. They will have to beat Australia, New Zealand. Who else? England. England. The My group God. of death. Yeah, that's a very, very tough group. Sri Lanka will do very well to get out of that group. But they started off nicely. So they'll have New Zealand, England, Afghanistan, Australia. Boy, this is a tough group. Who's your pick from that group 1, Ali? Oh, England and New Zealand. Just the way New Zealand has started. Remember the run rate? 4.45 positive. And 4.45 in the negative for the hosts. Yeah, that's going to hurt them. That was such a thumping win by the neighbours. They handed it to Australia. They'll remember it for a long, long time. In the air, just falling in no man's land. Everybody is at the boundary line. Yeah, the surprise delivery, the surprised pace by Hussain Talat, surprised, rather shocked Saud Shakil. Got him on his hand. 37 not out of 99 deliveries. All eyes on Umar. Should get another 50. It will be a very unlike him. You've seen him play those big shots. But that is what, yeah, we've been talking about it. We don't want to be extra critical for Asif Mahmood, but this is what we were expecting from him. Not just one-way cricket. The commitment level. It's really question the Balochistan tactics. Their bowlers not express, relying on a short pitch stuff on day 3 on a slow wicket, which is getting slower as the game has progressed. That fuller length would have been more productive, especially if they had the fielders in the right place. They really started off the day with being ahead in the game. It's really had a lackluster session, no wickets at all. And now they're behind by 25.
Just love the way he defends. There's just some X factor in him. I don't know what it is. Look at that. Do you like it, Ali? I love it. Absolutely entertaining. Did you used to play like this as well? No, I was an opening batter. But you got to give it to him. The level of commitment that he's shown. Whatever, he might not be that pleasing on ice, but it's effective. It's working. He's given new meaning to the phrase that we use in commentary. Right behind the line of the ball. He gets everything behind the line of the ball. With legs wide open. That should be it. That should be lunch. Here, day 3. Round 5 game. Sindh in a very commanding position, ending this session without losing a wicket, 294 for 7. Balochistan has struggled with their tactics, with their planning, with their field positioning. That's why that 0 in that wickets level, it's there. 79 runs scored in 28 overs. Disappointing session for Balochistan. They'll be a happy team, especially South Shakil completing his second 100, consecutive hundreds. There you go, standing ovation for the not out batters. Umar did his job, but plaudits for South Shakil. And he's really batted well. He's been discomforted by that injury. South Shakil unbeaten on 116. Good company by Umar, who's batted for 102 deliveries, mostly untroubled. 37 he made, a total of 92 overs, 294 for 7. Yeah, it's been struggle since morning. Even the new ball didn't work for them. Khurram Shahzad took 2 wickets yesterday, 1 for Najibullah, 1 for Akif, 2 for Asad Shafiq, none for Hussain Talat and Kashif Bhatti. 294 for 7. Sindh would be a very happy side at the moment. They're in the lead. That has been their plan. It has worked for them. They beat KP in the last game. Similar sort of approach. And they're doing it again. Action was few and far between in this session. Saud got into his groove, a nice flick, and then just freed his arms. That was the moment when he brought up his 100. He remained unflustered and unhurried. Umar eventually got some opportunity to get a few boundaries towards the second half of this session. Umar was more belligerent. Was prepared to throw the bat around, and some luck, like he did at the beginning of the session. No wickets in the session, and Sindh are now in lead. It's just been a fantastic inning from the captain, South Shakil. He's ready to talk to us. Our fellow colleague Mehak is there with him. इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध का मैच चल रहा है और हमने सिंध की तरफ से बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखी है सो फार। अभी हम देख रहे हैं तो हमने बहुत ही अभी लंच ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। और मेरे साथ हैं साउथ शकील। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने इतनी शानदार बैटिंग की है। आपकी ये 14th फर्स्ट क्लास सेंचुरी है, तो हमें पता है कि एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही है, यू नो you've got that under your belt। लेकिन अभी अपनी 14th सेंचुरी बनाने के बाद, फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? ऑब्वियसली जब भी आप सेंचुरी बनाते हैं, या तो आपकी पहली सेंचुरी हो या 14th हो, या आने वाले कैरियर में जो भी आपकी सेंचुरीज हो, वो जब अभी आप सेंचुरी करते हो आपके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। आप उसके लिए मेहनत करते हो, उसके लिए हार्ड वर्क करते हो, तो अल्लाह का शुक्र है ये मेरी 14वीं सेंचुरी। वेरी नाइस। तो अभी आप बैटिंग करके उतरे हैं, अभी लंच ब्रेक की तरफ जा रहे हैं,
तो आप क्या कहेंगे कि जो पिच है बैटिंग के लिए वो आपको कैसा लगा है सो फार? पिच काफ़ी अच्छा खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। हम थोड़ा एट टाइम्स लकी भी रहे, लेकिन यह है कि अगर आप अच्छे एरियाज़ में बॉल करेंगे तो वहाँ पिच में बहुत कुछ मौजूद है अभी भी। और अभी आप अपनी टीम को आपने बहुत हेल्प की है, ऑब्वियसली ये आपकी टीम के लिए और आपके लिए भी बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। आपने जो सेंचुरी बनाई है और अभी हमें पता है फर्स्ट इनिंग्स अभी भी जारी है, तो अभी आप क्या फील कर रहे हैं रिज़ल्ट के बारे में, अपनी टीम के रिज़ल्ट के बारे में और जनरली इस मैच के रिज़ल्ट के बारे में? रिज़ल्ट तो अभी काफ़ी दूर है। अगर हम देखें जहाँ से हमने बाउंस बैक किया है, उमर ने जिस तरह की बैटिंग की है, एक्सेप्शनल बैटिंग की है, उसने जो करेज शो की है मेरे साथ वहाँ खड़े हो गए, मेरी 100 कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, तो उसको भी बहुत क्रेडिट जाता है। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लीड यहाँ पे ले सकें और फिर उनको जल्द से जल्द आउट करें ताकि मैच में आ सकें। चलें वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस, आपने हमें बहुत ही शानदार बैटिंग दिखाई। थैंक यू। Thank you very much, Mahek. And this is how things look at lunch on day 3. 269 plays, 294 for 7. South Shakil still unbeaten with 116, and Sindh are leading by 25 runs on the first innings. It's time for lunch here at the Pindi Cricket Stadium. Players are taking lunch. We'll take a short breather as well, and we'll be back with live action in just about 30 minutes.
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुश आमदीद। खाने के वक्फे के बाद का खेल शुरू हुआ चाहता है बलूचिस्तान वर्सेस सिंध, तीसरा दिन। इंटरेस्टिंग लम्हात इस मैच के, और अब देखना यह है कि जो बैटिंग है वो कितनी मजीद चलेगी, क्योंकि अब भी मोहम्मद उमर देखिए 37 पे बॉटम पे 102 बॉलें खेली उन्होंने, अच्छा साथ दिया सऊद शकील का जो कि अपनी तीसरी सेंचुरी बना चुके हैं। 116 रन 261 पे, 294 रन 7 के नुकसान पर अब तक बने हैं, और सऊद शकील ने बनाया 116 रन 261 बॉलों पे। यासिर, बहुत ज़बरदस्त इनिंग रही उनकी थ्रू आउट, हमने जो जितने भी स्ट्रोक्स उनके देखे। जी हाँ बिल्कुल, और जो ड्राइव थी उनकी बिल्कुल स्पॉट ऑन थी इस मैच में। वंस अगेन जो हमने पिछले मैच में भी देखा, ये शॉट इसको मिस नहीं करते, इस बॉल का वेट करते हैं, और कट शॉट, ये दूसरी वो शॉट है जिस पे वो फोकस रखते हैं। ऑफ द टोज भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और बड़ा टाइम है इनके पास, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बॉलिंग कार खुरम शहजाद 23 ओवर में 81 रन देके 2 आउट किए। नजीबुल्ला ने 1 आउट किया 15 ओवर में 52 रन देके। आकिफ ने 19 ओवरों में 76 रन देके 1 आउट किया। असद शफीक ने 10 ओवर में 26 रन दिए, 2 आउट किए। सरप्राइजिंगली काशिफ भट्टी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। वेल, अब तक जो मैच की सूरत हाल है वो ऐसी है। 269 रन बलूचिस्तान ने बनाए, सिंध ने 294 रन बना लिए हैं, तो बेहतर पोजीशन में है इस वक्त सिंध की टीम। और इस 294 में जैसे अभी हमने बात की 116 रन की नॉट आउट की इनिंग है सऊद शकील की, वो अभी भी क्रीज पर है, और बॉलर्स के लिए बड़ा टफ टाइम है, लेकिन बैटर्स ने यकीनी तौर पर एंजॉय किया अपनी बैटिंग को। और हकीकत में जो यूज़ ऑफ क्रीज कह लें या यूज़ ऑफ सरफेस या यूज़ ऑफ क्लाइमेट, वो बेहतरीन है। और सिंध की टीम यहाँ पे लगातार मैचेस खेलती चली आ रही है, तो जो कहते हैं कि कंडीशन से हम आएंगी उस तरह से इनको हो चुकी। साजिद आफरीदी, स्माइलिंग फेस। जी हाँ, साजिद आफरीदी बड़े अच्छे अंपायर हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड। सऊद शकील, यकीनी तौर पर उनकी कोशिश होगी कि मज़ीद कुछ देर खेले और लीड को इम्प्रूव करें। 116 रन पे हैं, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लोअर साइड पे, लेकिन वक्त की नज़ाकत और ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन। और मोहम्मद उमर अच्छा साथ निभा रहे हैं इस पार्टनरशिप में, 37 पे हैं, और काफ़ी वक्त इन्होंने स्पेंड किया है क्रीज पर। नजीब प्रोसीड करेंगे खाने के वक्फे के बाद। पहला बॉल 2 स्लिप और गली, और यही इस वक्त तक का हालमार्क है कि आप पेसर हैं तो आपकी बॉल बआसानी बैटर खेल रहे हैं और अपनी जो इनिंग है उसको बिल्टअप कर रहे हैं। तो ये जो लीड है इसको मजीद, यासर क्या कहाँ जाता देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कल जो 7 विकेट्स ली, उसी 7 विकेट्स पे अटकी हुई है इस वक्त सिंध की बलूचिस्तान की बॉलिंग। और आज काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सेशन रहा। पहले 2 घंटे जो थे इसमें जो एक्सपेक्टेशन थी इस पर पूरा नहीं उतरी उनकी बॉलिंग, लेकिन अब जो है मोमेंटम एक दफ़ा फिर सिंध के तरफ घूमता हुआ। खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, आगे गिरा हुआ बॉल, उसे प्लेस किया कवर और पॉइंट के बीच में। गो के फील्डर मौजूद था डीप बैकफुट पे, लेकिन बहुत ही अच्छा टाइम किया हुआ शॉट, खूबसूरत प्लेसमेंट, फ्लो के साथ खेले, विद द फ्लो एंगल किया बल्ले को, और बहुत ही अच्छी शॉट, एक्सीलेंट। जी अच्छी टाइमिंग थी, बॉल फील्डर से कतरे पहले निकल गया। कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, ये वो तमाम तर खसूसियात हैं सऊद शकील में, और उसके साथ उमर जो कि उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। वेल, इस वक्त थोड़ी सी फुर्ती दिखानी होगी फील्डर्स को, बॉलर्स को, कि वो इन चीज़ों को सम अप कर सकें। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर 60-70 की लीड ले जाती है सिंध की टीम तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि जो सेशंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अब तक जो वक्त है वो इस वक्त बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर का
जो इंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो चेंज है यासिर विद अ स्पिनर, क्या समझते हैं कि 2-3 ओवर पेसर के बाद फिर स्पिनर पे आना चाहिए अभी? या देखिए, ये फिर हमें वंस अगेन यही डिफरेंस नज़र आएगा कि सिंध की टीम अबरार अहमद को और अपने स्पिनर को वैल्यू दे रही है और वो उसको अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। और बलूचिस्तान की टीम ने अब स्पिनर खिलाया लेकिन उस तरह उन पे डिपेंडेबल नहीं है, फास्ट बॉलर पे ज़्यादा डिपेंड करें, जो कि अच्छी बात है, लेकिन स्पिनर को भी आपने कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो बैलेंस बरकरार रहे। अच्छा बॉल छोड़ा। और जैसे स्पिनर की आपने बात की तो अबरार की आपने बात की, जो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं, 23 विकेटें उनके पास। तो असद भी खुद भी उन्होंने जो अब तक की बॉलिंग करवाई है, कल तो किस्मत उन पे बहुत मेहरबान थी। और दूसरी जानिब अगर हम असद, शफीक एंड कंपनी में देखें तो जो स्पिनर हैं काशिफ, ऑलरेडी हम बात कर चुके कि वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, गो के इतना ज़्यादा उनका वर्कआउट देखने को नहीं मिला। काशिफ ने इतनी ज़्यादा ओवर्स नहीं करवाए। तो फुल टॉस, आसानी खेल दिया इसको गैप में, ऑन साइड पे लंबा ताकुब है लेकिन रेस हार गए। या इजी पिकिंग साउथ शकील के लिए और एक्सेप्शनल बैटिंग, बहुत ही अच्छी। लूज बॉल जो भी हो उसको वो बाउंड्री पे पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बैटिंग साउथ शकील की। 302 पे 7। ये देखें, फुल टॉस बॉल था और गैप उनके माइंड में था कि यहाँ पे गैप है और उस वहीं पे खेले एग्जैक्टली। पहला शॉट भी हालांकि डीप पॉइंट मौजूद था, उन्होंने कवर से बाउंड्री ली और इस दफ़ा डीप स्क्वायर लेग के होते हुए मिड विकेट से बाउंड्री ली। फील्डर्स की भी दुड़कियाँ लगवा रहे हैं इस वक्त साउथ शकील। हुसैन तलत अब तक विकेटलेस हैं 10 ओवर्स में। लेग साइड पे ड्रिफ्ट करता हुआ बॉल, और ये लूजनर था, लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो बैटर्स के लिए साजगार हालात, आसानी के साथ वो अपनी बैटिंग करते हुए यकीनी तौर पर एक दूसरे से गुफ्तगू शरीक करनी चाहिए। हारिस सुहेल जो कि स्लिप में है, अच्छे क्रिकेटर हैं, इनके पास भी स्किल्स हैं, तजर्बात हैं, वो तमाम तर यहाँ पर बुरेका लाने चाहिए। असद शफीक हिमसेल्फ सीनियर तजर्बाकार, तो हमने इससे पहले भी देखा कि तमाम तर जो स्किल्स हैं वो अप्लाई करना होती हैं। वार्निंग मिल गई हुसैन तलत को, पहली वार्निंग डेंजर जोन में आने के लिए। तो अब उनको अपनी बॉलिंग के साथ साथ ख्याल भी रखना होगा कि वो डेंजर एंड पे ना, डेंजर जोन में इनफैक्ट ना जाएं। यह पहली वार्निंग इमरान जावेद की जानिब से, बिल्कुल ये अंदर आए थे और पहली वार्निंग मिल गई है। इस तरह की एक और डिलीवरी करेंगे तो इनसे बॉल ले लिया जाएगा। बॉलर को कभी कभी अपने स्टेप्स का अंदाज़ा नहीं होता और कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए उनके जहन से निकल जाती है चीज़। और ये देखें, नोट कर रहे हैं हुसैन तलत की, ये वाला स्टेप जो था ये बिल्कुल गुड लेंथ पे था। ईगल्स आई, थोड़ा सा लूज खेले जिस्म से दूर, लेकिन प्रोडक्टिव
वेल उमर भी अपने 50 के करीब पहुंचते हुए, ये दूसरा 50 होगा उमर का। इससे पहले इन्होंने सदर्न पंजाब के खिलाफ इसी वेन्यू पे पिंडी में ही ऑलरेडी 50 स्कोर कर रखा है यासिर। जी हाँ, बल्ले को हैंग करते हुए, और पहले भी इन्होंने 50 किया, और ये वाला जो 50 है इसमें 75 बॉलों में 15 रन थे सिर्फ इनके। अभी 108 बॉलों पे 45 हो गए हैं। 30 रन किए इन्होंने, रन बॉल खेले उसके बाद। तो बैटिंग की इनके अंदर सलाहियतें हैं। एक्सेलेंट। तमाम तर स्किल्स एग्जैक्टली यासिर जैसे आपने बात की, टेनिस शॉट, किसी सलाहियत और कॉन्फिडेंस, ईगर। जी हाँ, नीचे मैनेज किया उसे। स्पोर्ट्समैन होता है वो, उसमें सारी स्पोर्ट्स की टैलेंट होते हैं, टेनिस, स्क्वॉश, गोल्फ, स्विमिंग, फुटबॉल। एक्सीलेंट। तमाम तर यूटिलिटीज़, तमाम तर स्किल्स। और जो इनका पहला 50 था सदर्न के खिलाफ, वो भी पहली इनिंग में था। इसका मतलब है कि पहली इनिंग में एंजॉय करते हैं अपनी बैटिंग। जी हाँ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब से कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है, और मेलबर्न जो है इस वक्त कचाकच भरा हुआ है तमाशाइयों से। क्या ही मनाजिर है, पाकिस्तान और इंडिया का क्राउड ग्राउंड में मौजूद। बहुत बड़ा मैच आज पाकिस्तान इंडिया का, वर्ल्ड कप का पहला मैच। जी हाँ, एग्जैक्टली, बड़ा मैच है। इंडिया पाकिस्तान ऑल टाइम फेवरेट्स, और कांटेदार मुकाबले होते हैं। और उससे बढ़कर कि वर्ल्ड कप सोने पे सुहागा, जहां पर पाकिस्तान अब बैटिंग करेगा। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बारी करने की दावत दी है पाकिस्तान को। गुड लक करते हैं पाकिस्तान टीम को कि अच्छा खेले, और एक बार फिर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाए। अच्छा बॉल, व्हिप अप। इधर उमर अपना लोहा मनवाते हुए एक दफा फिर 42 पे पहुंच चुके हैं। आई थिंक स्कोर कार्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, पहले 45 लिखे हुए थे, अब 42 हो गए, माइनस हो रहे हैं इनके रन। इस बार खेल के इन्होंने बिल्कुल कंग फू स्टाइल में खेला। कंग फू का भी टैलेंट है इनमें। एग्जैक्टली, तमाम तरह स्किल्स इनके पास। और जैसे आपने बात की कि एक स्पोर्ट्समैन में वो तमाम तर लवाजमात होने चाहिए, वही इनके पास भी एबिलिटी है। ओह, मैं थोड़ा सा मुस्कुराहटें बिखेरते हुए, क्योंकि थोड़े से डल मोमेंट्स में इस तरह की जो चिल है। खुरम शहजाद अंपायर की जानिब उन्होंने थोड़ा सा जेस्चर शो किया, फनी। ये देखिए, जब इन्होंने बॉल को रोका, अंपायर सामने थे, और बजाय इसके कि विकेट की जानिब, अंपायर की जानिब एक हैप्पी जेस्चर। खड़े खड़े इस स्ट्रोक को भी खेला, और ऐसे ही कुछ लम्हात हैं इस मैच के भी कि आसानी के साथ, स्लोली बट श्योरली, कि तीसरे दिन का खेल भी आगे को बढ़ता हुआ। लंच ब्रेक के बाद का खेल इस वक्त जारी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी नजीब को, ताकि वो अपने कैप्टन्स के प्लान के मुताबिक अर्लियर ऑन, अगर खाने के वक्फे के बाद कि विकेट हासिल कर सकें। 2 स्लिप, एक गली है, बैकफुट पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। बेहतर है कि आप ऑफ स्टंप के बाहर का पड़ा हुआ बॉल छोड़ दें। टीजर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन उमर ने अच्छा छोड़ा। पूरा वक्त लेते हुए
असद शफीक यकीनी तौर पर इन टू माइंड्स होंगे कि पेसर्स के साथ कंटिन्यू किया जाए या फिर स्पिनर्स के साथ जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्पिन, इतना ब्रेक नहीं मिल रहा। सुबह के सेशन में भी हमने देखा खाने के वक्फे से पहले एज हुआ, और क्योंकि रफ्तार इतनी तेज नहीं है बॉल की, फिर भी यहां पर 2 रन का इजाफा। और जैसे यासिर पहले हम बात कर रहे थे कि जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, स्टेमिना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो चाहिए होती हैं, उसी चीज़ का इस वक्त मुजाहरा हो रहा है बीइंग अ पार्टनरशिप। बहुत ही कमाल खेले हैं सऊद शकील, और उनके साथ जो साथ दिया है उनका मोहम्मद उमर ने, बिल्कुल बलूचिस्तान की जो इंटेंट थी उसको किल किया, और अभी तक कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुई बलूचिस्तान की टीम। और जो प्लान था सिंध का, कम से कम 100 रन की लीड लें, तो बड़ा ट्रिकी सी लीड होती है वो। इसके साथ 95 ओवर गए, 310 पे 7। वेल, शराकतदारी इस वक्त अच्छी बनी है इन दोनों के दरमियान, सऊद शकील और मोहम्मद उमर, और बैटिंग भी वो दोनों अच्छी कर रहे हैं, अप टू द मेरिट। तमाम बॉलर्स को उन्होंने अच्छा खेला। वेल, हुसैन तलत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी उनकी बेहतर है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बॉल में उतना दमखम नहीं, बड़ी आसानी के साथ इवन उमर जो है वो अपनी बारी कर रहे हैं कि बॉल उनका बिल्कुल ऐसे आ रहा है रुक के, और बैटर के पास इनफ टाइम है कि वो ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे, जहां मर्जी अपनी टर्म्स को डिक्टेट करें। एफर्ट चाहिए पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए। बाहर बॉल, टेम्परामेंट, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि सऊद शकील जो ऑफ स्टंप से बाहर पड़े हुए बॉल है उनको हवा में फ्लैशी होकर खेलते रहे, लेकिन इस वक्त लगता यही है कि उनका जो प्लान है, उनके जो टारगेट्स हैं वो यही है कि क्रीज पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए, और बॉल से जो ऑफ स्टंप से बाहर गिरे हुए बॉल हैं थोड़े बाहर, उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन स्टंप क्रॉस करने के बाद वेल, हुसैन तलत जो कि अभी भी विकेट लेस है, बीइंग एन सीनियर प्रो या फिर इंटरनेशनल कैलिबर प्लेयर, कैप्टन हमेशा देखते हैं अपने उन बॉलर्स की तरफ जिनके पास तजर्बा है कि जो विकेट नहीं मिल रहे तो कौन सी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, टैक्टिक्स हैं कि उनको अप्लाई करके आप विकेट हासिल कर सकें। और अर्जेंसी थोड़ी नज़र आई है इस वक्त असद शफीक की तरफ से, फील्ड प्लान्स चेंज करते हुए ऑफ साइड से कवर से फील्डर निकाला और ऑन साइड पे पोजीशन किया। माइट भी कहीं ना कहीं को पैड का एरिया टारगेट करें, नॉट एक्यूरेट इनफ। अच्छा, बहुत आगे है ये, और उनके फेवरेट एरिया को फेवरेट एरिया में फीड कर रहे हैं उन्हें। स्पिनर्स को लाना पड़ेगा। फुल टॉस की थी, काशिफ भट्टी की अच्छी फील्डिंग कवर में, काशिफ भट्टी को एक एंड से लेके आए, मोहम्मद उमर जब फेस कर रहे हो तो ये विकेट निकाल सकते हैं। तेज करते हैं, स्टम्प्स में करते हैं,
Well, moments, picture capturing, lunch breaks. Short ball attempted, लेकिन बैटर के पास इनफ टाइम कि वो इसको सी ऑफ कर सकें. और 1 फॉर द ओवर. लीड बढ़ चुकी है 42 रन पे और इसको मज़ीद बढ़ाने की अहलियत है. और जो अब तक की पोजीशन है मैच की, उसमें लगता यही है कि लीड मज़ीद बढ़ेगी. एज हुआ, स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से बॉल गुजर गया. किस्मत इसको कहते हैं. लेकिन ये खेल चुके थे बॉल को, इसमें तो मेरे ख्याल से डेड बॉल दे दी अंपायर ने. बट अगर ये कैच हो जाते तो फिर ये क्योंकि इनकी अपील बनती है, वो हट जाते या तो पूरा. उन्होंने फिर भी वो देख नहीं रहते, नीचे देख रहे थे, लेकिन बल्ले को यूं किया, उन्होंने शॉट खेली है. दिस इज नॉट द बॉलर्स फॉल्ट. लेकिन इमरान जावेद इस बारे में बेहतर बता सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स, और इनकी डेफिनेटली इनको लॉस के बारे में भी पूरी तरह पता होगा. शॉर्ट बॉल, अच्छा इसको खेला, रन हासिल किया. स्ट्राइक अपने पास रखेंगे साउथ. 96 ओवर गए, 312 पे 7 सिंध. देखना ही होगा कैसा. थोड़ी सी वेल, नजीब अपना रन अप भूल गए. वेल, जैसे इन्होंने आगाज किया, टेक ऑफ किया, और यहां पर जाकर जो इन्होंने कदम थोड़े से छोटे करके निकाले, वहां पर मे बी अपने स्टेप्स भूल गए. ऐसा लगता है कि वो मोमेंट है जहां पर अपनी एनर्जी गैदर करते हैं. ऑफ स्टंप के बाहर रेगुलेशन इस वक्त का. और साउथ जानते हैं कि विकेट में इतना ज़्यादा जान नहीं, और जो इवन पेस बॉलर्स हैं उनको खेलना भी सब काफ़ी सहल है. तो बेहतर है कि आप ऑफ स्टंप के बाहर पड़े हुए बॉल को छेड़े नहीं. एक स्लिप और गली है, और ये बेहतर है क्योंकि ऑलरेडी बॉल जो है वो इतना ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा बाउंस नहीं. ऑफ स्टंप के बाहर. और यही वो लाइन है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो टीजिंग अटेम्प्ट्स होते हैं बॉलर की तरफ से कि आप इतना ज़्यादा
बैटर्स को जो है वो मौका मत दीजिए कि वो आपको चेस करे या फिर आप पे अटैक करे। लेकिन यहाँ पर जो ऑफ स्टंप के बाहर है, नजीब ने वही लाइन बरकरार रखी। कंसिस्टेंसी जिस तरह से हमने बैटर्स की जानिब से देखी कि वो बैट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर पड़े हुए बॉल्स को डिस्टर्ब नहीं टच नहीं कर रहे या फॉलो नहीं कर रहे, चेस नहीं कर रहे, उसी तरह की रिदम कह लें या कंसिस्टेंसी कह लें वो नजीब की तरफ से भी देखने को आ रही है कि वो भी अपनी बॉल को एक ही जगह पे, एक ही लाइन पे मेंटेन रखे हुए। और कोशिश उनकी भी यही है कि जो स्लिप का फील्डर है वहाँ पर अगर बॉल जो जिस लाइन में अभी करवा रहे हैं, अगर साउथ जाते हैं चेज करने और कहीं कोई किस्मत की देवी मेहरबान और मिस क्यों हो तो स्लिप के हाथ में बॉल जाए। लेकिन इस दफ़ा चूंकि अपनी लाइन से शायद थोड़ा सा तेज करने गए थे, ऑलरेडी अपने इस एक ओवर में वो रन अप भुला चुके हैं अपना। साउथ जो के ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में अच्छे रन्स कर चुके, वो काफ़ी वक्त स्पेंड कर चुके हैं। यकीनी तौर पर उनकी कोशिश होगी कि इस 41 की लीड को मज़ीद 3 फिगर्स में बढ़ाया जाए। कंटिन्यूटी बॉलिंग में इसके साथ डॉट बॉल 310 पे 7 सिंध। outside अगर ना हुआ एक बोल रहा था अभी जायज पहले चले आखिरी बोल रहा था ऐसे ही कर उसी जगह पे अपनी लाइन को बरकरार रखे हुए नजीब इसके साथ अब ओवर हुआ इख्तिताम पजीर 97 310 7 के नुकसान पर। $310 for 7. Nothing much happening here, but plenty happening in Melbourne, and not good so far. Umar 44, just 6 runs away from his second half century of the season. Very quiet looking K. Asif has moved in to the comm box. Good afternoon, K. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen, and I'm so happy with the effort of Umar, the way he played. This stuff was missing actually for a long time, and I wanted to see that the tail ender, they're performing well, they're supporting their team. Too short and too high. Imran Javed, one for the over as well. Good movement, excellent line, great delivery. सर ये रिप्ले दिखाया था, ये उसका सीम देखा कितना
quiet start after lunch as well. Sindh has moved on with their lead, 42 runs. Probably they're looking to follow the same pattern like they did in the previous game. Get up above that 100-run mark if they can, which looked very unlikely when the game started this morning because Balochistan was ahead by 54. But it's been a very, very lackluster effort by Balochistan. Yes, already now they're ahead 42 runs, and if they're getting something 100, 120, they'll be in good position. They've got the ability, they've good bowling lineup. And also, taking time out of the game. Got the edge and gone! Too early through his stroke, Umar. We were looking too far ahead in the game, but Sindh have lost their first wicket of the day, and Hussain Talat gets rewarded. Hussain Talat coming round the stumps, and it was a quick bouncer. Yes, and it was a clear neck. Hasibullah make no mistake. Umar gone on 44. Little disappointment there. Abrar Ahmed is the new batter, the Harry Potter. And before Umar lost that wicket, I was saying Sindh has been able to take the time out of the game, so the wicket is more slower now with the sun beating down on it. And it will bring Abrar into play in the second innings with some lead as well. Yes, he was, of course, disappointment there. Just 6 runs away from his another very good 50. But I think that the way he played, I must appreciate and support it a lot. Abrar, the best of 17. Not much pedigree with the bat. An average of 6. It wouldn't scare any bowling lineup. But I think I've seen enough to say that if he gets the ball in his half, he's going to swing. Two slips in a gully, a short leg and a short mid-wicket. Very short mid-off as well. It's about 15 yards away from the bat. He was shaping up for that big wind-up, but the length wasn't there. The way Umar got out, went for the pull shot, and Hasibullah took an easy catch there. Hussain Talat got his first wicket in this game. Yeah, not much celebration from him. You could tell that they expected this to happen a lot sooner in the day. Swing and a miss, almost by a mile. 311 for 8. Went for a big shot. So intentions are clear there, Shah Faisal. Yeah, but how far his bat was from the ball. Never got closer.
South will not allow Abrar to face more than 1 or 2 deliveries per over from now on. Yes, he will look forward to get some more runs, spending more time, taking strike there. 125 not out, a brilliant 100 from Saud. Solid. Yes, in this century, we have witnessed each and everything: confidence, temperament, his class. Pretty much impressive innings. He was in the difficult time, and this man must be happy. Neil Johnson. It looks like they've found a template how to go about games here at Rawalpindi Cricket Stadium. Just following the similar template, although the middle order didn't fire as much as they did in the previous round. But Saud is holding the fort together, and also good contribution from Umar. It allowed them to get ahead in the game, not as much as they were against KP. But still, Saud is fighting, probably aiming at that 100-run mark for the lead. Difficult task with just the number 10 and 11 available. And also we know that Saud doesn't possess that power game, which sometimes is good when you're batting with the tail. You can bring out the big shots and move the scoreboard along quickly. Asid Shafiq, I think a slight change in the fielding. Already one slip, gully, a short cover. So there's 2 deliveries remaining. So they're just trying to protect the single. And probably this is the chance for Saud to find a boundary if he can. Because there's no point occupying the crease if you don't make runs. Played it late, really nicely timed, superb piece of placement as well. Saud Shakir was looking for that boundary and he got it. Pure class from the left-hander. Shah Faisal is so happy with his shot. This is what he was talking about, that just go for the boundary. So timing was perfect. It was a late cut. Nicely done by Saud Shakir. A fielder even was there, or it was far away. Now the next task is to rotate the strike. Somehow get to the other end for the start of the new over. Mid-on is up and plenty of fielders close to the bat. Just trying to save that one on the offside. Interesting. If you look at Abrar, when the ball was delivered, he had quite a lot of head start. We'll come back and have a look. 316 for it. Have a close look at this. Look where Abrar is. You can call it good awareness. But you know, in this day and age where there's a lot of advocating going on for man cutting, probably if Najib was aware, he could have knocked him over. It's very pleasant afternoon here at Rawalpindi Cricket Stadiums. Magla Hills, and it's a beautiful place, and I'm keep motivating my colleagues Shah Faisal and Ali Yunus if they could go with me there. There's some wildlife there as well. The margalas, the trails. But yeah, probably this time of the year is the best time of the year
to just go up hiking on that trail 3 and trail 5. Really gorgeous natural scenery. You go in the distance, you can see that. Yes, so when you're planning to go there with me, Shah Faisal? We need to wait for our rest day and definitely would love to go there. Nicely played by Saud, but no intentions of scoring any runs. Two fielders in the deep. A fine leg and deep square leg. Hussain Talat got a breakthrough for Balochistan. ये विराट कोहली को 2 रन आउट चांसेस मिले थे, ये एक no run, no intentions. Hussain Talat had a chat with Saud. Akif Javed struggling there. Rizwan. Shout, but it was going down. Well down. Very ambitious. Things not quite going according to plan. As we watch this one, it's clearly sliding down the leg side. Yeah, things not going to plan in Melbourne for Pakistan. The prolific opening duo, both of them are back in the hut. Too much bounce, Asif, on that pitch, and too much movement. Very hard to cope. Yeah, we're missing that bounce here at Rawalpindi Cricket Stadium, but that bounce was not good for Pakistan. Rizwan also gone. Wow, could have been close, but good awareness once again from Saud and Abrar. He's getting every run that's available. Well, when they want to. There are many runs available, but yes, it was a quick single, good call. Let's see the strategy for Abrar. And coming up with 2 slips, a gully, and I think that they do understand the intentions of Abrar. Look at that. well, Hussain Talat had 2 goes at Abrar, and the first one he wasted, so he better make use of the next one. In fact, that was the last delivery, or is it? Our scorer makes it 5 deliveries, but we'll have to wait 317 for 8. Sindh leading by 48 runs, slowly but surely growing with this lead. Skipper Saud unbeaten on 131 is the key. Kashif Bhatti will get a chance to roll his arm over with this slightly newer ball.
Starts off with a gentle full toss. Saud is not looking for a single. Not many boundary options available to him. Long on, mid-wicket back on the onside. Asad Shafiq is moving across to the offside now. No, getting into that short mid-down. Two sweepers. Oh, nice bowling, Kashif bhai. Good bowling, bhaiya. Nice one. Well, Kashif Bhatti is a very seasoned campaigner, a very good bowler. Nice, Kashif bhai, nice bowling. Bowled only 15 overs. Excellent bowling. That's a question mark, isn't it? Not a lot for a finger spinner in there. But they could have used him to just tie up one end. Oh, nice. And allow the seamers to rotate. In the meantime, we've just reached that 100 over mark as well. So 317. Sindh was able to collect 3 batting points. Balochistan also collected 3 bowling points. So this innings is even in terms of points. Sindh did get more points by bowling Balochistan out before 300 though. Abrar had no clue. Just missed everything. Very good delivery, very close. Nice. Is he asking for another bat? A new bat? I didn't see what's wrong with this bat. He's only played a few deliveries and only a couple has hit the bat, so we'll have to wait and see. Probably he wants a different bat where he can swing it easily. Watch out now. The new willow in his hand. 318 for 8. This guy, Akif, is struggling. Already bowled 19 overs. This is 20th over. The way he started his spell, it was brilliant. Everybody's watching the Pakistan game in that changing room, I think. A bit anxious. Yes. Saud Shakil is not interested for a single. He just go for the boundaries, or either if he'll go for the single on the 4th or 5th delivery. So he has changed his bat now. All set to go for the big hits. I just can't wait for Abrar to get on strike. Nicely played. Good hand there, but we'll get a couple of runs. It won't travel to the boundary. Yeah, it was a very good shot once again from Saud. Over pitch delivery, driven through covers, and fielder tried well. Asad Shafiq, skipper, was there. In the end, he saved 2 runs. Play and a miss. Few
occasions in his innings, Saud Shakil missed out on that cut shot. That one just didn't bounce as much as he expected. Be interesting to see if it went over his bat. Went for the cut shot, but it was a little away from his body, and Saud Shakil not out in 134. Again, kept low this time. That slight variation in bounce that we've started to see, it doesn't happen very often, but on this day 3, it is started to happen every now and then. Still creates that doubt in the batter's mind. Have a look. It went under his bat. Previous one went over his bat. This one under his bat. That ball is just 21 overs old, so it's not that it's a very old ball. They packed the offside. 7-2 field. A slip in a gully and 4 in the ring, saving. That single moving in quickly was Imran Butt. They were just trying to keep Saud on strike with the last delivery of the over. Saud unflustered. If he gets a single, he gets it. If he doesn't, he really doesn't go after that. 320 for 8. Batting cards, 2 early wickets for India. Quaid-e-Azam 1 for Duck. Mike 1. वैसे तो कभी मिलनी या नहीं मिलनी है ख्वाहिश पूरी मुझे कोई डाउट नहीं कैसे कोई Well, this is what we're waiting for. Abrar with the new bat in hand. How about that? Hasib once again fumbles, but Abrar probably he's not sure in his mind what he wants to do, because I think he wants to go after the bowling, but with skipper Saud there, his job would be just to stay in there. Little bit of confusion. Kashif Bhatti has been able to keep him on strike. Probably will be looking for that armor to get him right in front of the stumps on the pads. There you go. Big shout, and the finger has gone up. It's exactly what he was setting up him. And Abrar, with that new bat even, couldn't do much damage. Well bowled by Kashif. Couple of deliveries were the flight, and now this time it was an armor delivery. Yes, straight. It was a quite simple decision for umpire Sajid Afridi. Abrar Ahmed gone without scoring any run. It's 320 for 9. Time for drinks here at the Pindi Cricket Stadium.
320 9 विकेटों के नुकसान पर सऊद शकील अभी भी सीसा फैलाई हुई दीवार, और अदर एंड से मुदस्सिर नए आने वाले बैटर, और ये कुछ देर पहले आउट होने वाले अबरार लेग बिफोर हुए, फ्रंट फुट पे थे, गैप मौजूद था और अंपायर ने उनको लेग बिफोर करार दिया। अच्छी बॉलिंग, और यही वो बात थी जो स्पिनर्स को लेकर आने का मकसद था कि पेसर्स के पास इतना वर्कआउट नहीं था। 103 320 पे 9 इस वक्त सिंध। सऊद शकील इक्यावन रन की लीड है इस वक्त सिंध की साइड की, और इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा तेज खेलकर चाय के वक्फे से पहले। और दूसरे एंड पे असद ने अच्छा फैसला किया कि स्पिनर्स को ब्रिंग इन किया, उनको मौका दिया कि वो ब्रेक थ्रू हासिल कर सकें। और मुझे ज्वाइन किया कॉम बॉक्स में अली यूनुस, वेलकम करते हैं आपको। और शुक्रिया एजाज, बहुत ही सॉलिड इनिंग रही है ये साउथ की जानिब से। 4 रन्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही शानदार शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विड्थ मिली जिसे पूरी जान से कट कर दिया 4 रन्स के लिए। तो जो आप चाह रहे थे रन्स, वो शायद अब सुन लिया आपको सऊद शकील ने। एग्जैक्टली और इस वक्त शायद ये कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है कि जो रन्स हैं उसके फ्लो में इजाफा हो, और चाय के वक्फे से पहले लगभग 100 प्लस होना चाहिए सिंध की तरफ से। चूँकि सऊद ऑलरेडी हम बात कर चुके कि अच्छी फॉर्म में, ये देखिए कितना प्रॉपर्ली उन्होंने टाइम किया, पेश था, लेकिन गैप में उन्हें अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक और शानदार शॉट है, फील्डर गेंद के पीछे लेकिन शायद रोक नहीं पाएंगे। 4 रन्स, सऊद शकील को एहसास हो गया कि अब रन्स बनाने होंगे। बहुत ही शानदार रिस्ट वर्क ऑन साइड पे खेल के 4 रन्स हासिल किए। जी हाँ, पेश था लेकिन सेफ, और इन्हें जैसे पहले बात की कि उन्हें अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट है, और अच्छा निकाला, अच्छी टाइमिंग ऑन द पैड्स, और 4 रन्स हासिल किए। इजाज़ एक बात होता है कि इस पिच पे आपको अपने शॉट्स की वैल्यू मिलती है, क्योंकि इवन पिच है, अच्छा बल्ले पे आ रहा है। अगर आप स्ट्रोक प्लेयर हैं, आप स्ट्रोक मारना जानते हैं, आपके पास वैरायटी है शॉट्स की, तो रन्स की कमी नहीं है, रन्स अवेलेबल हैं। आपको थोड़ा इंटेंट दिखाना होगा, राइट बॉल का इंतज़ार करना होगा, और रन्स तो मिलते हैं। 142 रन्स पर पहुंच गए हैं, 302 बॉलों का सामना किया है, वेल सेट हैं। लेकिन अब देखना होगा कि उनका मुदस्सिर कितनी देर साथ निभाते हैं। आपने कहा कि 100 रन्स की लीड, काफ़ी खुश होंगे अगर 100 रन्स की लीड यहाँ से ले पाते हैं। 41 रन्स और करने होंगे इसके लिए, तो गुलाम मुदस्सिर को साथ निभाना होगा। सऊद शकील का खुरम शहजाद वार्म अप कर रहे हैं, शायद एक और स्पेल 1 विकेट हासिल करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 1 ही विकेट है। मेन स्ट्राइक बॉलर है उनके। फुल डिलीवरी इसको, और तेजी से रन हासिल किया। फुलर था और तेजी से रन हासिल किया। कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो सऊद शकील को खुद से करना होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो तेज तेज शॉट खेल रहे थे अदर एंड से, यकीनी तौर पर उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि किसी भी वक्त, चूँकि टेल है, उनकी विकेट गिर सकती है। वेल, इमरान भट्ट इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि उनके पास जल्द अज जल्द बॉल आए स्लिप में और वो बैटिंग करने के लिए आए।
इसके साथ ओवर का इख्तिताम 104 के बाद 329 पे 9। Being a senior pro, साउथ शकील, उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वक्त गुजार सकें। दूसरी जानिब आसिफ भी इस वक्त वार्म अप होते हुए, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि किसी वक्त भी इनिंग ख़त्म हो सकती है। बस जूते पहनना ना भूल जाएं, यहाँ से ग्राउंड में ना आ जाएं। स्ट्रेचिंग करते हुए काफ़ी अहम इनिंग होने वाली है ये आसिफ महमूद के लिए, क्योंकि डिसअपॉइंटेड नज़र आए हैं बैट से भी बॉल से भी, दोनों तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, लेकिन डिसअपॉइंटेड रहे होंगे। और वो चाहेंगे कि सेकंड इनिंग में एटलीस्ट अपनी बॉलिंग की वजह से थोड़ा इम्प्रेस कर सकें अपनी टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि हालात अभी थोड़े पतले लग रहे हैं। मीर हमजा को वापस आना होगा अगले मैच में। जिस तरीके से गुलाम मुदस्सर ने बॉलिंग की है, मुझे तो नहीं लगता कि वो ड्रॉप होंगे। उमर ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, तो अब आसिफ महमूद को सेकंड इनिंग में कॉम्पनसेट करना होगा। जो उनका पिछले 2 इनिंग्स हम देख लें, आखिरी मैच में भी और अभी भी फेलियर्स रहे हैं, तो उनको चेंज करना होगा उसको। एग्जैक्टली और सख्त आसानी के साथ चहलकदमी के से अंदाज में रन लेते हुए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने इसी सेम सरफेस पे उमर ने अच्छी बॉलिंग करवाई, अच्छी लाइन और लेंथ यूज़ की। और अगर हम फतवात की बात करें तो सिंध की टीम कंटिन्यूसली पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे खेल रही है, तो यूज टू हो चुकी है इस सरफेस से। जी, स्पेशली उनके बॉलर्स, उन्होंने बहुत अच्छा सीखा है को किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, ये बाखूबी भी जानते हैं। वेल, मुदस्सिर को अभी भी वक्त गुजारना, एक और बॉल इस ओवर में। काशिफ 3 कैचेस ले रखे हैं, अच्छा दिफा किया। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम 105 ओवर गए, 330 पे 9 सिंध। सिंध की जो लीड है वो 61 रन की हो गई है, और उसकी मेन वजह साउथ शकील के 144 रन हैं, अभी तक क्रीज पे मौजूद है। बहुत ही शानदार एक कैप्टन इनिंग खेले हैं। असद शफीक अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द से जल्द विकेट हासिल की जाए, वापस बैटिंग पे आए, क्योंकि लीड 61 रन की है। 2 विकेट्स ऑलरेडी हासिल किए इन्होंने। और एक अहम मैच जारी है MCG में, पाकिस्तान इंडिया का, जहां पे 7.5 ओवर्स में 44 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने, 2 विकेट्स गवा के। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है इफ्तिखार और शान मसूद के दरमियान। 25 रन बना चुके हैं शान, अभी तक 11 पे खेल रहे हैं इफ्तिखार। तो एक अच्छा मैच जारी है। आगाज़ अच्छा नहीं हुआ था पाकिस्तान का, 2 ओपनर्स बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये मौका है इफ्तिखार और शान मसूद के पास कि अपनी टीम में जगह मुस्तहकम कर सकें, प्रूव कर सकें अपनी एबिलिटीज़, क्यों वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बड़े मैच में रन्स करें अगर तो। जी एग्जैक्टली, और यहाँ पर इस ट्रॉफी के मैच में अच्छा मौका है सिंध के पास कि लीड को इम्प्रोवाइज करे। असद शफीक खुद को लेकर आए हैं, ऑलरेडी 2 विकेट ले चुके। बीइंग अ कैप्टन अब तक अच्छी सोच रही उनकी, तब्दीलियां जल्दी की, लेकिन पेसर्स ने को खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया आज के मैच में, आज सुबह के सेशन में इनफैक्ट।
फ्लाइट, रियल स्पिनर। ऐसा नहीं लगता है कि ये पार्ट टाइम स्पिनर है। 2 विकेट्स भी हासिल किए, जैसे फ्लाइट दे रहे हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अच्छी बॉलिंग है ये, टाइट बॉलिंग है। 331 पर 9 सिंध। यकीनी तौर पर इस वक्त एडवाइस करते हुए सऊद के तुमने वक्त गुजारना है, मैक्सिमम टाइम मैं खुद पिच पे स्पेंड करूंगा और कोशिश करूंगा कि रन्स को इम्प्रूव कर सके हम, लीड को इनफैक्ट। Oh, nice. सिंगल नहीं ले रहे हैं हम, शायद यही सही तरीका है, स्पेशली स्पिनर के अगेंस्ट। हमने देखा थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए हैं मुदस्सिर, तो ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो साउथ अपने पास रखना चाहेंगे और चाहेंगे कि मैक्सिमम लेके जाया जाए इस लीड को। अभी तो बहुत सॉलिड लग रहे हैं, एक भी गलत शॉट हमें इनके बल्ले से नहीं देखा है। बहुत ही सॉलिड इनिंग। 100 रन की लीड, यहाँ से अगर वो ले जाएं अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। Nice. काशिफ ने एक स्लिप ले रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, लेकिन इसी दौरान अच्छा गैप निकाला, 2 रन का इजाफा। यहाँ अच्छी इनोवेशन, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की लेकिन एक ही रन बनाया। देखिए पैडल स्वीप, सॉफ्ट हैंड से, इंटेंशंस भी एक ही रन की थी। स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखना चाहते हैं। सर एक बॉल दिया है गुलाम मुदस्सिर को निगोशिएट कर सकें। जो और ये अच्छी हिकमत अमली की, उन्होंने 4 कैचर्स इस वक्त बैट के करीब रखे हैं। 2 स्लिप, शॉट एक्स्ट्रा, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, अच्छा दिफा, बहुत जबरदस्त, तेज फेंका और इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 107 गए, सिंध 332 पे 9। रिलैक्सिंग मोमेंट, कोच और प्लेयर इस वक्त इन लम्हात से लुत्फानंदोज होते हुए, इनफैक्ट क्योंकि पैट्स वैसे भी जो पालना घर पे अच्छा है और यहाँ पर जो पार्टनरशिप है, या जो इनफैक्ट कहना चाहिए हाईलाइट इनिंग, 146 सऊद शकील चट्टान की मानंद, बहुत ज़बरदस्त दफ़ा। 146 पे 4 रन की दूरी पे 150 रन के मार्क से। दूसरे एंड पे 8 बॉलें खेल रखी हैं मुदस्सिर ने भी। लेग साइड पे बल्ला इस्तेमाल किया, यकीनी 2 नहीं 1 पे ही इन्होंने एक दफा किया। जो अच्छी फील्ड है यहाँ पे, अच्छा कवर किया अजीम गुमन ने। कल से हम देख रहे हैं बहुत शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। जब भी बॉल इनके पास गया 100% एफर्ट दिए, अच्छी स्प्रिंट लगाई, स्लाइड भी सही रही,
और अच्छी थ्रो भी। और अब मौका है असद के पास, 3 बॉलें उनको करनी है गुलाम मुदस्सर को, क्योंकि बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया है सऊद ने। देखना होगा क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, आई लाइन से ऊपर बॉल छोड़ के करते हैं या नहीं करते हैं। जी हाँ, उसी तरह का बॉल था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ज़्यादा स्पिन नहीं हुआ, बॉल सीधा रह गया, लेकिन आइडिया सही था, फ्लाइटेड डिलीवरी दी है। जी हाँ, 2 स्लिप ले रखी हैं और बड़ी आइडियल पोजीशन पे ये बॉल पिच हुआ, फॉरवर्ड करवाया और लकी रहे यहाँ पर कि एज नहीं हुआ, बहुत करीब था, किस्मत ने साथ दिया। ये बेहतर है। और इस दफ़ा असद का बॉल जो है वो भी काफ़ी जिस्म से करीब गिरा गुलाम मुदस्सिर के। और फिलहाल जो उनका जॉब है एहसन अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं, दिफा, रैश स्ट्रोक नहीं है। थोड़ा सा करीब था एज के, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया इस ओवर का। 108 ओवर गए, सिंध 333 9 के नुकसान पे। तमाम बॉलर्स ने अपना हक अदा किया, 2-2 विकेट शेयर किए खुरम शहजाद और असद शफीक ने, बाकी नजीब, आकिफ, हुसैन और काशिफ ने 1-1 विकेट शेयर किया। जी, हम साथ साथ अपने सुनने वाले देखने वालों को अपडेट करते रहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। 58 रन्स बना लिए पाकिस्तान ने 2 विकेट्स गवा के, ऑलमोस्ट 10 ओवर से खेल हो चुका है। इफ्तिखार अहमद अच्छे टच में लग रहे हैं, 21 रन्स पे हैं। शान मसूद ने 29 रन्स बनाए हैं। तो एक अच्छी रिकवरी जारी है पाकिस्तान बैटिंग की जानिब से। हिट लगाने गए थे लेकिन अपने स्ट्रोक को चेक किया। अच्छी सख्त बैटल है काशिफ और सऊद के दरमियान। क्या इनिशियली शायद स्वीप मारने का सोच रहे थे, लेकिन बहुत एंड पे डिसाइड किया कि नहीं, इतना पीछे बॉल नहीं है, काफी फुल बॉल था। अच्छा डिसीजन लिया। इस बार फुल था, फील्डर मौजूद है लेकिन थोड़ा आगे गिर गया बॉल फील्डर से। यही देखना होगा, ये भी बॉल इतना पीछे नहीं था, काफी फुल बॉल था इस शॉट के लिए, लेकिन लकी रहे कि बॉल थोड़ा आगे गिर गया। तीन रन की दूरी पे अपने 150 से सऊद शकील, और शायद किस्मत उन पे मेहरबान है। इस दफा फिर चार्ज किया ऑन साइड पे और सीधा उसी फील्डर के पास। पंगलजई के हाथ पे ये बॉल लगा। ये जबरदस्ती थोड़ा शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉल भी फुल था, इतना पीछे गिरा हुआ था बॉल नहीं था कि ये वाला शॉट अटेम्प्ट किया जाता, इसीलिए ज़्यादा टाइम और एलिवेशन नहीं ले पा रहे हैं, बॉल के नीचे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी फुल बॉलिंग हो रही है। दोनों बार अच्छा काम किया अब्दुल वाहिद बंगलजई ने, विकेट कीपर हैं वैसे, लेकिन फील्डिंग भी ठीक कर लेते हैं। इस बार हवा में खेलें, कामयाब हो गए हैं इस शॉट में। बहुत ही बड़ा छक्का ये सऊद शकील की जानिब से, और अपने 150 रन इस बाउंड्री के साथ हासिल किए। बहुत ही शानदार शॉट, इनफैक्ट अंपायर ने उसे 4 रन करार दिए हैं। और एक शानदार इनिंग, एक बहुत ही पेशेंट इनिंग, बहुत सब्र वाली इनिंग रही है ये सऊद शकील की जानिब से। एग्जैक्टली, वेल प्लेड, कैप्टन्स नॉक। 46 स्ट्राइक रेट इनका। अभी भी ऑन साइड पे इनकी निगाहें हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक आध और बड़ा शॉट देखने को मिले अपने 150 करने के बाद, लेकिन वॉचफुली स्ट्राइक रखा अपने पास। 109 ओवर गए, 338 9 के नुकसान पे, लेकिन बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर सऊद शकील की। यहां बहुत देर से इस शॉट को अटेम्प्ट कर रहे थे, इस बार कामयाबी मिली है। लंबी बाउंड्री है,
और बॉल एक बाउंस के बाद 4 रन के लिए चले गई और अपने शानदार तरीके से अपने 150 रन मुकम्मल किए कप्तान ने। एक बहुत ही जिम्मेदाराना इनिंग कहेंगे। तीन सौ 38 पे 9 और 152 सऊद शकील की हाईलाइट इनिंग। यकीनी तौर पर इनका जो कॉन्फिडेंस है वो अप ऑन द अप होगा। 158 ऑलरेडी नॉर्दर्न के खिलाफ है उनका, और इस पोजीशन में है कि अपने हाईएस्ट सीजन के हाईएस्ट इनफैक्ट को तोड़ सकें आज। उनकी 158 रन की इनिंग फैसलाबाद, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पे थी इसी सीजन में, और इस वक्त वो स्लोली बट श्योरली उसी हदफ की तरफ है और मज़ीद उसको इम्प्रूव करेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल वक्त उनके लिए आसान है। काफ़ी अंदर को बॉल था, आसानी इसको खेला, लेकिन रन नहीं ले रहे। मुदस्सिर को अदर एंड पे ही उन्होंने इंतज़ार करवाया। यकीनी तौर पर साउथ की निगाहें इस वक्त लीड पे होंगी और उनकी इंटेंट बताएगी कि कितने रन्स पे वो थोड़ा एग्रेसिव होंगे, लेकिन फ़िलहाल लगता यही है कि उनकी जो दिफाई लाइन है या फिर वो क्रीज पे मज़ीद वक्त गुजारना चाहते हैं। असद शफीक कोशिश में है कि कुछ ना कुछ अपनी स्पिन से भी मैजिक दिखा पाए। फ्लाइट लेकिन उतना ही अच्छा डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट, और पहले बॉल पे सिंगल या साउथ ने बेग योर पार्डन सेकंड लास्ट, और जो उनका एक कैलिबर कह लें या फिर जो सोच कह लें वो इनके इन स्ट्रोक्स में नज़र आ रही है झलक के। स्लोली अपनी विकेट थ्रो नहीं करना चाहते और साथ में अपने जो टेल के बैटर है मुदस्सिर उनको भी लेकर चल रहे हैं। क्या ये भी एक आर्ट होता है एजाज, टेल के साथ बैटिंग करना भी? आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस बैटर को कितना ट्रस्ट करना है, ये भी आपको जहन में रखना होता है। किसमें कितनी पोटेंशियल है, कितना उसको चांस देना है, ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी होती हैं। 339 पर 9 सिंध। आसिफ स्ट्रेचिंग करने के बाद कोचिंग स्टाफ से इनफैक्ट टिप्स लेते हुए, और उन्हें परफॉर्म करना होगा इस इनिंग में। और दूसरी जानिब खुर्रम शहजाद जो ऑलरेडी 2 विकेट हासिल कर चुके हैं 81 रन के एवज, उनको लेकर आए। तमाम तर ऑप्शंस जो इस वक्त असद शफीक के पास है उनको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही क्योंकि सऊद शकील दूसरे एंड से अच्छे अंदाज से दिफा और टेल को भी साथ लेकर चल रहे हैं। 153 रन जैसे हमने बात की, 158 ऑलरेडी उनका हाईएस्ट है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पे नॉर्दर्न के ख़िलाफ़। उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की आज एबिलिटी है या नहीं, यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक हो सकता था। इनसाइड एज हुआ, इंटेंट उनका है कि वो ड्राइव खेलने गए, लेकिन इनसाइड एज हुआ। खुशकिस्मत रहे कि उनका बॉल जो है वो ड्रैग ऑन नहीं हुआ।
लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशें वो करते चले जा रहे हैं इस लीड को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। 70 रन पे जा पहुंची है लीड इस वक्त सिंध की। इस दफा अच्छा कनेक्शन था लेकिन सीधा फील्डर के पास, गैप नहीं निकाल पाए। बस औकात ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है बैटर के लिए, लेकिन अपनी लाइन को मेंटेन करना होगा यहाँ खुर्रम को कि जिस अंदाज से वो भी बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बॉल उनका रुका इससे पहले अच्छा कनेक्शन था, थोड़ा सा इरिटेट होता है बैटर, दोबारा शॉट लगाने की कोशिश करता है उसी स्पॉट में। यहाँ पे भी वही कुछ किया लेकिन बहुत करीब था कि बॉल हेलमेट पे जा लगता। लगता है कि कहीं इरिटेट हुए हल्के से, जो कि इम्पैक्ट या झलक उनके इस स्ट्रोक में नजर आई। जी खड़े खड़े दूर से मारने चले गए थे, फुटवर्क ज़्यादा नहीं था, और जैसे आपने कहा लकी रहे, हेलमेट को लग जाता तो 5 एक्स्ट्रा रन्स डेफिनेटली पेनल्टी के पड़ जाते। अपडेट देते चलें आपको, 88 रन्स पाकिस्तान ने बना लिए हैं। 3 छक्के 1 ओवर में अक्षर पटेल को इफ्तिखार अहमद ने मारे हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जारी है इफ्तिखार अहमद की जानिब से, अपने 50 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं उन्होंने सिर्फ 32 बॉलों पे। एक बहुत ही टाइमली इनिंग पाकिस्तान के लिए, बड़े मैच के प्लेयर हैं ये, और अपनी सिलेक्शन को सही प्रूव करते हुए इफ्तिखार अहमद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। जी हाँ, MCG से बड़ी यादें वाबस्ता हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब रमीज़ राजा ने कैच थामा और ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की, और इफ्तिखार की बड़ी शानदार इनिंग। और जब भी आप इस तर्ज के मैच में इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हीरो बनते हैं। लो रहा बॉल और कीपर भी इसको सही तरीके से थाम ना पाए। काफी ज्यादा इस वक्त साउथ कोशिश में कि वो जल्द अज जल्द लीड को मजीद इंप्रूव कर सकें, लेकिन कुछ ना कुछ किस्मत भी मेहरबान है उन पे। ये देखिए बॉल नीचे रहा, या कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव अराउंड कर रहे हैं पिच पे, अनसेटल कर रहे हैं बॉलर को कि मजबूर किया जाए गलत बॉल करने पे, और अच्छे मौके पे रन ले लिया कि एक ही बॉल के लिए एक्सपोज किया है मुदस्सिर को खुर्रम शहजाद के आगे। तेज यॉर्कर या फिर बैक ऑफ लाइन बाउंसर अटेम्प्ट किया लेकिन ऑफ टारगेट। इसके साथ 111 ओवर गए, सिंध 340 पे 9। अपनी सारी जिंदगी असद शफीक फ्लाइट दिया लेकिन तमाम तर वक्त था इस बॉल को देखकर खेलने के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग। या ये इतना अच्छा पिच है एजाज कि आप अगर गलती नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे बॉलर को, तो आप खुद से आउट नहीं हो सकते हैं। बॉलर आपको आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना स्लो पिच है, इवन पिच है, स्पिन भी नहीं है, जो सिर्फ थ्रेट है वो नया बॉल है। उसके बाद तो जैसे आपकी चांदी है एज अ बैटर, अगर आप वक्त गुजारते हैं जैसे साउथ शकील ने गुजारा है, 153 रन पहुंच गए। इनको भी कुछ सीखना होगा इमरान बट को साउथ शकील से कि किस तरीके से बैटिंग करनी है। ऐसी पिच पे सिर्फ नया बॉल सरवाइव करना है, उसके बाद रन ही रन हैं। ये सीखने की बातें आप अपोनेंट से भी सीखते हैं, यहाँ पे इमरान बट को भी ये सीखना होगा।
अजीम घुमन भी उनके साथ हैं जो ओपन करेंगे। शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करते नजर आए हमें। सारा मैच अच्छा रहा है, एज अ फील्डर अच्छा मैच रहा है इनका, लेकिन जिस काम के लिए वो है बैटिंग, वो उनको सेकंड इनिंग में करनी होगी क्योंकि लीड 72 रन की हो गई है। तो प्रेशर तो डेफिनेटली बलूचिस्तान के बैटर्स पे रहेगा शुरू से ही। पहले 72 रन उतारने का अभी खैर ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद रन्स करने का। अच्छा तेज बॉल आया, सरप्राइज हुए गुलाम मुदस्सिर भी यहाँ पर, और शफीक को अटेम्प्ट्स करनी चाहिए ऐसी, चूँकि ये बड़े कम वक्त मिल रहे हैं इस वक्त इन्हें कि टेल को सामने रख के उन्हें बॉल करवाएं। साउथ खुद ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हैं ऑन टारगेट। अच्छे अंदाज से डिफेंड किया इसको। 112 ओवर गए, सिंध 341 पे 9। ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी टीवी पे शानदार माहौल बना हुआ है, अली को भी बता रहा। रूट प्लाट किया कि ऐसा वैसा? Saud Shakil still soldiering along. That lead has now propelled to 72. Abrar has also withstood 15 deliveries. Feature of Saud Shakil's innings has been that he hasn't looked rushed at all. Despite batting with tail, despite not being able to move the scoreboard as swiftly as he would have wanted, it hasn't bothered him. He's just in that kind of zone, in that bubble, when nothing outside of that has really affected him. That lead of 72, like I said, is now pretty healthy. 100 would be a psychological mark. Sarfraz is in his whites. It means that he's ready when called upon. So is Fawad Alam. Will collect a run on the fifth delivery of the over. Good afternoon, K. Asif. Yes, good afternoon. Lead is good, as you were discussing. And Saud played a stunning knock, 155 not out. Just the one ball for Ghulam Mudassir to survive. I just called him Abrar just a while ago.
Khurram went for the Yorker, just trace it. Maybe leg by here. Yes, indeed. Just 4 valuable runs for Sindh to add to that lead. It's looking for that Yorker. Yes, went for Yorker, but the length wasn't good. And welcome boundary for Sindh. 346 for 9. In the air. Oh, just falling short of Najibullah. For once. He's looking to go for that big hit. He hasn't tried that. Sweep is one of his favorite shots though. If he could have gotten on top of that a little bit better, it would have gone finer. He saw the opportunity for a boundary. Not to be on that occasion. From this stage, if they could manage to get 100 runs lead, would be really good position. Yeah, looking for that too. Good running, good awareness. Once again, there was a huge gap. Fielder in the deep, didn't realize the situation. $157. Yes, the first run it was okay. Then they went for the double. It was good call from both of the batters. Taking another feeder. That short third man. Went for the sweep shot, but didn't able to manage that. Asad Shafiq bowled well, bowling his 15th over. Well done by Hasibullah. He anticipated the stroke. So now we'll be looking for a single to get to the other end. Last ball of the over. I think Asad Shafiq was plotting that leg side stumping, and now he wants that ball to go over the fence. So Saud should remain at this end, and Ghulam Mudassir will have to face the entire over. Tactical, but Asad Shafiq didn't mind that. This is what he talked to Hasibullah, that be ready for that leg side plot, and then he left a huge gap for Saud. Saud only needed to use the pace of the ball. 352 for 9. Now Khurram will have a chance to take his third wicket. Ghulam Mudassir facing. There's a fielder at short leg. Or I think he's removing now.
Already 2 slips, a gully. And short mid-wicket. And leg gully as well. Nicely played. Just backing away, just lifted it over the top, using the pace of Khurram. This is good from Ghulam Mudassir. He opens his account with a boundary. This is what I was talking about, that went for steered towards third man. It was a very good shot. Good boundary for Ghulam Mudassir. Valuable runs to add to the total as well. 87 the lead. Followed him. Big shout. Did it get something along the way? Same tactic there from Khurram, because he was following Ghulam Mudassir. And this time Ghulam Mudassir didn't have that room to use his hands to get bat to ball. There you go. It kept coming in at him. That is excellent bowling. Yes, impressive stuff. Good, quick bouncer. Ghulam Mudassir went for the same shot, but this time it was pretty much quick from Khurram. That was the ploy. He was setting him up for that Yorker. The length wasn't there. I think this effort with Sindh tail wagging today has really knocked the wind out of the sails of Balochistan. When the day started, both the teams had equal chance to go for victory. That fly slip is in place. Away from him though. Akif Javed couldn't get to the ball. And second boundary of the over. Well, look at that shot. A fielder was there. Akif Javed. He could have tried. He could have tried that. Better effort was needed. Important runs added by Sindh though. They're getting into a very strong position now. A lead of 91, which didn't look likely at all at the beginning of the play. Yeah, straight down the ground. It's timed quite nicely actually. Very, very long chase for Asad Shafiq. And they will just be content with a couple of runs because it was the fifth delivery. Yes, it was an over pitch delivery. Tried a Yorker and nicely played by Ghulam Mudassir. And it was a long chase for Asad Shafiq. 2 more runs added there. Just showing Khurram Shahzad all his 3 stumps, but not to be 10 of the over. 362 for 9.
Kashif Bhatti 1 for 35. Just 20 overs out of 115 overs. You can say because Asad Shafiq has shared his load in spin department. 2 wickets for the skipper. It's one thing if you want to be ultra critical of Saud Shakil is that when you bat with tail, at times you got to bring out the big shots. But Saud has really not tried that. It's not his style of play as well. That's why you see the scores of 161. Somebody who had the power game, and if he batted that long with tail, definitely he'll be closing in on that 200. Nothing to take away from a brilliant effort there from Sindh skipper. Looking for 2. Good hustle there. Ghulam Mudassir scrambling and a dive. Great running between the wickets. Fielder was Imran, but there it was a played nicely towards extra cover. Took first run really quickly, and there a direct hit was required. Nicely played. Delicate touch there from Saud Shakil. Will have to run hard to come back for the third, and Ghulam Mudassir is quick. This is good cricket from Sindh. And that lead is now 98 runs. Yes, it was a late cut from Saud Shakil, and look at that shot. The fielder was not quick. The fielder, Khurram, was there, picked up nicely, but good running between the wicket. Ghulam Mudassir not out on 10. Saud Shakil 166. Fantastic batting. Yeah, 2 balls for Ghulam Mudassir. Oh, Kashif Bhatti is a very canny operator. We remember how he trapped Abrar. This one was a slow delivery. Be aware of the next one, because that will be a quicker one coming onto the stumps, targeting the pad. Mudassir has done well. 369, 367 for 9. Given out. 269 plays 367. Sindh's innings has dragged along. 98 is the lead. That is the key number in this match summary. Sindh have gotten themselves into a very, very strong position. They did take their time, but I think, like Ali was saying earlier, they only want to bat once here and want the best bowling conditions, the most dry bowling conditions to give to their spinner Abrar. And like I was saying, they found a template of how to go about things in these conditions here at the Pindi Cricket Stadium. They've done it successfully in the previous game, and they're almost in a similar they got themselves rather into a similar position what they were on day 3 in the last game. Najibullah, can he knock the last man over and end Balochistan's misery? 1 wicket for 68. Nicely timed. Will he look for 2? Should do. Tired. A lot of tired bodies in the field for Balochistan. They're even walking it, Asif. That easy. And the 100 of the lead has been brought up. Yes. Fantastic stuff from Saud Shakil and Sindh. It's 168 now, and the lead is 100. The fielders, they're
look a bit tired. Yes, on the stiffness, I think. And that man, Haris Sohail. That is the stroke of a master batsman. The master craftsman at his very best, Saud Shakil. Lovely shot. There was a huge gap there. Fielder was in the short mid-wicket. And nicely played by Saud Shakil towards mid-wicket boundary. The use of the wrist. I was willing him on to do that a lot earlier, but I'm pleased he's done it. Came right outside his off stump. There was that gap. But then the execution was really sublime. He's a little man, but he's got very strong and powerful wrists. That will give Asad Shafiq something to think about. Advancing down the pitch once again. Finally, Saud Shakil thinks that it's time to open up. Yes, already lead is very good, more than 100 runs. And look at that, taking a couple of steps and placing towards mid-wicket. Elegant, elegant. See the flick of the wrist and the flare, the calypso flare about it. Yeah, this is the class of the man. I always thought these 200 that he's made, he's been playing well within himself. He does have the ability to play strokes all around the wicket. Pace and spin doesn't really matter for him. Skipper Asad Shafiq, he's just probably waiting for something to happen or just Saud to declare. Look at this Balochistan camp, despondent, dejected. I'm pretty sure the batting won't be as easy as it's looking right now when Balochistan come to bat second time round. This man Haris Sohail, he had the opportunity to make Sindh toil in the field after he had gotten away with a start. He got bored and he gave it away. Saud Shakil is not doing that and he's keeping him on the park. There's no hiding place. You cannot run away. Same with the skipper Asad Shafiq as well. The way he got out, it was a loose shot. Imran Burt. Oh. He's just toying with the bowling. Look at how easily he's walking that single. $374 for 9. Very good batting from Saud Shakil. 173 not out. It's impressive effort from skipper of Sindh. 374 for 9. Placed it into the gap, looking for 2. Should get it. No. Just a rather slow turn. Saud must be tiring. You can't blame him for that. He's been there all day today.
in most of the day yesterday. Yes, plays towards onside with soft hand, looking for two, but in the end, Najibullah was there. शुक्र करें खेल रहा कुछ तो उम्मीद है। ओए होए आसिफ ने हाय हाय Typical tail-ender stuff from Mudassar. I like the way Mudassar and Umar supported his captain, and that's why the lead is really good. 106 now. Yeah, very handy. You see that the thing that we were doing in the morning, Asad Shafiq, if you see this replay again, the ball, the way he was holding the ball, he was for the off spinner. But the natural variation, being a non-regular bowler, he just skidded on. If the bowler doesn't know what he's doing, the batter has very little chance, especially if you're number 11. Was he trying for the dusra with the flight, or? I can bet you, Asif, he was not. $375 for 9. ज़्यादा तो आप क्या कह रहे थे 100 बनाने थे ना 30 ज़्यादा 95 ये नया आया जी ऑन ग्राउंड कमेंट्री ये अच्छा ये अच्छा ओके Oh, nice, nice, Kashif bhai, nice. 25 रन और के हालात तक लिए Shah, Kashif bhai. A bit spin there from Kashif. That would have brought a smile on the face of Abrar Ahmed, seeing that ball turn off the straight. Nicely played. You could hear the sweet sound of the bat. Saud Shakil carrying on in his merry way. Finds yet another boundary. It's a very good cut shot. Saud Shakil was pretty much ready for that. Huge gap towards
point boundary. I beg your pardon. So lead is 110 now, Shah Faisal. Very handy. Very, very handy. That boundary came at the right time. Change of field here. Really looking clueless. Kashif Bhatti, this has been a painstaking effort in the field for Balochistan. Sindh have really dragged their noses in dirt, it may seem. 7 wickets down when we started play, and almost at tea. Sindh are still batting. So cheeky batting from Saud Shakib. Took last single on last delivery. 119 gone, 380 for 9. Probably the last over before tea. 179. Such Shafiq, very animated. He must be a frustrated man. Some of his tactics this morning especially really left a lot to be desired. That's the reason they're still in the field. So Shakil has found a liking to this flick. Just the single will allow Ghulam Mudassir to face the remaining 5 deliveries before the tea break. So he's a bit disappointed with that. He wanted to time it a little bit better so he can get a couple of runs. But now he'll have to watch Ghulam Mudassir from the other end. Yes, he went for a good shot, as we have watched in last couple of overs. He starts walking. Ghulam Mudassir now will face Akif. A slight change in the fielding. The fly slip for a floating third man. Kashif Bhatti. Probably that short pitch stuff is on the cards. Oh, just short. Just short. Almost worked the plan. Yes, Ghulam Mudassir once again. I wonder why this fielder was little away. It was too deep. You want a catching position, you should be 2/3 of the way. There is not enough pace in this wicket with this slightly older ball now, 40 overs old almost.
That score looks very good now. Very good. With just a few deliveries to go before tea. 113 the lead. So 2 deliveries remaining now. Shot. 4. 150 though. गेम का लेट है या जल्दी है क्या चल अगली गेम फिर लगी Come on, Akif Javed. I know it's been a long day for everyone. Well, some fireworks over there in Melbourne at the great Melbourne Cricket Ground. Pakistan looks like getting a good total on the board. That is just sumptuous from South Shakil. Stand and deliver. What a glorious stroke. Very good batting. Again, he's well settled there. Look at that shot. Wow, beautiful. Beautifully driven. Look at that flourish as well. Big, gorgeous high back lift and then the flourish. He's a wonderful player to watch. And toying with the bowling. Easy to maneuver and get the single. He'll keep the strike when Sindh comes out to bat after tea. But he will take all the applause. He will go into the dressing room unbeaten on 185 at tea. This has been a marathon knock from the Sindh skipper. And he's still going strong. Or it may not be tea. They have the option, I think, to take the extra half an hour if they think that they can dismiss the opposition. .387 for 9. बहुत आसान इस वक्त तो विकेट है इनफैक्ट बैटर के लिए और दाद देनी होगी जिस अंदाज से साउथ शकील बैट कर रहे हैं और मुदस्सिर उनका साथ दे रहे हैं। शराकतदारियाँ पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी तर्ज की क्रिकेट में और इस लॉन्गर फॉर्मेट में जो कि फर्स्ट क्लास गेम्स हैं इनमें तो टेम्परामेंट टेस्ट पेशेंस का टेस्ट ये तमाम तर ऑल टुगेदर और इसके साथ साउथ शकील पहुँचे 186 पे और मुदस्सिर पे वो काफ़ी ज़्यादा बेतमाद शो कर रहे हैं कि जिस अंदाज से वो गाय बगाए 11 रन पे जा पहुँचे उनका अच्छा साथ दिया। दिफाई अंदाज अपनाया इस वक्त
कैचिंग पोजीशन पे, ऑफ साइड पे 2 स्लिप से ली, उसके बाद शॉट एक्स्ट्रा। ये तमाम तर फील्डर्स हैं जिनको लेकर रखा ऑफ साइड पर। मुझे ज्वाइन किया है अली यूनुस ने, वेलकम। बहुत शुक्रिया एजाज। रावलपिंडी में सिंध और एमसीजी में पाकिस्तान के हालात दोनों ही काफ़ी मजबूत हो गए हैं, और यहाँ पे तो एक ही नाम स्टैंड आउट करता है, वो है कप्तान सऊद शकील का, जिन्होंने 186 रन अभी बनाए हैं और नॉट आउट हैं। इसके साथ मौजूद हैं गुलाम मुदस्सिर। आखिरी 3 अगर आप देखें 118 बॉलें ली मोहम्मद उमर ने, 10 बॉलें ली अबरार ने और 32 बॉलें खेली हैं गुलाम मुदस्सिर ने। इन्होंने बहुत शानदार साथ निभाया है सऊद शकील का। लीड बहुत शानदार हो गई है 119 रन की, और अब असद शफीक चाह रहे हैं कहीं से किसी तरीके से विकेट हासिल की जाए और इनिंग का इख्तिताम किया जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आया है ऐसा कुछ भी होता हुआ। 2 विकेट ज़रूर हासिल किए, लेकिन ये पार्टनरशिप दर्द सर बन गई है। जी हाँ, दिफाई अंदाज अपनाए हुए सऊद शकील 186 अपने कैरियर बेस्ट फिगर पे फर्स्ट क्लास गेम में। 174 इनका इससे पहले का कैरियर बेस्ट था फर्स्ट क्लास गेम्स में, लेकिन इस वक्त उनकी आई होगी 200 के हिंसे पे, और ये अच्छा वक्त है उनके लिए। अगर मुदस्सिर एक एंड से उन्हें अच्छा साथ देते रहें तो दूसरी तरफ से वो अपने 200 मुकम्मल कर पाएंगे। उनके कोई इरादे नहीं सिंगल लेने के और मुदस्सिर को सामने लेकर आने के। गो इनफैक्ट अगर हम वैसे भी देखें तो उन्होंने जहाँ जहाँ मुदस्सिर को थोड़ा सा मौका दिया तो उन्होंने अच्छा रिप्लाई किया। एक बार फिर डॉट बॉल। वेल ऐसे लम्हात भी आते हैं क्रिकेट में जब आप के पास अपॉर्चुनिटीज हो सिंगल लेने की और आप नहीं लेते। क्या सुबह से हम ऐसा देख रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सऊद शकील का मुकाबला बलूचिस्तान से हो रहा है। अकेले डटे रहे हैं, अकेले खड़े रहे हैं, विकेट साथ गिरती रही हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन में और डिफेंस में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। और दूसरी जानिब एमसीजी में 157 रन आखिरी बॉल अभी आने को है। पाकिस्तान की टीम बैटिंग पहले की है, इंडिया ने दावत दी, अच्छी इनिंग खेली है। शान मसूद और इफ्तिखार अहमद ने 50 रन की इनिंग खेली, और एंड पे कैमियो शाहीन की जानिब से और हारिस रऊफ की जानिब से। यार क्या कर रहे हो? बहुत बाहर था और वॉक इन करके स्ट्रोक खेलने चले गए, बड़ा अनयूजुअल। जल्दी आओ जल्दी आओ। और शायद वाइड डिलीवरी मांग रहे हैं अंपायर से। हारिस के पास इन लम्हात को खुशगवार बनाने का मौका, देखिए बहुत दूर था, बड़ा अजीबो गरीब स्ट्रोक। जहाँ दूर बॉल फेंकते रूम ढूंढ रहे थे सिंगल की तलाश में। यहाँ पे अब पूरा ओवर डालने की अपॉर्चुनिटी है। गुलाम मुदस्सिर को अच्छा मौका हो सकता है काशिफ भट्टी के लिए। 6 बॉलें अगर करें गुलाम मुदस्सिर को। आखिरी लाइन पे नजर रखिए, लीड जो है वो 119 रन पर पहुंच गई है। 388 रन बनाए हैं सिंध ने पहली इनिंग में। सऊद शकील 186 रन, बहुत ही अच्छी इनिंग के लिए सॉलिड इनिंग है। और मुदस्सिर उनका अच्छा साथ देते हुए
और देखिए कितना जबरदस्त अंदाज से टाइम किया और शायद एक ही रन बनाया। काफी ईगरली देख रहे थे मुदस्सिर के मैं चार्ज लूं यहाँ पर, लेकिन सऊद शकील ने उन्हें नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े रहने को कहा। और बेहतर यही है जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं या फिर जो रन्स वो हासिल कर चुके 186, 14 रन की दूरी पे हैं अपने 200 रन्स के फिगर से। Oh no. बहुत स्ट्रॉन्ग दिफा, पक्का दिफा जिसको कहते हैं कि चट्टान की मानंद खड़े हैं और अपने रन्स जहां जहां उन्हें मौका मिलता है स्लोली बट श्योरली बनाते हैं। क्या आसान नहीं होता है टेल के साथ बैटिंग करना, लेकिन शानदार तरीके से सऊद ने बैटिंग की है। एक बार फिर लेट खेले हैं, अगर भागते तो शायद 2 रन मिल जाते, लेकिन 100% फिट भी नहीं है, थोड़ा हैमस्ट्रिंग का मसला भी है। लेकिन कंसंट्रेशन और पेशेंस लेवल को तो दाद देनी होगी सऊद शकील ने जिस तरीके से बैटिंग की है। एग्जैक्टली और जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की हमने अभी भी देखा कि इस लेवल पे आकर भी उनका बल्ला काफ़ी सीधा है और बड़े आसानी के साथ अपनी इनिंग को बिल्टअप किया। फिर उसके बाद कैपिटलाइज, फिर 186 पे आप पहुंचे, लैंडमार्क के बहुत करीब। देखिए डिजर्व करते हैं 200 रन जिस तरीके से बैटिंग की है, और ज़्यादा रन जो है आखिरी ऑलमोस्ट 86 से ज़्यादा रन जो है अपने जो आखिरी के बनाए हैं वो उन्होंने टेल के साथ बनाए हैं। और हम जानते हैं कि टेल के साथ बैटिंग करना आसान नहीं होता है, कितना ट्रस्ट करना है, किस बॉलर के अगेंस्ट ट्रस्ट करना है, ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। कौन सी बॉल पे सिंगल लेना है, कितना एक्सपोज करना है, और अच्छा साथ निभाया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुदस्सिर ने, मोहम्मद उमर ने इससे पहले बॉल कर दिया और इसी विकेट की तलाश में थे बलोचिस्तान, और गुलाम मुदस्सिर को जो आखिरी 2 बॉलें खेलने के लिए दी वो भारी पड़ गई और अपनी विकेट गवा बैठे। डिसअपॉइंटेड होंगे यहाँ पे सऊद शकील के अपने 200 रन मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन डेफिनेटली दाद बनती है जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। बहुत ही सॉलिड इनिंग रही, पेशेंस की, स्किल की, सारा टेस्ट हुआ उनका, टेम्परामेंट, और कामयाब रहे उसमें। बहुत ही शानदार इनिंग, नॉट आउट रहे 187 रन बनाकर। जहां बैट और पैड के दरमियान से दिफा तोड़ते हुए बॉल ऑफ स्टंप पे जा लगा। काशिफ भट्टी 2 विकेटें समेटने में कामयाब हुए, लेकिन वेल प्लेड, मुदस्सिर ने अच्छा साथ दिया। सऊद शकील अपना कैरियर बेस्ट यहाँ पर प्लेस करके गए और यकीनी तौर पर ये एक अच्छी इनिंग उनकी जानिब से दांत वसूल करते हुए अपने टीममेट से। एक्सीलेंट बैटिंग। जी हाँ, डिजर्व करते हैं। ये सेशन एक बार फिर सिंध के नाम रहेगा, और 3 विकेट ज़रूर हासिल किए हैं बलूचिस्तान के फील्डर्स, बैट बॉलर्स ने, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन डेफिनेटली डिजर्व करते हैं सऊद शकील जिस तरीके से इनिंग के लिए अनबीटन रहे 187 रन बनाकर। एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, एक कैप्टन इनिंग रही। जब विकेट साथ आपके गिरते रहे हो तो आसान नहीं होता है टेल के साथ बैटिंग करना, लेकिन ये बखूबी निभाया उन्होंने ये रोल, और डिजर्व करते हैं बहुत ही अप्रिसिएशन सऊद शकील। और एक ऐसी पोजीशन पे सिंध को ला खड़ा किए जहाँ से सिंध को मैच में बहुत मजबूत गिरफ्त हासिल है, मैच हारना नहीं चाहिए यहाँ से। एग्जैक्टली तमाम दाद वसूल करते हुए सऊद शकील, यह है 187 जो कि सऊद शकील नॉट आउट गए। 386 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 51 रन बनाए फवाद आलम ने, 44 रन की अच्छी इनिंग खेली मोहम्मद उमर ने जब उन्होंने साथ दिया। जैसे अली बात कर रहे थे कि टेल के साथ उन्होंने बैटिंग की और 12 रन बनाए गुलाम मुदस्सिर ने, तो यूं 390 रन पे ऑल टीम आउट। बल बॉलर्स ने कमबैक किया, 2 विकेट मिले खुरम शहजाद को, 2 विकेट शेयर किए काशिफ भट्टी और असद शफीक ने, 1 विकेट शेयर किया नजीब, आकिफ और हुसैन तलत ने। पूरी इनिंग की तरह ये सेशन भी सऊद शकील के नाम रहेगा। 1 मैन आर्मी की तरह खड़े रहे हैं, डटे रहे हैं एक एंड पे, बहुत शानदार स्ट्रोक्स भी देखने को मिले हमें। मोहम्मद उमर अपनी विकेट गवाई थी हुसैन तलत को, लेकिन उनके साथ साथ जिस तरीके से, जिस शानदार तरीके से साथ निभाया है टेल एंडर्स ने, ये सऊद शकील को दाद देनी होगी। जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन उन्होंने रखी,
टेल के साथ बैटिंग करना आप जानते हैं कि मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलते रहे, जब भी मौका मिला, जब भी बुरा बॉल मिला उनको, उसको पनिश किया। तो शानदार इनिंग अपनी जारी रखते हुए थे। थोड़ा साथ थोड़ी पुअर बॉलिंग भी नज़र आई, थोड़ी एवरेज फील्डिंग भी नज़र आई हमें बलूचिस्तान की जानिब से, इनोवेशन भी नज़र आई हमें गुलाम मुदस्सिर की जानिब से। काफ़ी अच्छा साथ दिया और एंड पे तो ऐसे लगा जैसे अपनी मर्जी से रन्स कर रहे हैं, जहां दिल करे स्ट्रोक मार रहे हैं साउथ शकील। ये एक्स्ट्रा कवर को, ये शानदार शॉट था, शॉट ऑफ द इनिंग होगा ये, जिस तरीके से निकल। और ये आउट होने वाले आखिरी प्लेयर गुलाम मुदस्सिर डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि उनकी दूसरी जानिब कप्तान खेल रहे थे 187 रन पर, साथ अच्छा निभाया लेकिन काफ़ी नहीं था ये। बलूचिस्तान ने पहली इनिंग में 269 रन बनाए, जवाब में सिंध ने एक किंग साइज टोटल खड़ा कर दिया 390 रन का। इसकी खास बात यह रही कि साउथ शकील ने 187 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे। असद शफीक ने 2 विकेट्स हासिल की, काशिफ भट्टी ने भी 2 विकेट्स हासिल की, और सिंध की जो लीड है वो 121 रन की है। वेल, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तकरीबन 10 मिनट के बाद आपकी खिदमत में लाइव एक्शन के साथ हाजिर होंगे।
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, जहां पर बलूचिस्तान वर्सेस सिंध की टीमें मध्य मुकाबले हैं। डे 3 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 2022 का मुकाबला। और कुछ देर पहले रैप अप हुआ सिंध, ये देखिए 187 नॉट आउट सऊद शकील हाईलाइट, और उसके अलावा 51 रन बनाए फवाद आलम ने, 44 रन की अच्छी इनिंग खेली। मोहम्मद उमर ने अच्छा साथ दिया, अपने कप्तान का गुलाम मुदस्सिर ने भी अच्छा साथ दिया। तो यूं कुल मजमुआ 390 ऑल आउट। बॉलिंग एनालिसिस देखते चलें। 2 विकेट मिले खुरम शहजाद को, 2 विकेट काशिफ भट्टी और असद शफीक को, जबकि नजीब, आकिफ जावेद, हुसैन तलत इनको 1-1 विकेट मिला। 269 रन के जवाब में सिंध की टीम आउट हुई 390 रन पे, और 121 रन की लीड है इस वक्त। 187 नॉट आउट सऊद शकील, जो कि अपने कैरियर बेस्ट पे इस इनिंग का इख्तिताम किया उन्होंने। 121 रन की अब लीड है, और सिंध की टीम यकीनी तौर पर पिछला जो मैच है जीतकर कॉन्फिडेंस हाई के साथ इस मैच में आई, और अब भी लगभग कल का दिन बाकी है, आज भी कुछ वक्त बाकी है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में इस वक्त अली यूनस, अच्छा प्लेस्ड और मैच है ये, इवनली पॉइज्ड, और देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ से मैच अपनी तरफ लेके जाएगी। इसमें काफ़ी भारी जिम्मेदारी होने वाली है। अजीम घुमन 105 मैचेस खेल चुके हैं, 5364 रन, 23-50 और 10-100, 199 उनका बेस्ट है। देखना होगा कि ये ओपनर्स दोनों कैसा खेलते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं नए बॉल को, उनका साथ निभाएंगे। इमरान भट्ट 93 मैचेस, 5578 रन, 30-50 12-100, काफ़ी मिलता जुलता करियर है दोनों का, इमरान भट्ट और घुमन का। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी से बैटिंग करनी होगी, और ये नए बॉल को सी ऑफ करना होगा, क्योंकि जहाज हमने देखा है कि नया बॉल ही है जो कुछ कर रहा है इस पिच पे। मोहम्मद उमर का शानदार सीज़न रहा है ये, विकेट ज़्यादा हासिल नहीं किए हैं, बट जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है वो बहुत कमाल है। अनलकी रहे, उस तरीके से विकेट्स हासिल नहीं कर सकें। 2 स्लिप के साथ एक गली, फाइन लेग है, उसके बाद मिड ऑन, मिड विकेट, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट। साजिद अफरीदी ने प्ले की कॉल दी, और शुरुआत हुई एक ड्राइव से, बहुत उम्दा नया बॉल, प्रॉपर्ली यूटिलाइज, ताक़ुब में फील्डर उमर बिन यूसुफ ने अच्छा ताक़ुब किया। शुरुआत बेहतर है, यहाँ पॉजिटिव इंटेंट पॉजिटिव नजर आई हमें। पहला ही बॉल, आगे गिरा हुआ बॉल, अच्छे तरीके से टाइम किया, और अच्छी चेज उमर बिन यूसुफ की जानिब से। अच्छी स्प्रिंट लगाई उन्होंने, बिल्कुल बाउंड्री के करीब रन बचाने में कामयाब हुए। हैप्पी मोमेंट्स। इमरान भट्ट जो कि पहली इनिंग में 60 रन बनाने में कामयाब हुए थे, अच्छी फॉर्म में, उसी फॉर्म को कैरी करना होगा, और कुछ इसी तरह से अली रॉन भी खेलते रहे। अच्छा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, 155 मिनट क्रीज पर है अपनी पहली इनिंग में, तो वो तमाम तर कॉन्फिडेंस इनके पास होगा, उसको लेकर यहाँ पर लेकर चलना है। और ऑलरेडी जो लीड है पहले उसको उतारना है, फिर उसके बाद कैपिटलाइज करना है। या सबसे पहले चीज़ें कि लीड से जान छुड़वानी होगी, और क्या बात है इनकी, क्या ही शानदार इनिंग खेली है, बहुत लंबी इनिंग, बहुत पेशेंस वाली इनिंग, कंसंट्रेशन लेवल बहुत शानदार रहा। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब आप टेल्स के साथ बैटिंग करते हैं वो आसान सिचुएशन नहीं होती है, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और बखूबी निभाया उन्होंने ये रोल। कंप्लीट 4 डे क्रिकेट की इनिंग है ये। एग्जैक्टली, और इससे बेहतर नहीं कि आप अपना ऑलरेडी कैरियर बेस्ट जो है उसको इम्प्रूव करें, ये आपकी फॉर्म को शो करता है। लेकिन दूसरी जानिब उमर, देखना है कि किस अंदाज से अपने उसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे जो इनका एक हॉलमार्क या ट्रेडमार्क इनफैक्ट, बैक ऑफ लेंथ, एक्यूरेसी, ऑफ स्टंप के बाहर। और उमर ने जब भी बॉल करवाया, इनकी बॉल में एक जान, एक ताकत, एक रिदम नजर आया। जहाँ एरिया बहुत अच्छा हिट करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जो 5 मीटर का जो एरिया है जब बैटिंग कर रहा होता है बैटर, उनके सामने वहाँ बॉल डालने हैं ताकि बैटर को भी लगे वो ड्राइव मार सकते हैं।
और वही एक अच्छी लेंथ है इस पिच पे, वही कामयाबी दिलाएगी। बैकफुट पे नया बॉल है, इसको अच्छे अंदाज से यूज़ करना होगा। जैसे अली अभी कह रहे थे कि जो नया बॉल है इन सेशंस में वो इम्पॉर्टेंट है कि किस अंदाज से यूज़ करें, और उमर के पास ये एबिलिटी है कि वो बैटर्स को डिस्टर्ब कर पाएँ। पॉसी एडवाइजेस असद शफीक और सऊद शकील की जानिब से भी उनको मिल रही होंगी, लेकिन ऑलरेडी वो ऑन टॉप है, मेरिट पे हैं। स्टिक टू बेसिक्स। लेग साइड पे इसका इम्पैक्ट था। वेल इस तर्ज के स्ट्रोक बाजुकात हवा में भी मिड ऑन पे उछलते हैं, लेकिन डॉट बॉल फिनिश हुआ पहला ओवर 2 बगैर किसी नुकसान के। बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है जब आप ऐसे हालात में हो कि आपकी इतनी लंबी लीड हो बलूचिस्तान के लिए। अब वहाँ से क्या करेंगे, किस तरीके से बैटिंग को लेके चलेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला होगा गुलाम मुदस्सिर के साथ, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की थी पहली इनिंग में, 5 विकेट्स हासिल किए थे। और अगर इनका बॉल सही एरिया से स्विंग होना शुरू हो गया तो राइट हैंडर्स के लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ये। पहली इनिंग में हमने देखा कि बहुत शानदार लेंथ पे बॉलिंग करते रहे हैं। जान मुदस्सिर के पास ये एबिलिटी है कि वो बॉल को मूव कर सकें, हिला सकें, और विकेट टेकिंग बॉलर है मुदस्सिर। और इससे पहले भी हमने देखा कि बॉल उनके अक्सर पढ़कर अंदर आते हैं। नए बैटर को वो जो भी बॉल डालें, मैक्सिमम लेवल होता है कि वो पढ़कर अंदर को आए, सरप्राइज करें बैटर को। 2 स्लिप और 1 गली है, अपना पूरा वक्त लेते हुए। कोशिश उनकी वही थी, लेकिन इस दफ़ा ऑफ टारगेट हुए। अर्लियर ऑन अपने हथियारों को रिकवर करना होगा, प्रॉपर यूज़ करना होगा इनफैक्ट, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है कि बॉल को स्विंग कर सकें, और जब तक बॉल नया है वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और इस नए बॉल का प्रॉपर यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। या और नो बॉल से भी बचना होगा, क्योंकि ऐसी पिच जहाँ पे विकेट्स मुश्किल से हासिल होती हैं, आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि बॉल विकेट हासिल कर रहे और नो बॉल हो जाए। गुलाम मुदस्सिर ने अपना जो स्पेल है वो आगाज़ ही नो बॉल से किया है। अजीम जो कि पहली इनिंग में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, उनसे एक बड़ी इनिंग ड्यू है, लेकिन वो मद्दे मुकाबिल है गुलाम मुदस्सिर जो कि अच्छी बॉलिंग फेंकते हैं, अच्छे कैलिबर के प्लेयर हैं, अंडर 19 प्रोडक्ट पाकिस्तान की, और गाय बगाए इनके अच्छे रन्स भी हैं, बारी भी अच्छी करते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि पहले उन्हें लीड उतारनी है, आज के दिन का सेशन कैरी करना, और कल जाकर वैसे अब तक हमने देखा जो सिंध का इवन पिछला मैच था, यहाँ पर एक वक्त था ऐसा लग रहा था शायद ड्रॉ की तरफ जाए, लेकिन एकदम मोमेंट बदलते हैं। जहाँ बलूचिस्तान के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है। जब आखिरी बार यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट खेल रहे थे, बहुत लंबी बैटिंग करनी थी, इनफैक्ट 2 सेशंस थे अब सेकंड लास्ट दिन के जो उनको निकालने थे, तब इमामुल हक मौजूद थे टीम में, उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली, अपील की है क्या, जी हाँ, आउट दे दिया अंपायर ने, पहली विकेट हासिल कर ली है यहाँ पे। बहुत ही शानदार डिलीवरी लेग साइड पे जाते हुए टिकल किया अजीम गुम्मन ने, और एक अच्छा कैच सरफराज अहमद ने लेकर उनकी इनिंग का इख्तिताम किया। काफ़ी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन अंपायर का फैसला कि ये आउट है। जी हाँ, गुलाम मुदस्सिर का हिलता हुआ बॉल, और अजीम गुम्मन के पास कोई जवाब नहीं। ये देखिए बॉल पढ़कर उठा, हल्का सा कहीं फेंट एज, और सरफराज ने एकदम से अपील की और अंपायर ने कहा यस। तो यूं पहला नुकसान बलूचिस्तान को, और काफी देर तक बल्ला हवा में रखा उन्होंने, दिखाते हुए शायद कहीं शर्ट पे बॉल लग कर गया। अजीम गुम्मन बगैर कोई रन बनाए वापस 3 बॉलों में, और बलूचिस्तान को पहला नुकसान।
इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे अब्दुल वाहिद बंगलज़ई कि आप आ जाएंगे पहले ओवर में ही। बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं अजीम गुमन। ऐसा लगा जैसे बल्ले को बॉल नहीं लगा, थाई पैड से लगा, ये उनका इरादा था, लेकिन अंपायर इमरान जावेद बहुत मंजे हुए अंपायर हैं, उन्होंने आउट का फैसला दिया। एक बार फिर देखेंगे कुछ देर बाद। अब्दुल वाहिद बंगलज़ई 9 मैचेस 557 रन, 450 और 100 कर चुके हैं। बेहतरीन स्कोर उनका 203 है। एग्जैक्टली और गुलाम मुदस्सिर बंगलज़ई को पहले भी शिकार बना चुके। पहली बॉल पे गुलाम मुदस्सिर की बॉल पे आउट हुए थे। अभी भी वॉचफुली खेलना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर होता है जब आप देखें कि इस बॉलर ने आपको पहली इनिंग में भी स्विंगिंग डिलीवरी पे आउट किया हो और वो बॉल पढ़कर अंदर को आया था, और अभी भी गुलाम मुदस्सिर जो है उसी तर्ज के बॉल करवा रहे हैं। पैड पे लगा, स्पीड अच्छी है, बॉल काफी देर हवा में रहा। क्या थोड़ा स्विंग भी मिल रहा है इनको। आइडियली थोड़ा ऑफ स्टंप से अगर बॉल अंदर की तरफ लाएंगे ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे जिस तरीके से विकेट हासिल की अजीम गुमन की, हल्का सा गेंद स्विंग हुआ, अंदर की तरफ आया और ऐसा लगता है जैसे बॉल जो है वो थाई पैड को ही लग के गया है। अनलकी रहेंगे डेफिनेटली। ये एंगल से बेहतर सिचुएशन नज़र आएगी। जी ये बैड थाई पैड से ये कहना होगा। यहाँ पे अनलकी रहे हैं अजीम गुमन। काफ़ी देर उन्होंने बताया भी, लेकिन इमरान जावेद तब तक अपना माइंड बना चुके थे। तो बहुत ही एवरेज डिसीजन रहेगा ये। कितना हर्ट करेगा बलोचिस्तान को ये तो वक्त ही बताएगा। ये बेहतर लाइन है, यहाँ से अगर अंदर लाएंगे जिस तरीके से पहली इनिंग में बंगलज़ई को बॉल किया था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप से अंदर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और एक और खुशी की बात कि पाकिस्तान ने 2 विकेट्स हासिल कर लिए हैं। इंडिया 17 पे 2, टारगेट जो है 160 का सेट किया है पाकिस्तान ने। यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो छाए हुए हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की, हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमारे हाथ में। इनफैक्ट अब तो दोनों ही हो गए इस विकेट गिरने के बाद। ये वाला भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इसमें। इजी डिलीवरी। बोल सकते हैं दोनों बैटर्स आगाज या शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले अपनी लीड उतारनी है, उसके बाद फिर रन्स करने हैं। लेकिन जब अर्लियर ऑन इस तरह से विकेट गिर जाए तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आता है बैटिंग लाइन पे। मुदस्सिर यकीनी तौर पर ये सोच रहे होंगे कि 1-2 विकेट और हासिल करें, क्योंकि ऑलरेडी बंगलज़ई पे उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। लेकिन उन्हें प्रॉपर विकेट टू विकेट बॉल फेंकना होगा। नो बॉल। यही बात हम पहले कर रहे थे, जब बॉल स्विंग हो रहा हो तो आपको इस तरह की बॉलों से इज्तनाब करना होगा, नो बॉल से, क्योंकि विकेट्स मुश्किल से मिलते हैं और अगर मिलें तो नो बॉल नहीं होना चाहिए। काफ़ी बड़ा नो बॉल है ये। मसला रहा है, पिछली इनिंग में भी हमने देखा कि काफ़ी नो बॉल्स किए थे। इस इनिंग में अपने पहले ओवर में 2 नो बॉल्स कर चुके। शायद थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि नए बॉल से ही चांस है इनका। तो शायद वो जो एग्रेशन है, जो एड्रेनलिन है, वो हाई है। गुड बॉल, अच्छा दिफा। 2 ओवर गए, बलोचिस्तान 4 पे 1। रेडीमेड। Early breakthrough for Sindh.
Imran Butt made a 50. But Imran Javed, the man in action, early doors, Azim Gumman declared out. That was short lifting delivery. Bit of a strangle down the leg side. Azim wasn't happy. It looked like it clipped the thigh pad along the way. This is edge and taken, or is it just short? I've mistaken the Pindi pitch for the Melbourne pitch. The edge didn't carry here. Saim Ayub, good hands though. Exciting cricket everywhere. Good bounce, little bit of movement. Good hand, Saim Ayub moved very, very swiftly, but it didn't carry. And time to say a very good evening to K. Asif. Thank you, Shah Faisal. Very good start for Sindh in bowling. Nicely played. Just a little bit of room, and that length allowed him to ride the bounce and play it behind square for 4. Good shot from Imran Butt. Nicely placed towards third man area. A welcome boundary for Imran. A slight angled face of the bat. You can afford to do it here on this day 3 Pindi pitch, where it's lost a little bit of pace. Still good bounce with that new ball, but Imran controlled it very nicely. Two slips in a gully. Umar is the most consistent bowler that we've seen all season here at the Pindi Cricket Stadium, not just for Sindh, for all the teams. Bowled consistently in good and right areas which are required on this pitch. Be it a first day pitch where the length has to be slightly fuller. Yes, you're talking about Umar's bowling. He's an exciting guy. His line and length is pretty much perfect. Well, you're talking about Umar's excitement. There's plenty of excitement in Melbourne. Pakistan's fancied fast bowling lineup has really made a wonderful start against the flamboyant Indian batting lineup. That was the contest of the World Cup. Pakistani batters versus Indian batters. Pakistan has got them 3 down inside the power play. Now we're keeping one eye on that contest here as well. Balochistan, their backs are to the wall. 3 gone, 8 for 1. मीडियम पेसरों को मारने वाले आईपीएल में एक तो आईपीएल मिलियनेयर 12 सुपर 12 में भी नहीं पहुंचे वेस्ट इंडीज वाले, इनका भी धड़म पक्का है। कोहली शराफत से अपना 50 करे, जो करके जो है निकल जाए। अक्सर पटेल को भेजा भाई, मेरे की मैच विनर था वो ऋषभ पंत था, उसको ये खिलाते हैं। Once again asking for the LBW. Ghulam Mudassar. Bangalzai. In pain, he's not looking well.
Yeah, that got him in the unmentionables. We've seen it many times on the cricket pitch, but it's painful, no doubt. Right on that abdomen box, and that is painful. And you see plenty of people smiling around him. That always happens. The one who got hit, he will always be in pain, and the others will be just laughing around him. I don't know why they do it, but it always happens. Bangalzai up on his feet. Yes, it's a very quick delivery. Look at this again. Oh, nasty one. And he was asking for the LBW, actually. This will show a good picture. Oops and ouch. No way that was an LBW. Ghulam Mudassir. Show some empathy. When it happens, a lot of people who played cricket would know that it just knocks the wind out of your sails for a moment. These days the equipment are pretty good. It does take you a little time to get back into senses. I think he'll be all right. Good news, he's up on his feet. .269 plays 390, a lead of 121, and now Balochistan is 8 for 1. South Shakil 187. What an epic knock that was. And South Shakil's knock, he set the Pindi Stadium ablaze with his stroke play. Although the percentage of boundaries wasn't as much as he normally would be, but the stroke play was right off the top draw. Front foot, back foot, pace, spin. Go typical grace of the left-hander. Oh my word, this was sweet. And this was power. Well played, young man. Third 100 of the season. So Abdul Wahid Bangalzai is fine now, and again ready to face Ghulam Mudassir, who is very good with his bowling and started really nicely. Took an early wicket of Azim Ghumman. Beautifully bowled once again. That ball hit the seam and jagged back. That was a similar delivery that got rid of Bangalzai in the first innings. This one went through the gate, and there was a huge one. Very good delivery from Ghulam Mudassir. He's very good with new balls, especially. Four down. The G is on fire. The G, the great G. Again, that in swinger. Beautifully bowled. Ghulam Mudassir, although the line was slightly wrong, but he's got that movement. And Abdul Wahid Bangalzai in all sorts of trouble.
And this intent was missing actually in Balochistan's fast bowling, especially with the new ball. Yeah, they were ultra defensive even when they were bowling to Umar and bowling to Saud from ball one. They weren't looking to get him out, so that lackluster approach really costed them a huge day of toil in the field as well. Full one, another delivery. That is, the line is just slightly towards the leg side. Good decision once again, Imran Javed. He's been called into action many times already. Look at that, just pitched slightly outside the leg stump, and that angle would have took it down the leg side. Just move over, just bowled a little bit towards that middle and off. Started from there. Abdul Wahid Bangalzai's balance is all over the place. Just be a matter of one straight delivery. It's the line. Abdul Wahid Bangalzai is struggling. Again, a very good delivery. Yeah, better from Bangalzai as well. A lot of the batters, they struggle with their balance when they're playing the left armers and the ball is swinging back into them. And Bangalzai has gone through that phase. He's survived, but the battle is not won yet. No ball. But this line is really teasing Bangalzai. He's not in control. Really rejuvenated Ghulam Mudassir in this match. We saw him here in round 3 and he was all over the place with his line and length. Easily over the line. But he was talking to Ali Asif and he said that he didn't bowl in the right areas in the first game, but he learned a lot. But then he had to wait for his opportunity because he set out the next one. He's made good use of this opportunity. 5 in the first innings, bowling beautifully in the second. Another uncertain stroke there from Bangalzai will earn him his first run. 4 gone, 10 for 1. Down the leg side. If you talk about this exciting young guy, Saud Shakil is in the fielding. I was talking about Saim Ayub. Such an exciting player to watch. What a balance he has. The only issue is with his temperament. He's young. This is his first class season, so he's learning the art of batting in the longer format, which is completely different from what he made his name in. That is the 50-over format and the 20 overs. But he has all the ability, and we've seen throughout the season, and he's learning. That means that he's a very, very bright lad, intelligent, under the wings of Sarfraz in the Sindh camp. Definitely would learn a lot.
Umar is very good with his line and length. In previous innings, he was in fantastic touch. Here, Umar's partner Ghulam Mudassir has been bowling beautifully as well. We just said got a fifer in the first innings. He's really looking a man with a purpose in the second innings as well. Everybody's realized that new ball is a time where you got to strike on this pitch. And both these new ball bowlers has really started well. This man Ghulam Mudassir always creates a different angle, being the left arm over the wicket bowler. That was the first one. Really painful blow for Bangalzai. This one, you see the off stump and the middle stump. Could easily have hit that, and then he was a bit too straight to force the issue in terms of the leg befores, but still impressive bowling, consistent bowling, working on a plan. Oh, that is beautifully played. Excellent fielding at the same time, but this is Bangalzai at his best, because we know this youngster can bat. Just that early phase, that nervous phase to get in on this pitch. Look at that beautiful poise and balance. Excellent work, Umar bin Yusuf. Yes, Abdul Wahid Bangalzai now getting momentum back. 5 overs gone, 10 for 1. Glorious evening now. It has been a beautiful day, and that afternoon turning into evening. Very pleasant conditions, just about perfect for playing cricket. And Balochistan have really got to fight hard. Ghulam Mudassir now has Imran Butt in his sights for this over. Butt made a dogged 50 in the first innings. Also, he likes to take his time. Just an opener in the traditional mold. The red ball openers like to take the shine off and then bat long. Yes, if we have seen the previous over of Ghulam Mudassir, the length was pretty much good. Only he has to target the off stump. Good delivery, but played nicely. That was a better line. It started from just around the off stump, and just that little shape troubling the batter. Imran Butt's balance on that occasion was reasonably good. That's why he got a good chunk on it, not off the middle of the bat, but still comfortable enough. This is a good contest. At one stage it felt like Ghulam Mudassir was only interested in playing that white ball format. He made a good name for himself in that. But now seeing him bowl and running in with the red ball, showing his skills. Really impressed the way he's bounced back in red ball cricket this year. This is the time that Imran Butt, if could play a good and solid innings for Balochistan. In last innings, he was not in good colour, looked bit off colour, but now it's an opportunity for him to prove himself.
Nicely clipped. Fine leg will come around. That's Umar. But good aggressive running between these two. Collected 3 runs. Imran Butt will have to do that. Runs are important. You cannot just allow the Sindh bowlers to bowl at you. You've got to put the pressure back on them by scoring runs where available. Yes, nicely flicked towards square leg for this couple. They're still 108 runs behind. The outfield is not as much quick. Omar was there. Once again, 2 straight. This time straight to Umar. Easy pickings for Butt on that occasion. As far as concerned, for the partnerships are really important in any format of cricket, and this is what we have witnessed in Sindh's innings, especially last 2 partnerships, a partnership Saud Shakil and Omar, and then Ghulam Mudassir played his role. So I think these partnerships are really crucial. Marwan! 14 for 1. Regain form, regain selectors' attention, regain. Was he proven? That's why he got picked. Winston Benjamin. Bangalore have started to find the middle of the bat this season. He's a bit quiet. Last year he had a very good season in the red ball cricket. He also scored a double 100. We saw that game. It was live streamed on the PCB YouTube channel. So he does know how to perform in front of the cameras. Just getting started is difficult for every batter. This man is in good form, and we just want to look him in action again. Yeah, the key man, Abrar. 23 wickets in the last 3 games. And this 4-day pitch, it's got slower, it got a little lower and drier. I think he will enjoy the conditions when he comes to ball. He did well on the first-day pitch, which is a lot difficult than bowling on a 3rd and 4th-day pitch. And Sindh have set up the game nicely for him. Credit to Sindh's batters. In the previous game, we saw 300s. Here, skipper Saud Shakil took it all upon himself and gave the runs to his team that were needed to put pressure on Balochistan. Well, let's see if the batters of Balochistan, they could manage to score well and give them good position of Balochistan. But the way Abrar bowled in the last innings, even the last match, it's been extraordinary. He will be a real threat for Balochistan.
That will be the big test for the Balochistan batters. But you have to say that since seamers has also out-bowled the Balochistan seamers, and it's also understandable because Sindh's been playing here. This is their 4th game out of 5 that they played on this venue, similar type of surfaces. So they're used to the conditions. They've come up with better plans. The execution have been better as well. And that's no surprise why they're so far ahead in the game. And for Balochistan to get something out of this game, they would really have to dig deep. On the middle of the bat again, Bangalze a bit disappointed. He thought he should get some runs there. 7 gone, 14 for 1. That is beautifully played. Not looking to hit it hard, but just getting on top of the ball. Playing close to himself with a straight face. Always the best thing for an opener. Yes, this straight drive with the straight bat. Not with the full power, but it was elegant. Once again, not in control. Bangalze really threatening that front pad with those in-swingers. Ghulam Mudassir. He hasn't been lucky in terms of the wickets in this innings, but he's bowled a lot better. I would still go ahead and say probably this is his second best spell. I thought his best spell came with the second new ball in the first innings here. And even though he got 2 wickets in the first innings, the control that he's showing in this spell today is probably right up there with that spell that he bowled with the second new ball. That is magnificent. That is a delightful stroke. The use of the wrist and the balance, just absolutely superb. Treat to watch this on drive from Imran Bhatt on the pads, and nicely played. Very good batting. It's the best shot from Imran Bhatt so far. Looks in good touch. Absolutely. This is really sweetly timed. Time in the middle does help batters. And that vigil in the first innings means that Imran Bhatt is looking good in the second. Wow. Just width on offer. Once again, just a caress. Not a full-blooded drive, but still will be enough to earn him a boundary. That is Imran Bhatt at his very best. Yes, after an on drive, you could watch this off drive. You could call it a proper cover drive. Nicely played. Yeah, a bit of overcompensation there from Ghulam Mudassir, that leg stump half volley. He's trying to correct that error and instead give too much room to Imran Bhatt.
Again, a very good shot, a very good straight drive. Is the third consecutive boundary for Imran Butt. Hat-trick of boundaries. This is Imran Butt at his fluent best. What's that? Another full delivery. Looking for that swing. Wasn't there on that occasion. Imran really lined it up very nicely, and that full face of the bat, just a little punch was enough to give him that timing and safest place in the ground to hit. 3 exquisite boundaries from Imran Butt. Now using the pace, Umair will give the chase. Just a couple more. 14 of the over. Balochistan 30 for 1. Yes, just plays towards third man area. Umair bin Yusuf. Nice slide and 30 for 1. तीस पे 1 8 ओवर्स में अब्रार अहमद आए हैं बॉलिंग के लिए और कमेंट्री में भी चेंजिंग है। मेरे साथ अली यूनुस। इंटरेस्टिंग होगा इनकी बॉलिंग स्पेल जो है इस पिच पे, और 23 से 1 रन हासिल किया। अच्छी पॉजिटिव बैटिंग बंगल जई और इमरान की, स्पेशली 24 रन 22 बॉलों पे। दस मैचेस में 56 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, बहुत ही शानदार फॉर्म में। 22 विकेट्स तो इसी टूर्नामेंट में हासिल कर चुके हैं। बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट रहा है अभी तक अब्रार अहमद के लिए, और ये एक्स फैक्टर होंगे। इनसे मुकाबला करना होगा, इनसे बचना होगा, इनसे लड़ना होगा बलूचिस्तान को, तभी इस मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के मैच की, जी मुश्किल सी पोजीशन में आ गया है मैच। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बहुत शानदार खेल रहे हैं। 67 रन हो गए हैं 4 विकेट्स गवा के। यासिर, कहाँ देख रहे हैं मैच को? जी हाँ, 12वां ओवर है और ये बड़ा क्रूशियल, ये जो 2 ओवर्स रह गए स्पिनर्स के, क्योंकि ये 8 ओवर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इस पिच पे, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छी पिच है। मेरे ख्याल से स्पिनर को वैसे यहाँ पे रोक देना चाहिए था, फास्ट बॉलर्स को लेके आते, थोड़ा एवरेज और ऊपर लेके जाते। ये उनको फ्री भी है उनके लिए। इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं और वापस आते अपने मैच पे। इमरान बट ने कदमों का इस्तेमाल किया और कोई रन नहीं, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद। अच्छा खेल रहे हैं इमरान बट, पॉजिटिव खेल रहे हैं। आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ इतना अच्छा स्ट्राइक रेट इनका, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। जहाँ इंटेंट काफ़ी पॉजिटिव नज़र आई है, और यही अच्छा तरीका, यही सही तरीका है इस पिच पे कि बैट बॉल अगर आप मिले तो आपको रन्स लेने हैं, क्योंकि इवन पिच है, अच्छा बल्ले पे बॉल आता है, और नया बॉल सरवाइव करने के बाद तो आपको रन्स ही रन्स होते हैं। some problems, लेकिन अभी भी जो रिक्वायर्ड रेट है बहुत हाई है। 26 और 60, 84, 86 रन करने इजी नहीं होगा 8 ओवर्स में। 10 से ऊपर की एवरेज है। बॉलिंग में तब्दीली, आसिफ महमूद पहली बार आज हमें एक्शन में नजर आएंगे। एवरेज सा मैच रहा है उनका, लेकिन ये अच्छा मौका है कम बैक कर सकें।
विकेट्स हासिल नहीं कर सके, रन्स नहीं कर सके, खड़े नहीं हो सके, तो काफ़ी मुश्किलात रही आसिफ महमूद के लिए। जैसे अजीम घुमन के लिए रही, पैर हासिल किया उन्होंने, आज तो अनलकी रहे। यासिर कहना होगा कि आज डिसीजन उनके खिलाफ गया, थाई पैड पे बॉल लगता हो, विकेट कीपर के पास गया, अंपायर ने आउट दे दिया। ऐसा सब कुछ होता है क्रिकेट में, ये भी एक लर्निंग है। जी हाँ, टाइम आता है, ऐसा टाइम भी आता है जब कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही होती है, एक आप खुद भी गलती कर रहे होते हो और चीज़ें भी आपके अगेंस्ट हो रही होती हैं, तो एक बाउंड्री हासिल करेंगे। बंगल सही, पहला बॉल, शॉर्ट डिलीवरी थी और उसको यूज़ किया स्मार्टली, नीचे खेले 4 रन्स के लिए। अच्छा आगाज नहीं रहा है आसिफ महमूद के लिए, पहले ही बॉल पे 4 रन्स दे दिए आसानी से। ये ख़राब बॉलिंग है। अगर आपको मैच अच्छा करना है तो आपको एरियाज़ आइडेंटिफाई करने होंगे, किन एरियाज़ पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करनी है, ये चीज़ सीखनी होगी। लेंथ बॉलिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। डिफेंसिव बॉलिंग आप करते रहेंगे, अगर आपने अटैक करना है, विकेट्स हासिल करनी है, तो आपको थोड़ा चांस लेना होगा, बैटर को भी दिखाना होगा कि वो ड्राइव मार सकते हैं। उसी लेंथ से ही विकेट्स हासिल हो रही हैं। जी बॉल में भी, बॉल जो है इसमें शाइन है, अभी इसमें थोड़ा सा आगे से बॉल गिरें तो स्विंग विंग ले सकते हैं, लेकिन ये पीछे वाला बॉल उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पिछले मैच में जो स्पेल किया था उस वजह से देखिए पहला बॉल ही उधर ही गिरा। और मेरे ख्याल से ये प्लान जो है बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा आसिफ की तरफ से। फिर वहीं पे बॉल, लेकिन बैट बॉल, अच्छा शॉट बंगल जई का, फ्रंट फुट पे पुल शॉट, बहुत अच्छा लगता है। 4 रन्स या वेब किया, जैसे खराब लाइन, यहां पे आप बॉल करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको बाउंड्री ही हासिल होगी। खराब बॉलिंग आसिफ महमूद की जानिब से। जो ट्रेल है अब सिर्फ 82 रन की रहेगी। इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आज बगैर कोई और विकेट गवाए बलूचिस्तान डे एंड करता है, फिर थोड़ी मुश्किलात होंगी सिंध के लिए, कैसे विकेट्स हासिल की जाए, कैसे आउट किया जाए। लास्ट टाइम जब बलूचिस्तान खेले थे तो 1.5 दिन बैटिंग की थी मैच बचाने के लिए, लेकिन उसमें इमामुल हक की शानदार सेंचुरी शामिल थी। यहाँ पे इमामुल हक नहीं है, तो मंगल जही और इमरान बट को लंबा लेके जाना होगा यह मैच। जी हाँ, और एक ऊपर से सेंचुरी बहुत ज़रूरी है और एक फिर नीचे एक बड़ी इनिंग्स, तब जाके ये सेव होंगे, क्योंकि 82 रन अभी भी पीछे हैं। रन्स इतना मैटर नहीं करते हैं, विकेट पे स्टे करना है, वक्त गुजारना है। ये अच्छा सिंगल है ये, क्योंकि अब बात रन्स की नहीं है, बात वक्त गुजारने की है, बात कल पूरा दिन बैटिंग करने की है। आसान नहीं होगा क्योंकि अबरार बॉलिंग कर रहे हैं दूसरे एंड से, और हमने देखा है जितने शानदार तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं उनको खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बड़ा अच्छा चांस है सिंध के पास एक दफ़ा फिर अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने का, कि लास्ट मैच में भी हमने देखा आखिरी दिन में केपी को सिर्फ 106 रन की लीड थी और वो पूरी टीम आउट हो गई 170 पे। तो पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। 40 पे 1। चाय का वक्फा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। उससे पहले नज़र मारते हैं स्कोर कार्ड पे। सॉरी, पानी का वक्फा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। 1 विकेट हासिल की अजीम घुम्मन, 40 पर 1।
भाई बैटिंग कार्ड इमरान भट्ट 24 पे खेल रहे हैं। अजीम घुम्मन जो एक विकेट, कॉट सरफराज, बोल्ड मुदस्सिर और अब्दुल वाहिद बंगल जई 13 पे नॉट आउट। इब्रार बॉलिंग को जारी रखते हुए पवेलियन एंड से बंगल जई टेस्ट होगा उनका इब्रार के अगेंस्ट। क्या ये चैलेंज भी है, ये लर्निंग भी है बंगल जई के लिए। यंग है और जब आप ऐसे बॉलर को खेलते हैं जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर होता है और आप उसको सरवाइव करते हैं, आप उसको अच्छा खेलते हैं, मेरिट पे खेलते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है एज अ बैटर, स्पेशली जब आप यंग बैटर होते हैं कि आप एक्स फैक्टर उनके मेन बॉलर को अच्छे तरीके से नेगोशिएट करते हैं, तो पूरी टीम में एक डिफरेंट एनर्जी आती है। जी और उनकी स्किल्स भी चेक होती हैं, टेस्ट है उनकी स्किल्स का कि वो किस तरह हैंडल करते हैं इस प्रेशर को। अच्छे प्लेयर हैं, 200 भी किया हुआ पिछले साल कजाफी स्टेडियम में, पहले ही मैच में 200 किया था और बड़ा अच्छा 200 था वो। हम वो मैच कर रहे थे जहाँ वो पिच थोड़ा स्लो था, लो था, ये टेस्टिंग कंडीशंस हैं। यहाँ पे जब तक क्रीज पे रहेंगे स्किल, पेशेंस दिखाना होगा, हल्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी इजी होंगे, रिलैक्स होंगे, शॉट गलत मारने की अटेम्प्ट करेंगे, आप अपने विकेट गवा देंगे। ये ऐसा पिच है। बहुत ही क्लोज और बड़ा ही अच्छा डिसीजन साजिद अफरीदी का। चारों बॉल डिफरेंट की हैं, अगर देख सके तो मैं आपको बताऊं, चारों बॉल डिफरेंट किए इस ओवर में इब्रार ने। जहाँ गुगली बिल्कुल रीड नहीं कर पाए और यही हम यहाँ पे देखते आए हैं कि गुगली बहुत खतरनाक रहा है। एक बार फिर अच्छा डिसीव किया एयर में, बॉल हल्का सा अंदर आया और इतना ही चाहिए था, गैप फाइंड किया। और अभी हम बात कर रहे थे एक चैलेंज है, एक टेस्ट है बंगल जई का, उसमें कामयाब नहीं हो पाए और अपनी विकेट गवा दी 13 रन्स पर। 40 पर 2। जी हाँ, कैप्टन वॉक्स इन, असद शफीक, अगेन एक्सपीरियंस प्लेयर, काफ़ी सारी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए भी। और इस वक्त इब्रार अहमद जो कि अपने फुल जोबन पे बॉल कर रहे हैं इस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी में, और क्या ही बॉल थी, एक्सीलेंट डिसीव किया उन्हें
लेग स्पिन पहली, दूसरी फ्लिपर, तीसरी गुगली और फिर चौथी गुगली, लेकिन लेंथ चेंज की इस बार। ऐसे शफी 178 मैचेस, 10,991 रन, बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड। 40 की एवरेज, 60-50, 2600, 223 इनका हाईएस्ट स्कोर है। ये शायद बलूचिस्तान की टीम की सबसे अहम पार्टनरशिप होगी, जहाँ पे दो सबसे बेहतरीन बैटर क्रीज पे मौजूद हैं बलूचिस्तान के लिए। लेकिन उससे पहले ये बॉल देखना होगा। अच्छा सेटअप किया, जैसे आप कह रहे थे, चौथा डिफरेंट डिलीवरी की है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इसी तरीके से। और यही वेरिएशन की हम बात करते हैं, यही चैलेंज की हम बात करते हैं, इसी एक्स फैक्टर की हम बात करते हैं, जो इब्रार अहमद की सूरत में सिंध के पास मौजूद हैं। कभी भी विकेट ले सकते हैं, उनमें अहलियत मौजूद है। यहाँ पे डेफिनेटली अब सिंध जो है वो कमांडिंग पोजीशन में है इस मैच में। 81 रन की ट्रेल है, कल का पूरा दिन सरवाइव करना है। एक डॉन्टिंग टास्क जिसे कहते हैं, ये बलूचिस्तान का इंतज़ार करेगा। राउंड द विकेट, अब आसिफ महमूद का ये रोल रहा है कि राउंड द विकेट आके तेज़ बॉल करते हैं। इसकी एक वजह यासिर ये भी हो सकती है कि इब्रार ऑपोजिट एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, और जब यहाँ से राइट हैंडर राउंड द विकेट बॉल करेगा तो वो जो रफ पैच है वो बनता चला जाएगा राइट हैंडर के लिए सामने। तो एक ये भी प्लान हो सकता है सिंध के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सेकेंडरी प्लान है, लेकिन जो प्राइमरी प्लान इनका यही है कि ये यहाँ से प्रेशर डालें, बैट्समैन की टांगें हिलाएं, ताकि इब्रार पे उनकी टांगें ना चलें। जी, वो लेंथ आगे पीछे करते हैं, और ये देखें, और आउट। क्या कैच लिया है, बहुत ही आला, ज़बरदस्त, क्या बहुत ही शानदार, ये कंसिस्टेंसी है। अभी हम प्लान की बात कर रहे थे यासिर कि राउंड द विकेट क्यों बॉल करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा, कुछ डिफरेंट किया, कुछ अलग किया, और एक बड़ी विकेट हासिल की इमरान बट की, जो कि काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहे थे। पीछे गिरा हुआ बॉल, अच्छी फील्ड पोजीशनिंग भी, और एकदम किक ऑन कर गए। एक अच्छा कैच फवाद आलम की जानिब से, फील्ड सेटिंग बहुत कमाल की रही। इमरान बट एक बार फिर नाकामयाब रहे, 24 रन बनाकर आउट हुए। 40 पर 3 बलूचिस्तान। हारिस सुहेल नए आने वाले बैट्समैन, एस पेयर इस वक्त क्रीज पे मौजूद बलूचिस्तान का, और यही की पेयर है। इनमें से कोई भी अगर आउट होता है तो फिर सिंध की टीम इस वक्त वैसे भी हावी है, तो मज़ीद हावी हो जाएगी। इस तरह बॉलिंग हो रही है, एक्सीलेंट, और हारिस रऊफ एक और शानदार प्लेयर। ऐसा लगा जैसे बहुत थकी हुई नज़र आई है हमें बलूचिस्तान की साइड। हारिस सोहेल बहुत ही शानदार रिकॉर्ड, 5,319 रन हैं, एवरेज शानदार है 42 की, 30, 50 और 1400 भी अपने करियर में कर चुके हैं। बहुत ही फॉर्मेडेबल, बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर के सबसे बेहतरीन बैटर हैं ये। लेकिन यहाँ पे अब उनको अपनी टीम को संभालना होगा, क्योंकि जो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई हैं, 3 विकेट्स गवा दी हैं 40 रन पर। लास्ट ईयर भी जब आखिरी मैच था बलूचिस्तान का तो एक ही सेशन में सारे आउट हो गए थे। क्या ऐसा दोबारा होगा, ये तो देखना होगा, क्योंकि आसिफ महमूद अब बहुत ही अटैकिंग फील्ड पोजीशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। फील्ड सेट है शॉर्ट पिच डिलीवरीज के लिए। जी एक बार फिर
पीछे का बॉल था, लेंथ किक हुई, गुड लेंथ से किक हुआ ये बॉल, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं था और बहुत ही अच्छा कैच फवाद आलम का। पहले ही उन्होंने देख लिया था कि ग्लव्स के साथ लगे, तो उनकी जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ थी, एंटिसिपेशन बहुत अच्छी थी, लीन किया अपने आप को, यहाँ प्लान करके आउट किया गया। और ये शानदार बाउंसर है, तेज बाउंसर है ये। इन्हीं बाउंसर्स की वजह से बहुत हाईली रेट किया जाता है आसिफ महमूद को सिंध साइड में। एनर्जी लेके आते हैं, पेस लेके आते हैं। फवाद आलम शानदार एंटिसिपेशन, जैसे आपने कहा, अच्छा प्लान किया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान बट का बॉल उस तरफ आए, क्योंकि खेलते हैं अक्सर जान छुड़वाने वाला एक एंगल होता है उनका। देखिए एक बार फिर एकदम इसका कुछ कर नहीं सकते थे, ज़्यादातर बैटर इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉल आगे से उठा था गुड लेंथ से। और ऐसा ही कुछ बॉलिंग अब हारिस सोहेल को भी वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से ग्लव भी लग जाए तो भी चांस क्रिएट हो सकता है। जी लास्ट मैच में भी बड़ा हॉस्टाइल स्पेल किया था और अभी फिर उसी मूड में लग रहे हैं। एक विकेट हासिल कर चुके हैं। या यही कॉम्बो था, यही कॉम्बिनेशन था लास्ट मैच में भी। इब्रार और आसिफ महमूद ने पेयरिंग की, पेयर बनाया, पार्टनरशिप की और केपी की पूरी टीम को इन्होंने 150 रन में आउट किया। सिंगल लिया इस बार हारिस सोहेल ने। 41 पर 3 बलोचिस्तान। चौबीस रन बनाए इमरान बट। अजीम घुमन ने पेयर हासिल किया। अब्दुल वाहिद बंगलजई 13 रन बना सके। और अब बलोचिस्तान का सबसे बेहतरीन पेयर असद शफीक और हारिस सोहेल, एक्सपीरियंस्ड, दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। हुसैन तलत, हसीबुल्लाह, काशिफ भट्टी तीनों बैटिंग कर लेते हैं, आने वाले बैटर्स। लेकिन प्रेशर डिफरेंट है, अबरार का प्रेशर डिफरेंट है। ये एक्स फैक्टर ये अलग हैं, इनमें जादू है। और अगर आपको याद हो, यहाँ से काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली थी हारिस ने इनको। क्या आप वो सिचुएशन है पिच को देखते हुए, मैच की सिचुएशन को देखते हुए, क्या आप अटैक करने जा सकते हैं? देखिए उन्हें आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। इन्हें जहाँ पे थोड़ी सी बॉल लूज होगी वो आपने पुट अवे करनी है, बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाएंगे। ये तो इस वक्त उनका टर्न भी हो रहा है, बहुत विकेट पूरी तरह ड्राई हो गई है और अब पिच खेले, लेकिन लकी रह गए, फील्डर के हाथ में नहीं गई। प्रेशर टाइम है इस वक्त हारिस का भी, इनके अगेंस्ट टेस्ट है मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐसे बॉलर हैं कि किसी भी बैट्समैन को फंसा सकते हैं। बहुत ही लेजी एलिगेंस है हारिस सोहेल में, बहुत ही शानदार खेलते हैं। लेकिन एमसीजी में हारिस रऊफ बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों हारिस का अगर कंपैरिजन करें, काफ़ी मुश्किलात डाली हुई हैं उन्होंने भी इंडिया के लिए। यहाँ पे इब्रार ने बलूचिस्तान के लिए। जी बड़ा ग्राउंड है एमसीजी, यहाँ पे बाउंड्रीज लेना बहुत आसान नहीं होगा और एक एक दो दो यहाँ पे हर्ट नहीं करेंगे, बस बाउंड्री से इज्तिनाब करें। विराट कोहली काफ़ी डीप खेले हैं, 40 बॉलों में 45, और इनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब्रार का ओवर मिडन रहा। 41 पर 3 बलोचिस्तान।
काफ़ी वैरायटी है इस सिंध के बॉलिंग यूनिट में। मोहम्मद उमर राइट आर्म स्टेडी बॉलर हैं, विकेट हासिल नहीं कर चुके हैं। गुलाम मुदस्सिर लेफ्ट हैंड है, काफ़ी स्विंग करते हैं, 1 विकेट हासिल की। अबरार अहमद में तो एक्स फैक्टर है, 1 विकेट हासिल की। आसिफ महमूद एग्रेसिव हैं, जान से बॉलिंग करते हैं, तो वैरायटी काफ़ी मौजूद है। 1 विकेट उन्होंने भी हासिल की है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा ये बॉलिंग यूनिट। 41 पर 3। एक ही रन बन पाएगा। फील्ड सेम सेट है असद शफीक के लिए भी, जो इमरान भट्ट के लिए सेट की गई थी। लेग गली मौजूद है, शॉर्ट लेग भी फील्डर मौजूद है। फाइटिंग इनिंग खेलना होगी यहाँ पे इन दोनों को। अजीम घुमन काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे, अच्छा दिन नहीं रहा है। काफ़ी कोशिश की उन्होंने अंपायर को बताने की कि बल्ले को बॉल नहीं लगाए, थाई पैड पे लगाए, लेकिन अंपायर ने उनकी एक ना सुनी। डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि पैर लेना कभी भी अच्छा नहीं होता एज अ बैटर, स्पेशली जब आपके कोच सामने बैठे हों। एक बार फिर नजर डालते हैं यासिर। अनलकी रहे, देखिए थाई पैड पे बॉल लगा, लेकिन और क्या किया जा सकता था इस बॉल का। जी हाँ, ये तो बहुत ही अनलकी रहे। एरर इमरान जावेद की हमने बात की, बहुत अच्छे अंपायर है, लेकिन यहाँ पे गलती हुई उनसे, और ये जो था अपर थाई पैड पे लगा था। एट द एंड ऑफ द ह्यूमन एरर। ये स्लॉपी फील्डिंग यहाँ पे। हवा में खेले हैं, फील्डर मौजूद है। एक बाउंस के बाद फील्डर के पास बॉल गया। बलूचिस्तान 45 पर 3।
Balochistan 76 runs behind, which has been the equation here, as they have lost 3 wickets in 45 runs. And Haris Sohail trying to live his dreams here. He did get 50 in the first inning, but this man in picture, Abrar, really a wonderful player. Just showing his intent. The leading wicket taker, who has been brilliant in this Quaid-e-Azam trophy. And if you call me like the bowler of the tournament so far, he's the one. He's a really intelligent bowler, all the time looking forward to make the batter in 2 minds. Impressive, really impressive. The top wicket taker, building and living his moments here at Rawalpindi Cricket Stadium. What a wonderful bowler. He's all the time looking to get breakthroughs. That's why you clearly see the impact of Haris Sohail, that he's slant pick onto the back foot, not playing him freely, though the need of time, but Haris Sohail taking his time with his dot delivery. Over ball, 15 gone. Balochistan 45 for 3. So quickly moving here and there. Well, nice follow through of the camera person. Here we go. Asif comes in, and let's see if he can catch something here. He has already got a wicket. Good delivery. Just bending his back and trying to get this. Look at that. You're just bending his back, and look at the keep, look at the carry. He's just having a good test. Sarfraz took it on the up in airborne. Look at that. Airborne. Again, he's been watchful, quick enough. This is his tendency, that he can pitch the ball short and can disturb the batter for the whole day, but this is really a good bowling if he's been keeping that ball towards offside. But Asif is just going down the leg side. Have a look. And look at the batter, Asad Shafiq, having a close eye when the ball has been going through nearby to him. Again, he's attempting bouncers with continuity, hitting the tough heart. And Asad only replying in smile, and smiles everywhere. Good time. And I've been joined by K. Asif in Combox. Welcome, Asif. And same name is in the center. Yes, it was a very good bouncer. Look at this. The intent is very clear. A fielder in the short leg for Asad Shafiq. Yes, a good one. Intelligent bowling. Just keeping the ball short 3 times, and then he's just going into the roots, making Asad Shafiq to think eagerly that what has been coming next. In Asif, this has been really a good bowling where you've not been predictable. Yes, that's right. You're just going for the wickets. Balochistan still 76 runs behind now. Oh, that was not that high, but Asad Shafiq letting it go.
Well, he's been thinking that I should be leaving every delivery which has been pitch shot. Have a look. Just tucking down and very much close to the rib cage. If you're not wearing chest guard, that ball will really harm you. And no chest guard there. Well, good thing is that Sindh is coming up with an aggressive approach. Saud Shakil played tremendous. Again, a bouncer. It's a good over from Asif, not only a bouncer but some look with an aggressive eye as well. 16 gone, 45 for 3. .269, which has been the Balochistan's score, and then Sindh replying batter 390, and Balochistan replying 45 for 3, still trailing behind 76 runs. Good one from the other end. We've been watching spin. Abrar, who is the leading wicket taker, 23 wickets before this game, and 24th what he has taken here. Yes, some action going on in MCG as well. India required 22 and 7 deliveries. Well, the senior pro, close eye. No. Well, he's just keeping that ball straight. With good pace, he's getting some variation. Sometimes he's giving a bit of the air. And the previous one was slightly bit more quicker, making the batter to think here. Good bowling. Abrar is in super touch. Already in confidence, got 5 wickets in first innings. Coming up very good. His current deliveries, wrong word. Each and everything is perfect with this exciting young guy. Haris Sohail got his 50 in the previous inning, first inning in fact. So he's just carrying that momentum, making forward, getting all of the experience behind. Dot ball to finish the over. 17 been bowled, 45 for 3. Shot ball to start. In Asif continuing the momentum, and in combox I have got Asif with me. Asif square, one bowler, one combox. Man who is speaking, who will be explaining his skills here. Pakistan on the other end. India required 16 runs in 6 deliveries. The viewers who are watching this broadcast or stream, and a back foot. Haris Sohail is on 3 and Asad Shafiq on 3. So both batters, they are just going head to head here. 75 runs trail still. And they're in the making of a good partnership.
You were talking about Asif Square. One is K. Asif, one is Asif Mahmood. Asif Mahmood is an aggressive with his bowling. K. Asif is pretty much simple guy. Yes, exactly. You're right. And those viewers who are watching here, not India-Pakistan game, Pakistan is in well control as Hardik Pandya departs on 37 deliveries. India is 144 runs with a loss of 5 wickets. And Pakistan has been in really good boots. Good news. But here, the total contrast. The white kit and red ball. Well, but Balochistan still trail by 75 runs. But the excitement is going on in MCG. Lots of thrill, lots of action there. Pakistan played well. Now India required 16 runs just on 5 deliveries. Dinesh Karthik joined the party with Virat Kohli. Well, it's a big time India-Pakistan games. Really hot atmosphere. Hearts are pumping. Roads are empty. The streets have been vacant. Shops closed. Everyone is watching in subcontinent. The big and surprising factor. Any team can do better, but Pakistan just have to hold 5 more deliveries and India required 16 runs. Here we go, Asif, this time towards onside, officially played, but just getting a single. And Asif is not happy. But he's just thinking here, 18 been bowled, 47 for 3. Abroad to continue, and it's a no ball. Yes, Abroad is overstepping. He's been very consistent with his line and length, but this time it's just overstepping, and that was a no ball. Defense has been really solid from Haris Sohail. Now 2 deliveries and 7 runs remaining at MCG. Virat Kohli is still there. And this is a typical Pak versus India match. And something is happening in the centre here at Pindi. Where Abrar is bowling, but India requires 7 runs in 2 deliveries. Really a nail biter, just gone down to the wire. Dot delivery. 2 more things. What's been happening at MCG? India versus Pakistan into the last over. Close game. But here Haris Sohail taking his time, because he has got 1 more day left here tomorrow. But Abrar, the leading wicket taker, enjoying his bowling. Dot ball to finish the over. It's 48 for 3.
Asad Shafiq spent his 27 runs in the first inning. Still, they have been very watchful, and let's see that if we will be watching some pace here. Yes, change in bowling. It's Umar brought back to the attack. And action is still going on in MCG. What's happening, guys? Well, Umar to continue. He has been really accurate enough. Pants his back. Every time he's been hitting the deck and getting a good results. Well, that was really quick. Off the pads, it's just gone towards onside. They're returning back for 2. Well, shades are getting longer, Asif. Yesterday at 5 p.m. we had the close of day, but today it's another day. Well, actually, you're talking about Asad Shafiq. I didn't like his intent in first innings, the way he played against Abrar. It was a very loose shot from him. He should come up with a solid innings now. This is what Balochistan require. Yes, Umar is a really handy customer. He's just making sure that every time there is some energy in his bowling. You did see that Sindh has been really lucky to have him. He's containing well sometimes. He's also been able to get breakthroughs. But this is really a well defended shot by Asad Shafiq, who is having immense sort of career stats along with him. Really a wonderful player of this red ball cricket, and he's been in a white ball. He has got the caliber that he can really take his inning longer, and every time he's just been showing enough skills that he has got lots of experience. Well, this was really a good shot, but straight to the fielder. It's 50 up with a loss of 3 wickets. Yes, and if we talk about MCG, what's going on there? India required 2 runs on 1 delivery. Yes, exactly. Presence of mind from Rizwan, who took the ball quickly and stumped. So India requires 2 runs in 1 ball. Could have been a tie. At Rawalpindi Stadium, Asad Shafiq placed nicely towards square leg. And Saud Shakil was there. 2 more runs added into the total. Yeah, really quiet. They're just going. Wait, something to happen like 69 runs, which has been a fast take here from Balochistan, that they should be equalizing the effort Watson has put on. 69 more runs, and then they should be looking to bat through tomorrow. Down the leg side, it's just walked that one away. It will take a single, and Asad will keep the strike. 53 for 3 after 20.
Well, relaxing times, but not relaxing at MCG. One required on one ball, and well, India have won against Pakistan. It was a nail-biter, a good contest. You must talk about that, the intentions, but it's a very good shot from Asad Shafiq towards extra cover. And India have won the match against Pakistan. yes, well played, India. And it is a victory. They came from nowhere. And Abra should be looking to go through his overs quickly. Yeah, the sun is going down. Shades, they were just going longer. Yeah, this has been what we've been watching here. Asad and Haris, they are taking their time. They've been settled down. 35, 19 deliveries. Well, things are really slow down here. It's 55 for 3. And Abra should be looking to get a couple of more wickets here, but really solid defence from Asad Shafiq and Haris Sohail, both the batters. They will not allow you to get their wicket so easily, because we have got one more day here tomorrow in this game to be finished. So you need to show some more patience, because we're here. We did see that no spin. The ball is just keeping its line straight enough. Well, the way Virat Kohli played, it's been amazing. He was missing this form for a long time. They played a tremendous innings against Pakistan. And some emotional moments at MCG. It's tough luck for Pakistan. 21 hours gone. Balochistan 55 for 3. Well, Sindh replied nicely with the splendid innings of Saud Shakil, 187. 390 they made, and Balochistan still behind, 66 runs. Well, Umar is coming up with 2 slips in a gully. A very good delivery. This is a typical Umar stuff. Yes, exactly. Khurram Shahzad padded up. If anything will happen, like a night watchman job, he will surely come in, but he will surely be looking and showing confidence that Haris and Asad Shafiq must have got the caliber. And that was the ball, the previous one. He just left it. There is some sort of movement behind the wickets when Sarfraz took it on a good high. But Umar, mind you, is really a good bowler. Yes, this is the perfect line. And look at this aggressive eye from Umar. And Haris is pretty much confident, and he understands that he would have to play an important role there. He was not
as good in first innings, scored a 50, lost his momentum, and during the fielding, you must be missing those moments, those time. Yes, exactly. Being a batter, every good inning will really give you some more confidence, and you perform well, because when you're not among the runs, being a top order and a middle order, that's been showing lack of confidence. Good shot, but not been enough legs, and the captain having a good hand on to the ball. So every time when you're making runs, being a batter, that will surely give you lots of confidence. Have a look, just standing, having a punch. The ball was squeezing through, but a good hands, so sliding and saving runs. After scoring 188, he's pretty much active in the fielding as well. This is all about your captaincy, and this is all about your leadership. On the other side, skipper of Balochistan is on the strike. Yes, and he must be thinking that at this time of the day, might be getting some quick bouncers, or might be quickie. He can get his wicket here. He attempted one. You predict rightly, yeah? It was your prediction that he's coming up. Khurram, Imran Butt, and the entire nation was looking forward to get the victory against India. But it's all about cricket, guys. Pakistan played tremendous cricket. Well, the ground is almost gone into the shade completely. No sun is there. So let's see when umpires, they will be getting together, and they will surely be asking the players. See that? No light, no sunlight in fact. Though there's a light enough to play your shots, and he's attempting bouncers here. Accurate enough, but not accurate enough to disturb Asad Shafiq and Haris. Last delivery of this over. Umar completing his 6th over. Another bouncer. .22 gone, 56 for 3. Well, umpires, they are all together. They've been on to the surface of this 22-yard, having a close look onto the light meters. That is it fair enough to go and play here? Umpire Sajid Afridi having a close eye. And I think so that this should be offering the light here to the players, as every player is looking towards umpires. Really a tough job to do for the whole day. And there you go, stumps. And it's 56 for 3 in 22 overs. What has been the reply? And Balochistan is still trailing by 65 runs. When Asad Shafiq and Haris Sohail, they are making their way back to the dressing room, and on the other part, they have done a good job. Sindh, they have taken 3 quick wickets, which has been really a good call.
Sarfaraz, Saud Shakil, Abrar, Asif, they all done well. And Asad Shafiq must be happy the way his team performing, but his job is not over. 3 sessions, 6 wickets overall, and run rate is quite a bit low. Day 3 closes here, and Sindh team must be happy the way they have done here. Early morning session, then the daytime, and then Balochistan came, and they were able to get 3 quick wickets, slap it onto the leading way. There you go, not a happy card as Imran Bhatt departs on 24 runs, Azim Gumman without scoring runs, then Abdul Wahid 13. The partnership is going, the senior pros in the middle order, Asad Shafiq and Haris Sohail, 10 and 5, 56 for 3, Balochistan. Well, everyone is playing and contributing the role apart from Muhammad Umar, Ghulam Mudassir, Abrar Ahmed and Asif Mahmood. They're the successful bowlers so far, 56 for 3. Well, this session we have got a bit of the pictures for you. When Sindh team arrives and Balochistan started, that was Azim Gumman, the first, and some sort of good shots all along the carpet we did see. Towards onside, some good drives. When the runs were flowing, straight drive. The batters, they were really having a good time. But suddenly, they lost the momentum and lose quick wickets when the spin was there. Abrar, the leading wicket taker, like before. Then, good fielding. Fawad, the really wonderful presence of mind, just going forward like a superman and grabbing the catch. And that ends the session here. And there you go, the match summary. 269 what Balochistan posted for all out, then 390 the Sindh scored. Saud Shakil 187 runs, the career best inning, and Balochistan some sort of pressure, 65 runs behind at 56 for 3. So overall, the day closes, and we did witness that we've been looking at Balochistan trailing by 65 runs, and Balochistan needs to play some good cricket by tomorrow. They should be keeping their wickets in hand. Both Haris and Asad Shafiq, they can bat long. Well, both of the batters are really seasoned campaigners, and their presence will be really important for the Balochistan perspective. And in first innings, both of the batters, they were not able to complete their innings, but this is the good time. Well, Mac is down at the ground. Let's go towards her. जैसे आपने देखा, इस वक्त हम सिंध और बलूचिस्तान के मैच का जो तीसरा दिन था वो ख़त्म हो चुका है, और सिंध की परफॉर्मेंस आज बहुत ही बेहतरीन रही थी। उनकी बैटिंग जो थी, जो साउद शकील ने की थी, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी अपनी टीम के लिए, और उसके साथ साथ जो ऑफ कोर्स सिंध के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करार की गई है। और उसके साथ साथ जो अबरार अहमद हैं, उन्होंने भी सिंध के लिए बहुत ही ज़रूरी विकेट्स ले ली थी बलूचिस्तान के अगेंस्ट बिल्कुल शुरू में ही। तो अभी ये जो तीसरा दिन अभी ख़त्म हुआ है, इससे लग रहा है कि Balochistan might be in some trouble. And joining us, we've got the coach of the Balochistan team, Hussain Khosu Saab. Thank you for joining us. Thank you. Hussain Khosu Saab, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी आपने देखा है कि जिस तरह आज मैच गुजरा है, ठीक है, सिंध की जो टीम थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी आज, और साउद शकील की जो बैटिंग थी वो बहुत ही एक्सेप्शनल थी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉलिंग की तरफ से क्या कमी रह गई थी कि वो बिल्कुल ही उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना कर सके थे आज? बेसिकली हमने पहले तो शुरू में कंट्रोल कर लिया था। जो आज का दिन था उसमें एक चीज़ की कमी थी, चैनल बॉलिंग जो होनी चाहिए थी, चैनल बॉलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से 3.17 की एवरेज से रन बने, जो कि एक 4 डे क्रिकेट में 3.17 कोई अच्छी बात नहीं होती। चैनल बॉल होनी चाहिए थी, चैनल बॉलिंग की मिसिंग थी, जिसकी वजह से ये स्कोर बन गया। और उसके अलावा साउद शकील ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, उसको दाद देनी होगी, बड़ा अच्छा खेला सिंध के लिए। नहीं तो आपके बॉलर्स का गेम प्लान क्या था? क्या वो उसी गेम प्लान के साथ चले हैं जो आप लोगों ने दिया था? नहीं, गेम प्लान
से थोड़ा सा हट के चले, इसकी वजह से 3.17 की एवरेज से रन बने। गेम प्लान यही था कि जिस तरह बहुत कम विकेटें उनकी पीछे रह गई थी, वो एक ही बैट्समैन था जो पूरा लेकर चला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, उसने कोई चांस भी नहीं लिया। बस वही बात मैं कहूँगा कि चैनल बॉलिंग नहीं हुई, जो चैनल बॉलिंग और गेम प्लान यही था। तो अभी आप अपनी जो टीम की जो सेकंड इनिंग्स की बैटिंग इस वक्त चल रही है, आप वो भी देखें तो वो भी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। जो उनकी सिंध की जो बॉलिंग की टीम है वो आई है, उन्होंने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अभी स्कोर जो चल रहा है, अभी आपकी टीम ने 3 विकेट्स लूज़ कर ली हैं। तो अब आप जब कल आएंगे, आखिरी दिन की तरफ आएंगे, तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे अपनी टीम की तरफ से? बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं, हमारी 3 विकेटें आज ज़रूर गिरी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे टीम के जो स्कीपर हैं और वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर हारिस वहाँ पे खड़े मौजूद हैं। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कल हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अच्छा खेलें, जो भी इस टीम के फ़ायदे के लिए हो, वो इस तरह का प्लान करके कल हम उस तरीके से उतरेंगे। तो अभी हमारी बैटिंग लाइन पीछे हैं, एकदम अच्छे बैट्समैन बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है, तो अभी आपकी फीलिंग क्या है? कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए, और लास्ट दिन होगा जैसे हमें पता है। तो अभी आपकी क्या फीलिंग है इस ये जो तीसरा दिन ख़त्म हुआ है, अभी इसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से? 3 विकेटें गिर चुकी हैं, खैर इसका इतना वो नहीं है। हमारी कोशिश यही होगी कि जो कल जो हमारा पहला सेशन हो वो बड़ा अच्छा जाए, और ये जो बैट्समैन इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं वो उसको पूरा खेल कर ले जाएँ, और पॉजिटिव हम क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारी टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। चलिए, थैंक यू सो मच हुसैन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चलिए, आपने देखा कि यही था हमारा जो आखिरी सेगमेंट था तीसरे दिन के लिए, एंड नाउ आई एम गोना बी टेकिंग यू बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Mahek, and that closes the day here as Balochistan trailing by 65 runs. They have got 7 wickets in hand, and let's see what will be doing and happening tomorrow. But this closes the day here, the day 3. Thank you very much for joining us. Hope you have enjoyed this stream, and we will see you tomorrow at 10 in the morning. Keep yourself in a safe hands. Bye bye.